8. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PAIME, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PAIME, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Welcome back from the North Nazmabad Asghar Ali Shah Cricket Stadium. This is the second match of tonight's Karachi Tape Ball Premier League Season 2, and Gulshan Gohars taking on FB Fighters. FB Fighters have won the toss and they have elected to field first. That's what we saw most of the teams do. These are the two umpires who will officiate this match. They showed the balls to the camera as well. Conditions are looking pretty good now. These are the two teams. Gulshan Gohars have Bahadur Ali as captain, Taimoor Mirza, Shoukat Afridi, Umar Gujjar, Asif Bukhari, Atif Khan, Abu Bakr, Aziz, Waseem, Wasi, Daniyal and Sarmad Haeed, while FB Fighters is with Haris Ali, who's the captain, Usman, Mukhtiar, Shahnawaz, Waseem Appu, Ubaid Lefty, Tasawwur Abbas, Murtaza Hussain, Ali Sher Khan, Hassan Shahid and Shafiqur Rahman.
You can see both the umpires in the setter and fielding side is also in the ground. We are waiting openers who will come and start their innings. This is the fielding side, and they're doing some warm-up out there in the ground. And here come the openers. FB Fighters won the toss and elected to field first. And let's see how well are they going to perform, first in their bowling and then in their batting. Gohar got a good side because they've got Taimoor Mirza, who's a very fine cricketer, scored a half century yesterday night, hit some beautiful sixes. And then we saw a few others as well. Bahadur Ali, the captain of Gulshan Gohar, who's a left-handed player, while Taimoor Mirza is a right-handed player. I've got Farooq Riaz alongside. Welcome. Welcome, Rana Shoukat. Good evening, everyone, from Azhar Stadium, North Nazabad, Karachi. It's match number 2 of Super Sunday. It's about to begin here. So floodlights have completely taken full effect as the sun has set, and now players can get a breather. So the cool breeze has started to come from all directions. Yes, weather gets colder as the time progresses, and usually we have beautiful evenings in Karachi, and this is one of them. Taimoor Mirza is on your screen. What a fantastic hitter of the ball he is, and he can go after the bowling right from the word score. Both the batsmen having a conversation by standing in the middle of the pitch, while the fielding sides adjusting their fielding. Wicket keeper helping the bowler as well to adjust the fielders on their positions. The first encounter between Johar Jawans and North Nawab was relatively close and could have been better, but I think the batting struggle in the first few overs of the fourth innings made a huge difference. So in this kind of contest, obviously you cannot afford to try up runs for a couple of overs even, because just the 6 overs you have in hand. In the end, they tried their best, especially Yaya played a blinder, but his innings turned out to be a good one and a match-saving one for his side. So every ball counts here in this format. Yeah, Yahya Khan tried his level best. Shahnawaz is starting the proceedings from the far end. Yahya Khan tried his level best to get them over the line, but his effort went in vain because they still went on to lose that game. This is the dugout of Gulshan Gohars. Right arm over the wicket bowler is starting the proceedings. Wicketkeeper standing well back, which goes to show bowler does have some pace, it looks like. And straight away, batsman is in action and the ball has travelled all the way for a 6. What a start! Taimoor Mirza is a superstar of this format in table cricket. He has played blinders and top-class innings in different cities of the Pakistan and also outside the Pakistan. It's the first one. He got the land ball, and thank you very much from Taimoor Mirza. Smacked it away for the big 6. He doesn't like to sort of bog down. He knows one way, and this is to play strokes. Hit one over deep square leg for a 6 and did swing his bat at the second one. Didn't make contact though. As long as he stays, strokes will come.
runs will come. Only way to stop the run is to get him out. Let's see if they can able to get him out cheaply. What a lovely shot through the line. He has smashed that away and he started to make the mincemeat of the bowling. This is extraordinary stuff from Taimoor Mirza. It's pitched up outside the off stump and hit that one miles. I reckon that should be 12, Rana. If you can give 2 in the result of wide, this should be 12. It was huge. Huge, humongous, no doubt about that. That was a gigantic hit, one would say. Slower one, well disguised by the bowler. Batsman was already went for his stroke. Already was gone for his stroke and ball came a bit late. So couple of dots and couple of sixes. The second shot was absolutely huge. It was enormous. A mighty strike from Taimoor Mirza. And luckily there's no extras yet. So all 4 balls are legitimate one. Taimoor Mirza again. 12 or 4 deliveries he has scored so far. And he's going to make it 18 or he's going to be caught. He is going to be caught. Fielder trying. Oh, put down. It could be costly. Oh dear. They had a very good chance to dismiss Taimoor Mirza, but they did not able to capitalize it. What a big miss. It could be extremely costly. It went miles up in the air. Taimoor Mirza got the height, but certainly not enough distance. 2 men converging, but in the end, I'm just amazed as far as the catching technique is concerned. The fingers was pointing up, I reckon. 2 men were converging, and Taimoor Mirza knew he was in trouble straight away. It was a tough one, however. That can cost them dearly. Oh, mine. They got a very good chance to dismiss him cheaply. Now he has 14 in 5 balls. Last ball of this over is coming up. And Taimoor has gone again over wide mid-wicket for yet another 6. 20 of the first over in which they could have got the wicket of Taimoor Mirza. 20 for none. First over is done. It's the first blow after dropping a catch, and Rana, you must have watched the drop catch. The fingers was pointing up, and there was no point to take the catch like that. The palms should be pointing up, and in Australian fashion, that guy tried to catch it, and always difficult to complete the catch in that fashion. So I think it was an elementary mistake, and that gave the life to Taimoor Mirza. Agreed. That was a wrong technique for the catch to be taken. And at the end, it went against him, the fielder, and also went against his side. 20 for no loss, and if you give a chance to someone like Taimoor Mirza, you are asking for the trouble. A player like Taimoor Mirza here, who takes chances, who goes after the bowler, and certainly in the process he gives the chance to the fielder. So you have to be super equipped, super skillful as far as catching is concerned to make most of the opportunity. But you cannot afford to drop catches like that. Certainly these mistakes will make you pay. Ali is starting his first over from the commentary box end. Bahadur is taking strike, captain of the Gulshan Gohars. He's got a good stance, standing deep in his crease, and he got that away. Fielder is getting towards the ball. He reaches it, although he did a bit of fumble, but at the end only a single is the result. This could have been boundary as well. It was the wrong turn, and he fumbled. By the end, he kept his eye on the ball. So Taimoor Mirza played all the 6 balls in the first over, and now once again he's got the strike back. Always excitement is around when Taimoor Mirza is on strike. Very lovable personality, very lovable character. He got a big fan following. I do watch a lot of posts on social media in his favor every day. Down the leg side, wide called. No wide given in the first over. It was a pretty good over. Now it's started the first wide, the couple of runs conceded.
The bowlers tend to feel pressure when they bowl Taimoor Mirza, so they tend to lose their line. Another wide. Farooq, fair enough. Bowlers going for some runs because it's a trap ball cricket, only 6 overs game. Runs can be scored. But they are making the basic mistakes by bowling wides and nose. This is where they control. This is where they can control, and they can save 10 to 12 or 20 to 25 runs in every innings of 6 overs. And the time as well. So I think this is where coaches can come into play. Look at that. Look at that. This is poor bowling. 3 wides in a row, so it means he conceded 6 runs and still hasn't bowled that legal delivery apart from the first ball. Taimoor Mirza is also getting frustrated if the batsman is not making any contact. Oh, it's all right, he's bowling wide, his team is being benefited, but certainly he wants to make contact with the bat. Look at that. Look at that. He is looking all over the shop, Ali, at the moment. 4th wide in a row. This is not on. He's struggling to get his line right. 4 in a row from Ali. None for 4, and this is none for 5 overall. The 4 wides given, and just 1 ball has been registered in this innings. Certainly there is some sort of frustration for the batter as well. The captain should chat with him. Maybe he's having some problem with the tape of the ball, I reckon, or maybe the bounce of the pitch or run up. Yeah, not only captain, and any senior player can come to him and can talk to him and can tell him that keep your cool, get your line right first. Doesn't matter if you can hit for 6 or you can dispatch for a boundary. It can happen in cricket. But first of all, you got to be accurate as far as line is concerned. And this one is dispatched, pitched up and spanked back over mid-off for a 6. This is Taimoor for you. I think it will make the bowler feel happy because at least it was a legal ball. It was pitched up. It was sweetly struck by Taimoor. Just nicely timed it. Just lofted over wide long off. Round the wicket he came, and very comfortably he just chipped it. Just more than a chip, I reckon. But lots of timing behind the shot as well. Oh, what a great comeback. That's a beauty of a ball. Absolutely snorter. He bowled 4 wides and got spanked for a 6 and then made a comeback with a ball like that. That was a magnificent ball. Ball of the night, can tell you that so far, Farooq. He hit that one hard in the deck. That one took off, took the outer part of the Taimoor Mirza's bat, and wicket-keeper did the rest behind the wicket. That's a terrific ball. Yes, Ali is the happiest man at the moment. He's round the wicket. The natural angle was a teasing one, the extra bounce, and Taimoor had to play as he was already waiting for the wide ball. So it was extra bounce, did the trick. So massive wicket. And Taimoor Mirza is on his way now. So it's an eventful over from Ali. .35 for 1, and Taimoor Mirza goes for 26, and new batter has come out of the center. These are the innocent boys. They are doing nets and really enjoying in the nets. Good to see them. They could be the future stars. And maybe they are trying to get attention of selectors for the next season of KTPL. Maybe junior KTPL. It can come in. Outside the off stump, look at that. He just creamed it over covers, bounces away to the boundary for 4. That was effortlessly played. Wow, short yard. Sheer timing, sheer timing. It's a Sarmad, the new batter, first ball, and just timed it beautifully. Just lifted over the fielder's head, and there was no protection out there. It's certainly a confidence booster for a newcomer, Sarmad. Runs are coming at a very good pace. They've already got 39 on the board.
And Sarmad started his innings with a beautiful boundary. That was a good ball. Good comeback again from the Ali. Although Ali has gone for 19 so far, but he's picked up a very vital wicket of Taimoor Mirza. Current run rate has jumped to 26 and it's a flying start from Gulshan Gohars. That is off the trouser. And finally, long over has come to an end. It's 39 for 2, Gulshan Gohars. Two overs have been sent down. 39 runs been scored for the loss of 1 wicket. Bahadur has faced just a single ball out of 12 balls that have been bowled so far. Sarmad has 3. Taimoor Mirza is the man who got out after hitting some sixes. And Shahnawaz is going to continue. 20 runs he gave away in his first over. Bahadur lefty, a lot of lefties. Bilal lefty, Bahadur lefty, Nazir lefty, Waseem lefty. Lot of lefties here in this tournament. There we go. There we go. That's a great shot from Bahadur. He lobbed it over deep square leg for a 6. Bahadur lefty played like a typical left-hander. It's a length ball and just put it away to the mid-wicket boundary in style. He loves the onside. Look at that, a loosener, length ball, thank you very much. Pretty much in line. He must have enjoyed the contact. It sailed over the boundary. What a start of the new over. On the offside, room was given and it got the treatment what it deserved. That was a poor ball and it transferred his weight onto the back foot beautifully and then hits that one over covers. Back-to-back sixes. Bahadur showing his guts and is coming up with some big strokes. I think he heard me. I think he can play to the offside as well. Outside the off stump, he slashed it beautifully. So a couple of boundaries to start the new over. And that was a no ball as well. Got that away. Fielder can't do anything about that one. It sailed over his head. Third 6 in a row. So that ball produced 14 runs. 6 was hit on a no ball and 6 is hit on a free hit. My word, runs are coming at a very high average. It was struck well. There was a man down there. It was quite gettable, I reckon. I think a little bit extra effort could have saved a 6 at least. He maybe could have been better effort from the fieldsman at the boundary. Bahadur having a go at everything. This one is played very nicely by him. He hopped onto the back foot, then tucked away onto the onside and rotated his strike. Now it's Sarmad who's taking strike. They've already reached to 60 for the loss of 1 wicket. Only 2.3 overs have been bowled, which means they've got 21 deliveries to play with and they've got 9 wickets in hand. That's well bowled. Although it will still fetch them a single. Leg by is the call. Expensive over. This from Shahnawaz. 3 6s in the over, including 6 on the no ball and 6 on the free hit and then a leg by. So it's no wide, but nevertheless, it's also not very acceptable. Almost in every delivery, he has got the punishment. We have a right and left hand combination now. Once again, Bahadur lefty, dangerous customer, is on strike.
outside the off-stump thickage outside edge. It is stopped at the short third man region. There wasn't any possibility of a run. They're going at a very good average at the moment. Not only they are scoring runs quickly, but also keeping wickets in hand. After this delivery, we've got 3 overs more. An easy single. Will he look for the second? No, he won't. Three overs have been sent down. It's 62 for 1. And we have change in voices. Asif is taking over alongside Nadra Mushtaq. शुक्रिया राना इशफाक और फ़रूख रियाज। ये खूबसूरत मनाजिर हैं असगर अली शाह स्टेडियम और इससे मुल्हक़ा इलाके के। आप देख सकते हैं रोशनियों का शहर कराची और लश ग्रीन आउटफील्ड है असगर अली शाह की। और आज यहाँ का अब दूसरा मैच खेला जा रहा है। बहादुर लेफ्टी जो कि कप्तान हैं गुलशन गोहर्स के, और कल भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, आज भी अब तक बहुत बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है नादरा मुश्ताक। वेलकम नादरा। बहुत शुक्रिया। और आपने जो वेलकम किया है वो इतने मौके की मुनासबत से है कि उसकी जो सेलिब्रेशन है ये हमारे मेल चीयर लीडर्स भी मना रहे हैं। इसको खेला है ऑन साइड पर और बहादुर ने 1 रन हासिल किया। बैटिंग के लिए सरमद हैं। सरमद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, 23 मैचेस फर्स्ट क्लास में खेल चुके हैं। जहलम से इनका ताल्लुक़ है और ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम ही टेप बॉल की लीग्स खेलते हैं। इसको ज़ोरदार तरीके से पुल करना चाहते थे, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। एवरेज की बात की जाए तो ज़बरदस्त रन रेट है 20.32 और जिस तरह से प्लान आउट किया है गुलशन गोहर्स ने कि 90 या 100 रन किए जाएं 6 ओवर्स में, दो के तैमूर मिर्ज़ा के जल्दी आउट होने के बाद कुछ संभाला ज़रूर मिल सकता है FB फाइटर्स की टीम को, लेकिन FB फाइटर्स के लिए बहादुर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लगाया और यहाँ पर 6 रन्स का इजाफा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत भरपूर स्ट्रोक लगाया बहादुर ने और अपने रन्स में इजाफा करते हुए 28 पे जा पहुँचे हैं। सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया। और ये देखिए ओवर पिच डिलीवरी थी और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और ये गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ले जाके उन्होंने बैट को घुमाया है और 6 रन्स। और एक दफा फिर जो जोरदार तरीके से इसको खेले और इसको खेले हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आज बहादुर एक दफा फिर अपनी टीम के लिए बहादुरी से बैटिंग करते हुए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक कप्तान का रोल प्ले कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। जब आपके कैप्टन इतनी जारहाना इनिंग खेले तो डेफिनेटली ये देखिए इस दफा इसको खेले हैं स्क्वायर लेग की जानिब और यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा दोनों फील्डर्स के दरमियान से। 2 फील्डर्स जरूर प्लेस किए थे लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गैप हासिल किया मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब और ये 4 रन हासिल कर लिए। सो बहादुर लेफ्टी अब नॉट आउट है। 38 रन पर सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया है। चौथे ओवर की आखिरी गेंद। बहादुर लेफ्टी का एक और जानदार सन्नाटेदार छक्का। इस दफा इसको घेरे लॉन्ग ऑन के ऊपर से
शानदार बैटिंग का मुजाहरा और इस तरह 4 ओवर्स के इख्तिताम पर गुलशन गोहर्स 86 पर 1। अमूमन हम देखते हैं कि जो बैट्समैन हैं वो टारगेट करते हैं मिड विकेट की जानिब, लेकिन यहाँ पर इनको लॉन्ग ऑन पे बहुत ज़्यादा इजी हो रहा है कि वहाँ पर कंसीड कर सके रन्स, और इस तरह बहादुर की स्कोर में इजाफा होते हुए तकरीबन 44 पे जा पहुँचे हैं और निस सेंचुरी के बहुत 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 नज़दीक हैं गुलशन गोहर्स 86 पर 1। 4 ओवर्स में 6 सिंगल्स हैं और 10 छक्के हैं। अभी देखिए 2 चौके और 10 छक्के इस 86 के मजमूई स्कोर में, और साथ ही साथ डॉट्स भी काफ़ी इनको मिली हैं जिसकी वजह से फ़ायदा ज़रूर हासिल हुआ है गुलशन गोहर्स को। ये देखिए खूबसूरत मंजर, हमारे ट्रेडिशनल ये देखिए जो डांस है वो आपको दिखाया जा रहा है असगर अली शाह स्टेडियम का खूबसूरत मंजर, साथ ही साथ आपको म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा है जिसमें ये इसे क्या कहते हैं, बीन इसे बांसुरी कहते हैं। नहीं, इसे बांसुरी नहीं कहते बांसुरी इज फ्लूट, दिस इज बीन, बीन कहेंगे लास्ट ओवर में आप देख सकते हैं कि 22 रन्स जोड़ दिए थे, 24 रन्स जोड़ दिए थे, आई बेग यू पार्डन, गुलशन गौहर ने। अब 2 ओवर्स का खेल बाकी है। हारिस बॉलिंग के लिए आए हैं। और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा और अंपायर ने इसको कंफर्म किया है कि ये एक बाउंसर है। कराची टेबल प्रीमियर लीग का ये सेकेंड एडिशन आप जियो सुपर की स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसको ऊंचा खेले हैं, इस दफा फील्डर बॉल के नीचे हैं लेकिन ये गेंद बाहर चली जाएगी। और एक और जबरदस्त छक्का यहाँ पर गुलशन गोहर्स के लिए। सरमद भट्टी जिनका ताल्लुक जेहलम से है, क्या जबरदस्त छक्का लगाया। सरमद हमीद बिल्कुल इनका जेहलम से ताल्लुक है। सरमद जबरदस्त तरीके से बैटिंग करते हुए और इस दफा चेंज ऑफ पेस, स्लो डिलीवरी, दाद देनी होगी आपको बॉलर की। जिस तरह से कैप्टन विकेट कीपर हैं हारिस अली और वो भी यही शाउट कर रहे हैं कि हमें डॉट डिलीवरीज चाहिए। स्लो डिलीवरी और इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से एक दफा फिर, बहुत ही बड़ा छक्का। ये गेंद ग्राउंड और स्टेडियम से बाहर गई है। सरमद हमीद अपने बाजू की ताकत दिखा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही उम्दगी के साथ खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक दफा फिर इसको ओवर एक्स्ट्रा कवर खेले हैं और इस दफा भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं होगा क्योंकि ये गेंद गई है रोप्स के बाहर। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा। क्या सिर्फ जिस तरह से सरमद इस वक्त खेल रहे हैं, फुल मतलब इस वक्त में नजर आ रहे हैं, तो तमाम गेंदें जो हैं वो बाहर जा रही हैं बाउंड्री के। और एक दफा फिर अनस्टॉपेबल और सरमद हमीद इस वक्त पूरे जौबन पर बैटिंग करते हुए खतरे की घंटियां बजा रहे हैं और यहां पर ये बुजुर्ग भी बीन बजाकर दाद दे रहे हैं। 5 ओवर्स के इख्तिताम, गुलशन गोहर्स 110 पर 1। जी हाँ, और शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, काफी वक्त मिला और इसका भरपूर फायदा उठाया। इस डांस के लिए बहुत ही महारत चाहिए होती है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ढोल बजा रहे हैं और हाँ आसिफ, ये तो बड़ा बहुत टेक्निकल है। आपने कभी ट्राई किया घर पे जाके? आप तो रोज देख रहे हैं आजकल। नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो इसको फिर दिखाएं भी।
बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्शन हमारी टीम की, और मिसबाउद्दीन कादरी साहब इस वक्त पैनल पे मौजूद हैं जो कि सेकंड एडिशन कर रहे हैं। इससे पहले भी KTPL उन्होंने किया था और बहुत ज़बरदस्त शॉट्स दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को महसूस करने के लिए। बहादुर लेफ्टी कैप्टन गुलशन गोहर्स इस वक्त तैयार हैं सामना करने के लिए। 44 रन बनाए हैं 12 गेंदों पर, और इसके साथ ही अपने 50 रन मुकम्मल करेंगे। क्या जबरदस्त तरीके से 50 रन मुकम्मल किए हैं एक शानदार छक्का लगाकर, और बहुत ही पुरसुकून छक्का था ये, जिस तरह मिड ऑन की जानिब इन्होंने खेला है। बहादुर अली ने 50 रन 13 गेंदों पर, महज 13 गेंदों पर। असगर अली शाह स्टेडियम में छक्कों की बरसात जारी है, और यहाँ पर हल्की सी अपील ज़रूर हुई थी, लेकिन अंपायर ने कंफर्म किया कि ये मज़ीद 2 रन होंगे एक्स्ट्रा के। वाइड डिलीवरी, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में ये कवानीन बनाए गए हैं कि नो बॉल और वाइड डिलीवरी के 2-2 रन होंगे, और ये क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। जी हाँ, फुल जगमगा रहा है असगर अली शाह स्टेडियम। बिल्कुल ही विविड हो गए हैं अली शेर खान। बहादुर ने खासा प्रेशर रखा हुआ है अपनी बैटिंग से। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है, अगर 5 छक्के लगते हैं, लीगल डिलीवरीज होती हैं, तो 150 रन हो जाएंगे। जी हाँ, और अच्छी खासी लीड ले जाएंगे गुलशन गोहर्स। ऐसे में जब एकदम से चौको छक्कों की बरसात होती है, बॉलर्स के लिए बड़ा प्रेशर हो जाता है। अली शेर खान ने स्लो डिलीवरी की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गेंद एक दफा फिर आउट ऑफ द स्टेडियम। व्हाट अ शॉट दैट वाज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त इनिंग खेल रहे हैं। सो बहादुर 56 रन पे जा पहुंचे हैं, और सरमद उनका साथ दे रहे हैं 29 पर। स्लो डिलीवरी, उसका भरपूर इंतजार किया और भरपूर ताकत से इसको स्क्वायर लेग के बाहर फेंक दिया 6 रन के लिए। डाउन द लेग साइड, और इस दफा यहां पर मजीद रन्स मिलेंगे। अब 3 रन्स मिल गए, वाइड के 2 रन्स और 1 बाय का। अब ऐसा लग रहा है कि अली थोड़े से प्रेशर में हैं, वो काफ़ी रन्स देते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त लाइन लेंथ काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वाइड्स पे वाइड्स मिल रही हैं गुलशन गोहर्स को। जी हाँ, अली शेर 1.2 ओवर्स में 38 रन दिए, 1 विकेट जरूर हासिल किया, बस इस ओवर में बहुत ऑफ कलर। और दूसरी जानिब सरमद हैं, सरमद ने इस्तकबाल किया इस शानदार छक्के से एक दफा फिर। और पवेलियन में बहुत ही नन्हे मुन्ने से शायकीन क्रिकेट जो कि खुश हो रहे हैं बॉल को पिक करते हुए। सरमद हो, बहादुर हो, तैमूर, मिर्जा हो, सभी तैयार खड़े हैं यहाँ पर छक्के लगाने के लिए। और फुल टॉस डिलीवरी, और इसको खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार छक्का। फुल प्लानिंग बनाई हुई है कि आज बड़ा से बड़ा लीड लेनी है, बहुत बड़ी लीड लेनी है, ताकि मुश्किलात पैदा करें। एक दफा फिर ये गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क। जी हाँ, that was. बेहतरीन मिड विकेट पे खेलते हुए बहुत खूबसूरत छक्का इन्होंने लगाया है सरमद ने, और सरमद ने कहा कि मैं भी किसी से पीछे नहीं हूं। काफी हद तक 50 के नजदीक आ गए हैं। निस सेंचुरी दोनों प्लेयर्स की नजर आती है। बहादुर ने तो निस सेंचुरी स्कोर कर ली है, और अब सरमद की बारी है। सरमद कोई रहम करने को तैयार नहीं है बॉलर्स के ऊपर। अली शेर इस वक्त ज़ेरे अताब हैं सरमद के। सरमद ने 41 रन बनाए हैं 13 गेंदों पर, 26.11 की औसत से गुलशन गोहर्स ने बैटिंग की है। और इस दफा देखना होगा अंपायर का क्या फैसला होता है। जी हाँ, सो इस तरह ये 1 रन मिलेगा, और यहाँ पर दूसरा रन भी हासिल कर लिया है। नादरा जिस तरह से बॉल बीट हुए थे, 1 रन बना था, और थोड़ा से सुस्त हुए फील्डर्स और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। सो इस तरह सरमद ने
41 रन बना लिए 14 गेंदों पर और बहादुर ने शानदार 50 स्कोर किया है। बिल्कुल, अली शेर खान इस वक्त सोच रहे होंगे जल्द अज जल्द मेरा ये ओवर कंप्लीट हो, क्योंकि इतने रन्स उन्होंने खा लिए हैं। 50 रन्स दे चुके हैं अब तक, महज एक विकेट हासिल कर सके। जी हाँ, अली शेर अब दूसरे ओवर की और इस इनिंग की आखिरी गेंद करेंगे। अब तक 18 छक्के लग चुके हैं और 2 चौके लगे। तो ये सारा जो बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर है, ये छक्कों की एग्जीबिशन बनती जा रही है। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा, और इसी में मज़ा भी आ रहा है, लोग महजूज भी हो रहे हैं। करंट रन रेट की तरफ जाते हैं कि 25.82 की औसत से करंट रेट जो है वो इस वक्त चल रहा है। ऑलराइट, और जिस तरह से अली शेर ने बॉलिंग की है, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे एफबी फाइटर्स। आखिरी गेंद और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं फील्डर, इस दफा बॉल के नीचे बहादुर आखिरी गेंद पर आउट हो गए। और कोई भी गलती नहीं की फील्डर ने, जिस तरह से कैच पकड़ा है, और यूं अली की ये दूसरी विकेट। अली शेर का ये ओवर खत्म हुआ इस विकेट के साथ और इस दफा फील्डर ने कोई गलती नहीं की। बहादुर लेफ्टी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लाइक अ लीडर और एक ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की। 6 ओवर्स के अख्ताम पर गुलशन गोहर्स ने बनाए 142 रन 23.67 की औसत से। और ये गुलशन गोहर्स के ऑनर बहुत खुश अपने खिलाड़ियों को दाद देते हुए, और जाहिर है ये दाद बनती है। लेकिन इट्स टू अर्ली टू से कि फेडरल बी एरिया फाइट्स जो हैं वो किस तरह का मुकाबला करते हैं। अब उनके टर्न है, तो लेट्स सी के फील्डिंग में गुलशन गोहर्स कितने अप टू दिमाग रहते हैं। लेट्स सी। बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं असगर अली शाह स्टेडियम के ज़बरदस्त मनाजिर। और बैटिंग कार्ड देखिए, तैमूर मिर्ज़ा ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया था, 26 रन बनाए 8 गेंदों पर, और बहादुर ने 56 रन बनाए 15 गेंदों पर। सरमद नॉट आउट रहे, 41 रन बनाए 14 गेंदों पर। और ये बॉलिंग देखिए, शाहनवाज 2 ओवर में 42 रन दिए, अली ने 2 ओवर्स में 50 रन दिए, शफीक ने 1 ओवर में 24 और मुख्तार ने भी 1 ओवर में 24 रन दिए। 19 एक्स्ट्रास, इस तरह 142 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। ये KTPL की हिस्ट्री का हाईएस्ट रन हैं। और एक दफा फिर आप देखिए ये जबरदस्त मनाजिर हैं। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली, नसीम राजपूत और एक्स क्रिकेटर फैसल अतर आपको ज्वाइन करेंगे कॉम बॉक्स में। ओवर टू यू। Thank you very much, senior journalist नादरा मुश्ताक एंड के आसिफ। और ये आगाज जिस तरीके का तैमूर मिर्जा का रहा था, और एक और जोरदार हिट यहाँ पर थी पहले ही ओवर में, और ये कैच जो ड्रॉप हुआ था उसके बाद चांसेस हुए थे कि तैमूर मिर्जा कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे, लेकिन 2 छक्के लगाने के बाद तैमूर मिर्जा आउट हुए और उसके बाद बाकी बैट्समैनों ने ये जिम्मेदारी संभाली और ये आउट होने का मंजर तैमूर मिर्जा का। नंबर 1 बैट्समैन करार दिए जाते हैं इस वक्त पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के। बहादुर अली ने आके जो लाठी चार्ज किया वो भी कमाल था। बहादुर अली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज ए कैप्टन इनिंग उनकी ज़बरदस्त थी, और बड़े छक्के, तवील छक्के जिसे कहते हैं, वो आज बहादुर अली ने यहाँ स्कोर किए। जिस तरीके की बहादुरी आज बहादुर अली ने दिखाई, उनकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई है इनकी शानदार बैटिंग की वजह से। ये देखें जबरदस्त छक्कों की बारिश आज गुलशन गोहर्स की जानिब से दिखाई दी। पिछले साल पहले सीजन में गुलशन गोहर्स इतना परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार मुख्तलिफ मूड में दिखाई दिए। पहला मैच भी जबरदस्त खेले और ये बहादुर अली का एक और छक्का।
दूसरे मैच में भी 141 रन पहली इनिंग में स्कोर करने में कामयाब हो गए गुलशन गौहर। एक बड़ा स्कोर इस सीजन का अब तक पहली इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर है ये जो स्कोर किया गुलशन गौहर ने। और मेरे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, इसके साथ साथ नॉर्थ नवाब की टीम जो इससे पहले मैच हार गई और कई बड़े नाम उस टीम से खेल रहे थे, खुर्रम चकवाल, मियां चुन्नू, बहुत सारे खेल रहे थे यहाँ पे। फैसल, इस मैच पे तो हम बात करते हैं, लेकिन पिछले मैच में जिस टीम के खिलाफ जॉर्ज जवान्स के खिलाफ आपको शिकस्त हुई, आपके साथ ऐसे नाम शामिल थे कि जो पाकिस्तान में अपना एक मकाम रखते हैं। नसीम भाई, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो माने जाने प्लेयर हैं और थोड़ा सा मिसिंग कर गए हम बॉलिंग में। अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, पहली इनिंग में जो हमने लास्ट 2 ओवर में रन कंसीड कराए थे वो थोड़ा सा आखिरी टाइम तक सेकंड इनिंग में भी उसका कवर नहीं कर पाए। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी टीम से, जिस तरह की वो टीम है हमारी और जिस तरह के प्लेयर्स हैं हमारे पास, इस दफ़ा एक दफ़ा किसी भी मैच में मोमेंटम गेन कर गए तो हम निकल जाएंगे। उस्मान जान पठान आए हैं, पट्टा उस्मान जान भट्टा, उस्मान जान भट्टा और उनके साथ उबैद लेफ्टी ओपनिंग के लिए आए। एफबी फाइटर्स की जानिब से अबू बकर बॉलिंग का आगाज करेंगे और अबू बकर ने पिछले मैच में भी अपनी टीम के लिए बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और इस वक्त एक अच्छे स्कोर के साथ बड़ा दिल भी हो जाता है फैसल बॉलर का जब बोर्ड पे रन्स दिखाई दे रहे हो। और अब तक पहली इनिंग का सबसे बड़ा स्कोर हो चुका है गुलशन गौहर की जानिब से 141। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ही चांस नहीं दिया। और बॉलर्स को बहुत चांस मिला हुआ है और बल्लेबाजों को कोई चांस नहीं है इधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और स्ट्राइक रेट और जो रिक्वायर्ड रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अबू बकर का सामना करेंगे उबैद लेफ्टी। पहली गेंद 142 रन पहले ही सामने है उनके और पहली गेंद को बड़ी हिट मारने की कोशिश और उसमें कामयाब उबैद लेफ्टी। पहली गेंद पे छक्का उबैद लेफ्टी की जानिब से। इसी तरीके का आगाज दरकार होगा यहाँ एफबी फाइटर्स को, अगर फाइटर बनना पड़ेगा जितने रन्स गौहर्स कर चुके हैं। जी हाँ, फ्लाइट भी पकड़ना पड़ेगी और अपने बल्ले से जो स्ट्राइक करेंगे उसमें बॉल को भी फ्लाइट देना पड़ेगी और ये हवा से बातें करती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। स्टार्ट ज़बरदस्त, पहली बॉल पे 6 रन। उबैद लेफ्टी ने पिछले सीजन में भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और एक और बड़ी हिट उबैद लेफ्टी की। दूसरी गेंद पे दूसरा मुसलसल छक्का। कमाल का शॉट, हालांकि मारने कहीं और गए थे, टॉप एज हुआ, लेकिन ताकत इतनी थी शॉट में कि ग्राउंड से बाहर गई और दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का। जबरदस्त किस्म का स्टार्ट। अबू बकर की ये गेंद भी थोड़ी सी ओवर पिच थी, लेकिन यॉर्कर लेंथ पे करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी ओवर पिच हुई, उसका भरपूर फायदा उठाया। फैसल, आमतौर पे हमने देखा है कि टेप बॉल के बैट्समैन बिल्कुल स्टंप्स के साथ लग के खड़े होते हैं तो यॉर्कर को काफी हद तक खत्म कर देते हैं, या तो फुल टॉस बन जाती है या फिर हाफ वॉली बन जाती है वो। एक और अच्छा स्ट्रोक, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। पहली 3 गेंदों पे 16 रन। कमाल की बैटिंग जारी है। 2 छक्के और 1 चौका। जाहिर है जिस तरह रन हैं बोर्ड पे तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फुल गो जाना पड़ेगा और मैक्सिमम रन करना पड़ेंगे, तभी आप मैच में अंदर आ सकते हैं। सो बेहतरीन रिस्पॉन्स। ये देखें, जो स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल स्टंप्स के साथ लग के खड़े होते हैं बैट्समैन। एक बार तबा फिर उबैद लेफ्टी के आउट होने का खतरा और ये कैच ड्रॉप हो गया। यहाँ पे बहुत तेज शॉट था, फील्डर ने लॉन्ग ऑन पे पूरी कोशिश की थी लेकिन इस कैच को थाम ना सके। एक जान में जान आई होगी फाइटर्स के। बिल्कुल हाँ, जिस तरह की बैटिंग चल रही है यहाँ स्मार्ट मूव था, अपना फील्डर्स को उन्होंने एडजस्ट किया। और ये रीप्ले फैसल, बल्कि फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई थी, यहाँ हमें कमेंट्री बॉक्स से ऐसा लगा था कि शायद कैच गया है, लेकिन फर्स्ट बाउंस के बाद गई तो अच्छी फील्डिंग। कोशिश अच्छी थी, उसको बनाने की कोशिश की थी कि कैच बना लें। इस बार उस्मान ने स्क्वायर लेग की जानिब खेल के 4 रन हासिल किए। तो जिस तरीके का आगाज दरकार था 142 रन को देखते हुए अब तक उसी अंदाज से खेलते हुए दिखाई दिए एफबी फाइटर्स के बैट्समैन। तो फाइटर्स की फाइट जारी।
21 रन हो चुके हैं और आखिरी बॉल अभी बाकी है, तो ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट यही रिक्वायर्ड है। इस बार फिर बड़ी हिट मारने की कोशिश, आउट होने का खतरा, विकेट कीपर गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब। इस तरह उस्मान आउट हुए। यहाँ पर पहला नुकसान एफबी फाइटर्स को उठाना पड़ा। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान 4 रन बनाने के बाद आउट हुए। अबू बकर ने बिलाखिर 21 रन देने के बाद अपनी टीम को कामयाबी दिला दी। फैसल जी हाँ, क्योंकि रन्स इतने हैं, हर बॉल पे आपको स्ट्राइक करनी है। तकरीबन ऑलमोस्ट 25 का रिक्वायर्ड रेट है और यहाँ कोशिश बल्लेबाज ने एक दफ़ा फिर की थी, लेकिन टॉप एज हुआ। स्मार्ट बॉलिंग, स्टम्प टू स्टम्प बॉल कर रहे हैं और यहाँ पे मिस शॉट की है और ये हवा में गई। नीचे फील्डर ने कोई गलती नहीं की, पहली विकेट लेने में कामयाब। उस्मान जान भट्टा आउट हुए। अच्छा, इनमें बहुत सारे लोगों का, जैसे कल मैं बात कर रहा था अहमद कुल्फी से, तो मैंने पूछा ये कुल्फी नाम क्यों है, तो उन्होंने कहा मेरे अब्बू की कुल्फी की दुकान थी, मैं वहाँ काम करता था, बॉलिंग अच्छी करता था, तो मेरा नाम अहमद कुल्फी पड़ गया। इनका नाम था फट्टा। तो बहुत सारे फट्टे हमने पंजाब में देखे हैं जो ईंटों के कहलाते हैं, तो हो सकता है कि इनका कोई ताल्लुक हो, पूछेंगे जब मौका मिलेगा, क्योंकि ये टेप बॉल के प्लेयर्स के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। ज़हीर, कालिया, पोला, पोली, कुल्फी, तो लेफ्टी, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाम होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के नाम है और ये पसंद करते हैं। आप ज़हीर भाई को ज़हीर अहमद कह देंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता, जब तक आप ज़हीर कालिया नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि ये उनकी एक शनाख्त है, एक पहचान है। और बच्चा गेंद करने आए, लेकिन ये तो बड़े हैं बिल्कुल। स्लोअर वन गेंद किया उन्होंने और बहुत मुश्किल में डाला। जी हाँ, स्लो वन गेंद करेंगे तो आप बचेंगे, वरना तेज़ बॉल का हाल हमने पिछले ओवर में देखा कि जितनी तेज़ आप बॉल कर रहे हैं उतनी तेज़ शॉट भी पड़ रहे हैं। और अभी ये स्टार्ट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिया है, स्लो बॉल किए और थोड़ा राउंड द विकेट भी बॉल कर रहे हैं, एंगल थोड़ा डिफरेंट क्रिएट किया हुआ इन्होंने। असगर अली शाह स्टेडियम में मौजूद शायकीन अब मोबाइल से कैप्चर करते हुए और जब टेलीविज़न पे आते हैं तो एंजॉय भी करते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने इस KTPL इवेंट का ऑर्गेनाइज किया है। कई बड़े नाम, जावेद मियां दाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस बार देखना होगा क्या ये गेंद वेस्ट हाइट से ऊपर थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। कोई सिग्नल नहीं आया, इसका मकसद है कि नो बॉल का सिग्नल आ गया अंपायर की जानिब से। इसका मकसद है कि ये फ्री हिट है यहाँ पर। जी हाँ, बादशाह खान नाम है, ये बच्चा नहीं है, बादशाह खान नाम है इनका। बदर एक्सपो की पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि पिछली दफ़ा ये टूर्नामेंट कराया और इसको कंटिन्यू रखा। सो कोई भी काम जो मुसलसल हो वो अपने कमाल को पहुंचता है। इस बार ऑन साइड की जाने फुल टॉस बॉल को गाइड किया मिड विकेट की जाने, 6 रन हासिल किए यहाँ हारिस टीम के कैप्टन ने, और एक कैप्टन्स नॉक दरकार होगी। उबैद हारिस का जोरदार छक्का यहाँ पर। वैसे इसमें फैसल आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ये रीप्ले फुल टॉस गेंद को हारिस ने मिड विकेट की जानिब खेलकर 6 रन हासिल किए। उसमें हसन रजा, आप, शब्बीर अहमद, नवेद लतीफ़, महमूद भाई, आपके बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, जावेद कदीर हमारे साथ थे, और सबका रोल था। और इस बार देखना होगा हारिस के आउट होने का खतरा, गेंद बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन विकेट कीपर बगैर ग्लव्स के भी पूरी तरह तैयार हैं, और वो कोई और नहीं है तैमूर मिर्जा हैं जिन्होंने ये दूसरा कैच लिया। दूसरा नुकसान हुआ यहाँ FB फाइटर्स को। हारिस कैप्टन इनिंग नहीं खेल सके और इस वक्त इशारा कर रहे हैं कि किस बैट्समैन को आके अपनी बारी लेनी है। करंट रन रेट इतना बुरा नहीं है, लेकिन क्या ये 6 ओवर्स में इस रन रेट को मेंटेन कर पाएंगे? ये आउट होने का मंजर, बादशाह खान की गेंद को हारिस बड़ी हिट लगाने गए थे और ये एक और विकेट कीपर ने कैच आउट किया। तैमूर मिर्जा विकेट कीपर। इस तरह ये दूसरा नुकसान FB फाइटर्स को हुआ। फाइट करनी है तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। फैसल, हम बात कर रहे थे
जावेद मियादाद जैसा बड़ा नाम और आप लोग सब लोगों ने लास्ट ईयर ड्रेसिंग रूम शेयर किया था, टीम को लीड किया था। मोहम्मद शमी भी आज भी मलिर मलंग्स के साथ हैं, आप नॉर्थ नवाब के साथ हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान के आने के बाद आप डिफरेंट लेवल पे चली गई है बदर एक्सपो KTPL। जी हाँ, जिस तरह ये टूर्नामेंट चल रहा है, पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, सो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और बिल्कुल ये हाइप पकड़ रहा है और यही हमारा फीडबैक है जिस तरह लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। और एक और शानदार उठाकर खेला है, यकीनी तौर पे 6 रन्स। जोरदार हिट यहाँ उबैद लेफ्टी की जानिब से। उबैद लेफ्टी क्रीज पर मौजूद हैं और जोरदार छक्का यहाँ उबैद लेफ्टी की जानिब से, इस बार सामने की जानिब जोरदार हिट। इस बार फिर उबैद लेफ्टी का प्रॉपर कनेक्शन और फील्डर गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए यहाँ गुलशन गौर ने। उबैद लेफ्टी जो खासे डेंजरस दिखाई दे रहे थे, इस बार बड़ी बाउंड्री का इंतखाब किया और वहीं कैच आउट हुए। जी हाँ नसीम भाई, तारीफ करना पड़ेगी गुलशन गौर की, क्योंकि जितने भी बॉलें हवा में गई हैं और नीचे फील्डर आए हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की और सारे कैच तकरीबन अवेल किए हैं, जिसका इनको एडवांटेज मिल रहा है। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं क्योंकि प्रेशर में है टीम और रिक्वायर्ड रन रेट भी बहुत ज़्यादा है, इनको इसी स्टाइल से खेलना पड़ेगा। लेकिन बॉल ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कनेक्शन तो अच्छा हुआ पर डिस्टेंस नहीं मिला। फील्डर ने कोई गलती नहीं की मिड विकेट की तरफ, क्योंकि बाउंड्री थोड़ी बड़ी है यहाँ पे और थोड़ा सा हवा भी अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से ट्रेवल नहीं करी गई बॉल ग्राउंड के बाहर और शानदार कैच। FB फाइटर्स की टीम मुश्किलात में है। पिछले साल इस टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, इस बार पहला मैच खेल रहे हैं, अभी इसके बाद 6 मैच बाकी हैं उनके। लेकिन दीगर टीमें जितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, जैसे गुलशन गौहर ने बड़ा परफॉर्म किया, अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर ये गेंद थी जिसका कोई जवाब बैट्समैन के पास नहीं था। इस तरह 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ यहाँ। 37 for 3 FB फाइटर्स। फैसल, हम बात कर रहे थे कि बड़े नाम थे, जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, दैन आप सब लोग आके जुड़े, मोहम्मद शमी, आप फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, टेस्ट क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम को शेयर किया। लेकिन शाहिद खान अफरीदी और यूनुस खान के आने के बाद, क्योंकि आज रात को दिल थाम लें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ, सबसे ज़्यादा एवरेज रखने वाले फॉर्मर कैप्टन जिन्होंने 2009 वर्ल्ड T20 अपनी क़यादत में पाकिस्तान को जिताया था, आज DHA दबंग की नुमाइंदगी करेंगे। लास्ट मैच जो खेला जाएगा, यूनुस खान। एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ को खेलना मुश्किल लग रहा है फैसल। जी हाँ, अब इस वक्त बल्लेबाजों के जहन में एक ही चीज़ है कि वो स्ट्राइक करें और छक्के की तरफ जाएं, और इस वक्त बॉलर की भी जहन में एक ही चीज़ होगी कि हम छक्के को कैसे रोक सकें या स्ट्राइक को कैसे रोक सकें। और ये जो चश्मा लगा के पहली शख्सियत खड़े हुए थे, शहजाद इनका नाम है, हमारे फोटोग्राफर हैं, आज इनकी बर्थडे, ये जो स्क्रीन से गायब हुए हैं, तो शहजाद हैप्पी बर्थडे टू यू। इनकी ख्वाहिश थी मैं ज़रूर बोलूँ और आगे सामने तो बात हो गई। इस तरह लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर 1 रन हासिल किया। 1 रन से काम नहीं चलेगा, फाइटर्स को फाइट जरा तगड़ी करना पड़ेगी। जी हाँ नसीम भाई, ये वसीम अपू इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं और ये भी बड़े माने जाने जाते हैं इस वक्त डगआउट में। जावेद कदीर सिर्फ कैमरे को देख रहे हैं इस वक्त, मैच देखना चाहिए, टीम फंसी हुई है। जावेद कदीर की कोशिश है कि किसी से जिससे उम्मीद लगाई हुई है वो ये करके दें, और इस दफ़ा अपू ने जोरदार शॉट खेला लेकिन सिंगल ही बनेगा, एलिवेशन नहीं मिली। ठीक है, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। वसीम अप्पू को अगर टीम के लिए पप्पू बनना है तो कोई 8-10 छक्के लगाने होंगे, वरना ये मैच हाथ से जा रहा है। एक 103 रन मजीद दरकार हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है।
और एक और अच्छी गेंद अबू बकर, वेरी वेल बोल्ड। बिल्कुल अबू बकर, हालांकि पहले ओवर में खास एक्सपेंसिव रहे थे, 21 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन इस ओवर में अपनी 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। ये बॉल भी अच्छा था, आगे बॉल कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनको इस बॉल पे थोड़ा स्विंग भी मिला, जिसकी वजह से बैटर टाइम नहीं कर सका और मिस कर गए। अब यहाँ पे वसीम को देखना है कि क्या रिस्पॉन्स करते हैं। इनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं FB फाइटर को, और माने जाने जाते हैं अपने स्ट्राइक रेट की वजह से, अपने स्ट्राइक की वजह से। तो यहाँ क्या करते हैं, कैसा रिस्पांस करते हैं, अंडर प्रेशर है, रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा है। अभी इस वक्त करंट रेट 16.67 है। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर अबू बकर की जानिब से, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, और खासकर अपनी लेंथ को जिस अंदाज से यूज़ कर रहे हैं, यॉर्कर लेंथ, शॉर्ट पिच, स्लोअर वन, तो जो वेरिएशन दिखाई दी है उनकी बॉलिंग में ज़बरदस्त। फैसल, कोई शक नहीं है, इनको इसी तरह ही बॉल करनी चाहिए। इसका मतलब ये इन है मेंटली तौर पे, और बैटर को देखकर ही बॉल कर रहे हैं सिचुएशन के एतबार से। वो एक इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा, वाइट बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। इस तरह 2 रन वाइट की सूरत में हासिल हुए यहाँ FB फाइटर्स को। तकरीबन आधी इनिंग मुकम्मल होने के है, आखिरी गेंद बाकी है, लेकिन रन्स अगर देखें तो अभी 100 बाकी हैं और बोर्ड पर सिर्फ 42 दिखाई दे रहे हैं। ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। बहुत ज़्यादा ज़ोर से शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल पे अगर ये नज़र रखेंगे और मेक श्योर करें कि बॉल और बल्ले का मिलाप कर पाएँ तो सक्सेसफुल हो सकेंगे। सो 3 ओवर के अख्ताम पे 43 पे 3 FB फाइटर। अब सिर्फ छक्के ही छक्के दरकार होंगे अगर गुलशन गौहर के रन्स के करीब पहुंचना है, लेकिन आगे का अहवाल आपको बताएंगे। राना अशफाक और फरुख, राना अशफाक एंड फरुख रियाज। Thank you very much, Naseem Rajput and Faisal Athar. 43 for 3. Fourth over has begun. Wicketkeeper got beaten and ball is coming down towards the boundary. Fielder reaches there, and by the time batsman ran through for few runs. Welcome back, Farooq Riaz. Thank you very much, Rana Shwak. 45 for 3 Federal Bureau fighters, and they're trailed by 97 runs. So overall, the run rate hasn't been the greatest side considering the context of the game, and that is well bowled. Slower one, nicely deceived, superbly bowled by Basha Khan, and that was outside the off stump, but certainly kept the batsman in 2 minds. Gulshan Gohars have done a great job by keeping them quiet and also picked up wickets regularly. Trailing by 97 runs with only 16 deliveries to be bowled in this innings, and this has been banished from its presence, and it's gone all the way over mid-wicket for a massive 6. And that was a no ball as well. So it's going to be 8 runs and free hit 2. I think the bowler nullified the advantage of delivering the slow one. Now I considered a maximum and no ball as well. Well struck though. He must be dejected with himself because he wanted to put that away as well. Only got a single on a free hit. They need to hit more 6s like this to shorten the margin of lead, because it looks like they're going to concede a massive lead. Heaves it away onto the onside. Will not get more than a single, and fielding side will be happy by giving the singles away. So far they are so good. Bacha has 2 for 25 in 1.4 overs. 87 runs are required to level the score of Gulshan Gohar's first innings
FB fighters who won the toss and fielded first. Short and rising ball outside the off stump as well. Batsman did not make any contact. Wicketkeeper collected that one around about chest height. So this is the that is the end of the over number 4. 55 for 3. Gulshan Gohar certainly on the driver's seat. As you can see the score, they are 87 runs behind Federal Fighters. So they must be nice and relaxed at the moment. There are a couple of innings each side plays in this kind of format. So they need to pull up their socks. Federal FV Fighters, they need big overs of 25 and 30 runs each. Yes, they got to play out of their skins to make a comeback in this match. So far, it looks like that they are left behind. Because if Gohar comes up to bat in the second innings with a lead of 60-70, so I think you may say that they are already got the match in their grasp. Yes, of course. Once they get the advantage, the massive lead of 50 odd runs, and somehow they can experiment a bit in the second innings. In fact, one ball was left in the previous over, and that is why the over number 4 is yet to be completed now after this delivery. And it's called wide. Bacha almost went away. He thought over was done, but then umpire called him back that you've got one delivery left. Look at the dugout. It looks a bit blue and gloomy at the moment because they haven't performed well. This is lofted. Fielder jumped in the air and stopped it on the first bounce. And batsman crossed over for a single. Now it is the end of the over number 4, 58 for 3. So Farooq, they are still trailing by 84 runs with 12 balls to be bowled. I think they still can get about 40-50 runs in 2 overs and can mop up a bit of lead. If they get 50 odd runs, exact 50 runs in the next 2 overs, still Gulshan Gohar will be on the driving seat. So 34 runs is a considerable margin, considerable lead in this format. So they are certainly way ahead at the moment. But nevertheless, it's not over yet. Over number 5 now is about to begin, and Waseem will be on strike. He is going to be taken. Point comes in and grabbed it beautifully. Another wicket goes down, so wickets are falling, and FB Fighters now deeper in trouble. They are in a mire. Certainly, he's went for the big shot, almost turned out to be nothing short in the end. It was not even close to middle part of the bat, but just went in the air for a while and comfortably held. So they are struggling to get going. It was a wicket, and most importantly, it was a dot ball. It looks like a one-sided fixture or affair so far because big lead is on the cards, and then they have a very strong batting lineup. They can go for big runs in the second knock as well, and it maybe target something like almost impossible. And that's the beauty of this format. I reckon they have 2 innings. They can bounce back well in the second innings if they bowl well. If they restrict Taimoor, Mirza and 11 in a decent fashion, it was a big task, however. Then they can bounce back in the 4th innings. However, they will be under more pressure because batting in the 4th innings is an uphill task. Mukhtiar walks in as newcomer, standing at the non-striking end, and this one is hit in the air and it's gone all the way. Over pitched a bit, and batsman caught that one away magnificently well. That is a good strike. He's a good hitter of the cricket ball there. I have seen him playing number of times. He got underneath of the ball beautifully and got the height and got the good elevation. Well played. Also got the distance. This one is pulled away all along the carpet.
Fielder was there right at the boundary. These singles won't be enough. They've got to hit sixes and got to hit sixes regularly. Let's see. Mukhtiar is a good hitter of the ball, I can tell you that. But let's see whether he succeeds or not. Because bowlers have done a good job so far. Tried, but it went in vain. And he's been caught behind on a very first ball. And bowler giving him a good send-off. I think they didn't appeal with excitement, and the batsman walked straight away, Murtaza. He knew he nicked it, and nobody knows except for the batsman. He went for the big heave, the left arm, Waseem. Look at that, front leg was cleared. There was a sound, and they were pretty sure that is why they were not appealing and with excitement. So Mirza was the one who got out on a very first ball. He threw his bat without coming into the line of the ball, and the bowler straight away picked up his wicket. FP fighters in a troublesome situation. The Tasawwur Abbas has come out into the centre. Let's see if he can place some big hits. A blistering knock is required. yes, not many balls are left. Tasawwur is a newcomer. 7 runs of the over so far. Waseem again. He's hit it in the air. Bowler and wicket keeper both trying to come under the ball. No one as they usually do. As they usually do. This is difficult to take those catches under lights particularly, because that was a real swirler. Ball went high in the air and it was in the air for ages. It was really a tough one. It's a tough catch in hardball cricket, but it's even tougher in tape ball cricket, I reckon. The ball swings in the air when it comes down. It changes the direction and 3 men converge. So it wasn't a problem much because they are already in a great position. Look at that. Taimoor Mirza joined later, and in the end he was not even close. But to me, no one called that it's mine. Nobody was calling each other. Oh, he has hit it in the air again, but this time there is a lawn man at the long on boundary. Paddled back and grabbed it. That's a good catch. He caught that one in an Australian style by making the reverse cup of his hands. Bahadur lefty who played well, who smashed wonderful sixes now, picked up a good catch, and luckily he was a lone man there, as you mentioned, and nobody came around him. Yeah, otherwise that would have been dropped or grassed as well. Look at that stroke. There was a man back at the long on boundary. He came in a little bit and then paddled back a bit and took that very nicely. 5 overs are completed. Hassan Shahid goes for 9. Hassan Shahid, the ghost track of the cricket ball, he just gave us everything, but it's got the hide. So problem continues for Federal B area fighters, and not many balls are left in this innings. So their position of Gulshan Gohar is getting better and better. Ali Sher Khan has come out of the centre now. Let's see if he can play a few big strokes, because his main job is to bowl. Wickets are falling, runs are not coming. Nothing is happening for FB fighters. They're going through for a leg byes, I assume. Yes, it is. Last over of the innings starts with a leg by, and Tasawwur Khan and Ali, they have to try their best. They have to go for the big shots. They have nothing much to lose in this over. They're already 76 runs behind. So Umar, full toss, just one. So they are struggling to make a contact even with the full tosses. So it's a real problem the Federal BRF fighters are having at the moment. Yes, it's all Gulshan Gohar so far in this match. FB fighters never looked comfortable. Although they did the first thing right, they won the toss, but then they decided to field first. And this one is put away. Yes, it is. Over mid-wicket. That's a great shot. 6 runs. Some consolation for the right-hand batsman. Ali Sher Khan just came out of the centre. It was short pitch stuff, and that is well struck. 2 men started to converge. Umar dropped the ball short. It's a good pull shot.
They've got to do something magical in the next innings. They've got to restrict them another leg by around about 40-50 to stay in the game, which looks pretty difficult to me, because they've got a very strong batting side. Misses. Good delivery, low full toss. He missed it away and tried to heave it away to the onside. So it is turning out to be a good over. Just 7 conceded and 1 ball left and 75 for 6. So Gulshan Gohar will be nice and relaxed after the end of this innings. Last ball coming up of the innings. Full toss, and has he got the distance? Yes. He smashed it out of the park into the trees, and 6 to finish the innings. 81 after the end of over number 6. Finally, they got some respectability as far as their score is concerned. That was the last stroke. Full toss and well dispatched by the batsman over mid-wicket. It sailed over the trees, which are at the mid-wicket boundary. These are the two batters going back to the dugout. 81 for 6 they have scored, but they conceded a big lead, conceded a massive lead, which can cost them dearly in the next innings. Look at the scoreboard. Ubaid getting 24, and other double figure was Waseem, who got 10. Apart from that, no one got into the double figure, but Mr. Exa did. Extras were 12. 2 wickets each by Abu Bakr and Bacha. Gulshan Gohar got a very vital lead of 61. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Fighters innings. That was a good hit, although couldn't able to time it properly, but that was properly timed. That was the wicket. He hit it in the air, and it was in the air for a long time. That was a full toss, asking for the punishment, and got it. That was played in the air. Taimoor Mirza had all the time in the world to caught it, which he did. And that was smashed onto the onside and travelled over mid-wicket. That was hit with some disdain. Miscued one, and another catch for the fielder. That was smashed. Mirza was the one who got out on a very first ball. Then we saw a very good catch from Bahadur lefty. That sailed over mid-wicket for a 6. And that was a 6 as well. So they finished their innings in a good way. 81 for 6 they got in 6 overs. Give away the lead of 61 runs, which can be decisive as far as the result of this match is concerned. We already have got fielding side in the ground. Both the umpire are also at the middle,
and we're going to have a change in voices. Nadra Mushtaq is taking over, and alongside her will be Pakistan international cricketer Faisal Athar. थैंक यू राना साहब। और 61 की तकरीबन लीड हुई है गुलशन गौर को, और अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का स्टार्ट होता है और इसको क्या टारगेट फिक्स करते हैं, और एफबी फाइटर क्या कितने रन्स पे इनको रोक पाएंगे। तैमूर मिर्ज़ा एक दफ़ा फिर पिछले इनिंग में कामयाब ना हो सके, लेकिन इस दफ़ा देखते हैं कि टारगेट कितना सेट करने में ये हेल्प करते हैं अपनी टीम को। बहादुर अली उनके साथ ओपनिंग स्लॉट पे, दोनों ने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली पिछली इनिंग में, और इस दफ़ा फिर मुझे लगता यही है कि अंडर प्रेशर करेंगे अपनी बैटिंग से। क्या कहती हैं आप? थैंक यू फैसल अथर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से फर्स्ट इनिंग में इन्होंने भरपूर मुजाहरा किया है, तो सेकंड इनिंग में भी यही तवक्कुआत हैं कि अच्छे से अच्छा जो है वो खेले और अपनी टीम को जो है फतह से हमकिनार करें। और ये बहुत ही आसान कैच इन्होंने दिया है, जितनी हमने तारीफ की थी उसका बिल्कुल उलट हो गया है, जो कि बहुत बड़ा एक नाम, और इस वक्त अपनी विकेट गंवाते हुए पवेलियन की जानिब वापस लौट रहे हैं। एफबी फाइटर की बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस और स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया है, पहली खिलाड़ी को आउट कर चुके हैं और पहली ही बॉल पे। सो अब देखना है कि कितने रन्स पे ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे। पीछे थोड़ा बॉल था, उठाकर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद गई, नीचे फील्डर आए, कोई गलती नहीं और विकेट लेने में कामयाब। जी हाँ, बिल्कुल शाहनवाज इस वक्त बॉलिंग पर मौजूद हैं जिन्होंने बॉल करवाई। उसके अलावा पहली विकेट में ही जिस तरह से इन्होंने प्रेशराइज कर दिया है, तो लगता ये है कि आगे भी इसी तरह की भरपूर अगर बॉलिंग हुई तो नो डाउट के इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और डक पर बिल्कुल आउट हो चुके हैं बहादुर। और अब सरमद हमीद, जो कि लास्ट इनिंग में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने खेला है, भरपूर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी हाँ, बहादुर जो आउट हुए हैं पिछली इनिंग में, उन्होंने भी बड़ी जहराना बैटिंग की थी और अब इनको मौका मिला है सरमद को। देखते हैं कि ये किस तरह का जादू दिखाते हैं। पहला बॉल दिफाई अंदाज में खेले, कोई रन्स नहीं बना। जी हाँ, बिल्कुल डिफेंसिव खेल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज जब तक आप डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, एकदम से अगर आप हिट्स लगाएंगे, थोड़ा सा रीड आउट भी करना पड़ता है आप बॉलर्स की बॉलिंग को। और तैमूर मिर्ज़ा जब तक क्रीज पर हैं, मेरे ख्याल से कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बहुत बड़ा नाम टेप बॉल क्रिकेट का। और उठाकर खेला है मिड विकेट की तरफ, बॉल गई ग्राउंड से बाहर। 6 रन्स स्टार्ट कर चुके तैमूर मिर्जा, अपना काउंट खोला 6 रन से दूसरी ही बॉल पे। जी हाँ, मिड विकेट की जाने भरपूर इन्होंने सिक्सर लगाया तैमूर मिर्जा ने। मुकम्मल तौर पे बैट पे बॉल आ रहा है और एक और इन्होंने चौका रसीद किया है। मिड ऑन के ऊपर से शानदार दूसरा छक्का, लेकिन अंपायर का इशारा देखना है चेत के 4 रन्स का इशारा, 4 रन्स और 2 बॉलों पे 10 रन्स, 3 बॉलों का सामना किया तैमूर मिर्जा। इस तरह की बैटिंग के लिए जाने वाले ये नाम इनका, और कमाल है इनका काम। घुटने को टेकते हुए जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक लगाया है और बाउंड्री ली है, ये बहुत जबरदस्त इनकी इनिंग रही। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। शाहनवाज कोशिश कर रहे हैं नापीतुली बॉलिंग कराने के लिए।
और एक और शानदार शॉट, हवा से बातें करती हुई बॉल, देखना है कि क्या ग्राउंड के बाहर जाएगी। यकीनी तौर पे 6 रन। दूसरा छक्का तैमूर मिर्जा का। गुलशन गौहर 16 पर 1 पहले ओवर के इख्तिताम पर। क्या कहते हैं फैसल, क्या नजर आ रहा है आपको? लीड है गुलशन गौहर्स की 177 रन्स की। इस वक्त तो शायकीन और के आसिफ कमाल दिखाते हुए, लेकिन इन्होंने अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हाथ जरूर हटाएंगे। और यहाँ देखना है इनका कमाल कि क्या इसको कर सकेंगे ये बैलेंस। ये जिस तरह से के आसिफ ने सर पे रखा हुआ है ये, और कह रहे थे घर जाके करूंगा, लेकिन हमें नहीं पता था इतने एक्साइटेड हैं कि वो यहाँ ग्राउंड में ही शुरू हो जाएंगे। यहाँ बैलेंस देखना पड़ेगा, इस चीज से बैलेंस आपका इंप्रूव होगा और आपकी चाल भी जो है वो काफी इंप्रूव हो सकती है अगर इसको मजीद प्रैक्टिस करते रहें तो। ये इसे आप बैलेंस कहते हैं? शर्त ये है कि इन्होंने अपने हाथ हटाने होंगे। जी हाँ, ये बहुत ही टेक्निकल चीज होती है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। ये वही जिसका काम कहते हैं उसी को साझे, और जिस तरह से बॉलिंग करा रहे हैं इन्हीं को पता है कि अली शेर अब क्या करने वाले हैं। कोशिश करते रहे तो सीख जाएंगे। लास्ट इनिंग में काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे। लास्ट में हालांकि 2 विकेट्स भी हासिल की थी अली शेर ने, और अब देखना यह है कि सेकंड इनिंग में क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं अली शेर बॉलिंग के निशान पर। हवा में गई है, उठा के खेला है, नीचे फील्डर है, देखना यह कि कामयाब होंगे। और एक अच्छी ट्राई लेकिन मिस कर गए इस कैच को। और गुलशन हैवी फाइटर को यहाँ पे एक नुकसान बड़ा हो सकता है, जो इनको मोमेंटम मिल रहा है विकेट गिराने पर, ये लॉस हो सकता है और ये कीमती भी हो सकता है। मिड विकेट मारने गए थे, टॉप एज हुआ, फील्डर नीचे थे लेकिन बिल्कुल ही आउट क्लास हो गए। तैमूर मिर्जा एक दफा फिर 5 गेंदों पे 16 रन बना चुके हैं। दूसरे ओवर का खेल जारी, 17 पर 1। बहुत शानदार बॉल, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी इस वक्त की है अली शेर ने। इससे डॉट्स खिलाना भी बहुत ज्यादा इनके नुक्ता निगाह से बहुत जबरदस्त होगा फील्डर्स के, एफबी फाइटर्स के। जी हाँ, एफबी फाइटर ऑलरेडी अंडर प्रेशर है क्योंकि 78 रन अब तक लीड मिलाकर हो चुके हैं। सो एडवांटेज बैटिंग के पास है। एक दौर शानदार बॉल, बिल्कुल कंप्लीट बीट किया अपनी पेस से, वेरिएशन का शानदार मुजाहरा। और सामने तैमूर मिर्जा, और जब सामने तैमूर मिर्जा हो तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा तो बॉलर भी शेकी हो ही जाता है कि इनको आउट कैसे किया जाएगा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त पिंच हिटर हैं टेप बॉल क्रिकेट में। या इस टूर्नामेंट में अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें यही देखा है कि जो बॉल स्लो हो रही है उस पर हिट करना आसान नहीं हो रहा और तेज बॉल पे तेज ही हिट लग रही है। और इस दफा तेज बॉल थी और बहुत जोरदार शॉट खेला, सीधा 4 रन के लिए। भरपूर इन्होंने शॉट लगाया तैमूर मिर्जा ने। अच्छा, इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अगर आप देखें बहुत काम लगते हैं, बहुत कूल माइंडेड होकर खेलते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक्स लगाते हैं, लगता नहीं कोई प्रेशर इनके ऊपर है, कोई बर्डन नहीं लेते हैं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप देखें खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बाउंड्री लगाई, 4 रन का इजाफा किया अपने स्कोर में तैमूर मिर्जा ने। हो सकता है नादरा की मेंटली तौर पे काम हो, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसमें तो कामनेस बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि 8 बॉलों पे 20 रन बना चुके हैं। और एक और उठाकर खेला है, नीचे फील्डर आ रहे हैं, ये कीमती कैच हो सकता है क्या? ये और ड्रॉप हो गया। 3 फील्डर नीचे आए, कोशिश की और एक बहुत कीमती विकेट जो हाथ से गवा बैठे। जी हाँ फैसल, बिल्कुल इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जब आप 3 तरफ से आपके फील्डर्स आ जाएं
तो थोड़ा कहीं ना कहीं पर आपके कोई वीकनेस आ जाती है, आप नहीं पहुंच पाते, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो जब देख रहे हैं कि एक फील्डर के पास गेंद आ रही है तो मेरे ख्याल से दूसरे को थोड़ा सा वहाँ पर रुकना चाहिए। जब ऑलरेडी आ रहा था गेंद और देखे 3 फील्डर्स एक ही बॉल के नीचे, तो आमतौर पर नादरा ऐसे कैचेस में ज़रूरी होता है कि कॉल करें। अब इसका खुमियादा एक दफ़ा फिर हवा में गेंद गई है, फील्डर नीचे आ रहे हैं और इस दफ़ा कामयाब हो गए कैच लेने में। बहुत आला गेंदबाजी का मुजाहरा किया है अली शेर ने। फर्स्ट इनिंग को उन्होंने ओवरकम करने की कोशिश की है कि जो गलतियां उसमें हो चुकी हैं इस बार ना हो, और वाकई वो उसमें कामयाब रहे। 3 मरतबा मौके मिले इनको कैच करने के, लेकिन फील्डिंग मिसफील्ड हुई और अब फाइनली कैच करके पवेलियन की जानिब लौटा दिया है फील्डर्स ने, एफबी फाइटर्स ने, और एक अच्छी विकेट सरमद हमीद की। एफबी फाइटर ने जो जाल बिछाया था उसमें ताइमूर मिर्जा निकलने में कामयाब हुए, लेकिन हीद इस वक्त आउट होके वापस सरमद हीद पवेलियन में वापस और अब आए हैं उमर गुज्जर। 2 ओवर में 22 रन, 2 खिलाड़ी आउट। और एक टॉप शॉट असगर ईशा स्टेडियम का, अतराफ में अजान की आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ईशा का वक्त हुआ जाता है। खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा हुआ ये ग्राउंड असगर ईशा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। असगर शाह साहब, फिर डॉक्टर शाह साहब, और ये ग्राउंड जो है वो किसी तारुफ का मोहताज इस लिहाज से नहीं है कि यहाँ से बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो निकले हैं। बहुत इवेंट्स यहाँ पर हुए हैं जो कि हमने खुद भी कवर किए। बेहतरीन ग्राउंड, बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस यहाँ की। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तमाशाई जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ख़ासतौर पे यंगस्टर्स हमें बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आप देखें पवेलियन में हनीफ मोहम्मद स्टैंड में, उसके अलावा मुइन खान स्टैंड नज़र आ रहा है जिसमें काफ़ी तमाशाइयों की तादाद है। जी हाँ नादरा, कमाल की बात यह कि आज फाइनल भी है लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये खूबसूरत मंजर चांद का नमूदार होते हुए, चांद बदलियों में कुछ छुपा छुपा सा चांद है। मौसम क्योंकि इसी तरह का चल रहा है कराची में, कभी धूप कभी छाँव। और एक और जोरदार शॉट मिड ऑन की तरफ, गेंद गई बाहर 6 रन के लिए। सो तैमूर मिर्जा की स्ट्राइक जारी और ताबड़तोड़ हमले तैमूर मिर्जा के। अगर आप मौका देंगे और ख़ास तौर पे तैमूर मिर्जा को, तो फिर इसी तरह का नुकसान उठाएंगे। स्लो वन की थी, अच्छा एडजस्ट किया और उसके साथ ही बैट और बॉल का जो मिलाप था, नतीजा 6 रन। और इस दफ़ा बीट हुए, दाद देना पड़ेगी यहाँ पे बॉलर को, शाहनवाज को, क्योंकि पिछले बॉल पे 6 रन खाए थे और स्लो वन की, इसलिए टाइम नहीं कर पाए तैमूर मिर्जा। इस दफ़ा हंसते हुए, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि अगर आप स्लो वन करते हैं तभी आप बचते हैं। एक और छक्का, तैमूर मिर्जा टेक ऑफ करते हुए छक्कों की सूरत में पूरे मौके फराहम कर रहे हैं इस वक्त शाहनवाज अपनी गेंदबाजी से। तैमूर मिर्जा को वाकई खिला रहे हैं वो। एक और टाइम क्या उठा के खेला है, फील्डर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सो छक्कों की बरसात तैमूर मिर्जा के साथ, 12 बॉलों पे 33। अगर आप इतने मौके देंगे और जाल से निकल जाएगा कोई शिकार तो फिर इसी तरह आप पर ये भारी पड़ेगा। और तैमूर मिर्जा ने अपनी बैटिंग से एपनाटाइज करना शुरू कर दिया है। एक और जोरदार टाइम किया है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फ्लैट छक्का। तैमूर मिर्जा
जिस चीज़ के लिए जाने माने जाते हैं उसी किस्म की बैटिंग का मुजाहरा करते हुए आपने मौका दिया और मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। इसको कहते हैं मौके पे, ये तो छक्का था। और एक और शानदार शॉट, एक और छक्का। एक और छक्का, मिड विकेट के ऊपर से इन्होंने छक्का लगाया है और इस वक्त इन्होंने ये नो बॉल का इशारा भी है और यकीनी तौर पे फ्री हिट का इशारा भी होगा यहाँ से। और इसी के साथ ही निस सेंचुरी स्कोर कर ली है, यानी कि 51 रन्स तैमूर मिर्जा ने। बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली है इन्होंने, 15 गेंदों का सामना किया है और वाकई जबरदस्त एंटरटेनर साबित हुए हैं इस वक्त। 4 छक्के मार चुके हैं तैमूर मिर्जा और ये 5 छक्के हो गए। नो बॉल भी थी। अब इस बॉल पर देखते हैं और एक और शानदार उठाकर खेला है, हवा से बातें करती हुई गेंद, यकीनी तौर पे ग्राउंड के बाहर 6 रन्स। थोड़ा सा लॉन्ग ट्रैवल था गेंद का और उसके साथ ही 6 रन का इजाफा और यूं तकरीबन 60 रन्स पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त 3 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 60 रन्स गुलशन गौहर्स के 2 विकेटों के नुकसान पर 121 रन्स की लीड हासिल है। और यहाँ पर कॉम बॉक्स में चेंज हमारे साथ हैं के आसिफ और फर्रुख रियाज। ओवर टू यू। Thank you very much, Faisal Athar and Nadra Mushtaq. Once again, Taimoor Mirza is on fire. 57 just on 16 deliveries. And if you see the bowling figures from Shahnawaz, 54 in 2 overs. It's been banged from Taimoor Mirza. Electrifying stuff by Taimoor Mirza. He's a well-known cricketer to take on any bowler in any given condition. 121 is a massive lead they must be enjoying, and the pressure is mounting on the bowling side with each ball. It's a short pitch delivery and definitely it's a wide delivery. Shah Jahan. Actually, I was discussing earlier that if a bowler is coming up with the short pitch deliveries and coming up with quick bouncers, won't be easy to hit that ball, especially in tape ball cricket. The batsman sometimes swings the bat. If there is a pace, he can get the maximum of boundary as a result of pace. Not quite off the middle, just a single. Farooq, why I'm telling you, because you know that if a batter is coming up with the horizontal bat, not coming up with the straight bat, if you are coming with in swing, out swing, slow delivery, changing in your pace, always try to disturb the batter. This is with the technique if you are trying to save the runs. Yes, of course, the margin of error is quite minimum, especially this against a specialist batsman. Slow one, well picked up, well struck, short of catch it, and he has dropped it as well. It's not only a drop catch, but a maximum as well, and the wicket keeper and the rest of the teammates are not happy at all. It was a gettable chance, I reckon. It was a tough one though, but Taimoor Mirza wicket is always precious. Look at that. It was a slow delivery. For me, you should have tried well. You should have tried to save actually 6 runs, you know, if you can't take this catch. Yes, at least he could have slapped the ball inside the play. Beautiful played, wrist work into the fence. What a shot that is. It's a flat one, but lots of timing and plenty of wrist work as well. Quality shot from a quality player. TM. There's a conversation going on between Taimoor Mirza and the wicketkeeper Haris Ali. All the time he's asking, take the catch, and Taimoor Mirza just enjoying this. Look at that shot, beautifully. Oh, this could be a wide or maybe over the stumps. Yes, it's a dot ball, and the margin of error is so minimum for the bowler. In fact, it's wide given. Maybe because of the leg side, but he was shuffling across, Asif. Well, in Punjabi he's saying 100 kar sakne, we could touch 100.
It's a tough call, Faro. It's a very tough call. I must say, hard luck for the bowler. Okay, this time try to hit that towards mid-wicket area just for the single. You've been observing Taimoor Mirza on the social media, the way he's playing for a long time, got very good arm and got a huge fan following on the, especially tape ball. And I think I must say that he's the icon for the tape ball player. Well struck and long enough. Umar Khan joins the party. He's got his first maximum, and it was a width provided and nicely managed by Umar Khan there. He freed his arms in beautifully, and he must be delighted to join the party. Short pitch tough, and it is beautifully played. Umar, he belongs to Gujjar, Faisalabad, and he also played for the Lahore Qalandars Players Development Program. It's a good delivery. I'm just listening to Taimoor Mirza. He said it was a lollipop delivery. Yeah, of course, he never misses the chance to make more runs when their position bowling is slightly on the weaker side. You can see the numbers of Taimoor Mirza, 70 of 19. What this guy is doing right here? Is it some kind of a show? Actually, I've been asked by the director, Misbah, that either you could do it or not. Look, I've done it. Is it live or is he your twin brother? See, I could do anything. This is what you call that, yes, I'm ready for any challenge. Wow, well done, Asif. A lot of hard work, a lot of concentration. You have another field to choose. No, I'm always ready to accept the challenges. See, this is what Misbah Saab said, and I've done it. Lovely aerial view of North Nazabad, Azhar Ali Shah Stadium here in Karachi. And Umar strike, well struck hard and flat. Unable to find the gap here. Now we have 11 deliveries. Taimoor Mirza is on 70. So let's talk about his century. Either he would be able to touch that 100 figure or not. Of course, he has a chance, but inside edge, a rare miss. He can't believe it. What is he complaining? Taimoor Mirza, or maybe just amazed how he missed that. A rare dot ball. He has faced 20 deliveries and very rarely he has missed any deliveries. Was a rare dot ball, I reckon. Shafiq again. That's gone in the air. Somebody wants it. Two men converging. And it's a drop. Oh, taking it. Taking it in the second attempt. Comedy of errors in the middle. Yes, and yes, even Taimoor Mirza is enjoying this, you know. Comedy of errors somehow. They got a catch and personal milestone has been vanished here. So Taimoor Mirza is walking back. He got the chance, and just for a second I thought they missed a vital opportunity. But this is how Taimoor Mirza gone wide outside the off stump, not cut of the middle, and he knew straight away he was in trouble here. Now see what I have predicted, that if you're just trying to come up with the short pitch deliveries, just change your pace, come up with the slow, but it should be short pitch deliveries, not over pitch delivery. Always disturbing for the batter, and this is what happened with the Taimoor Mirza as well. Absolutely. Marathon innings of 70 of 21 innings is over, but he did a marvelous job. Obviously put his side in an extremely good position. So Umar is on strike now. He has got the license to free his arms, to go after the ball every ball. Well bowled, extremely well bowled, and not covered by the keeper. Goodness me, this is a cruel game. Bye is given. For me, it is the ball of tournament so far. The way it swung nicely in the air. What does it mean that he came up with the genuine and sheer pace? Impressed with Naseem Shah, the way he bowled Kushal Mendes in the final in Dubai.
Again, Farooq, this is the genuine liner length in the death overs that you're just trying to hit and come up with the Yorkers. And this is called block hole. And I'm so happy that these youngsters are doing actually the perfect job. Yes, whoever will find this kind of length on consistent basis, obviously, he'll find himself with good bowling figures, with good success rate. And so far, it's not a bad over. There's 6 runs conceded. And last ball, well struck. Well struck, and that's gone a long, long way. Gigantic hit to finish the over. And that 6 spoiled the over. It was potentially a good over. Just one bad ball and beautifully struck by Umar. But Daniyal, in fact, and he off the mark with a superb 6. 5 gone, 97 for 3. It wasn't remotely short, but very well struck. He was deep in the crease. And look at that, and great camera work too. He cleared the crease by a long, long way. Well, these little kids, they're enjoying cricket. They're ready to play cricket even. Yes, they love this game, and spectators of different age groups are present here. And certainly enjoying tremendous hitting of Gulshan Gohars. 1 ball left. So Asif, do they have opportunity to declare the innings like a test match? Already they are way ahead, although they are compelled to complete 6 overs. It's never happened before in KTPL, even in the first edition as well. Well, it's a genuine question that you've already gone almost touching 158. But I think that's right, that batters are getting chance, even the bowlers are getting chance. In cricket, it's not final each and everything till the last delivery. Yes, obviously, who haven't got the batting opportunity, they can bat. They can bat without any pressure. And now Daniyal back on strike, who got off the mark with a maximum. Good shot, and it's found the gap. In fact, it has gone all the way. We have to wait for the umpire signal. I think it landed beyond the rope. It was struck so hard and flat. And his third umpire has to make the decision. I think he's not too sure. It was a flat shot, very hard hit. Almost touches the ropes, just checking by the third umpire. I think the boundary rider should inform the umpire as well, because he's the best position, the closest to the boundary. So with honesty, he should tell the umpire where the ball actually landed. Yes, that's right. So I think 1 bounce over the rope. 1 bounce, yes, it's a boundary given in the end. Still, third umpire is checking. Not sure. Still everyone is waiting. Either it's a 6 or it's a boundary. Let's check from another view. Very close, very close. On the full, I reckon. So umpire has given the wide delivery, and wicketkeeper is not happy at all. So 4 legal balls are left to finish the innings. Down the leg side again. So another long over is turning out to be Ali Sher Khan was wavered down the leg side. Well, this is the beauty of this double innings format. You're coming up with in first inning making huge runs, getting lead, and then second inning you're making another mountain for the opposition. Good shot. It's high in the air, but it hasn't got the distance, and he has dropped it. He has dropped it. 2 men converge once again. He tried to work towards the offside. But nevertheless, they have caught 2 in the process. And Farooq, when we talk about these skyer catches, high catches, you require a lot of practice for that. Yesterday I was discussing the same thing with Rana Ishfaq. Either they do this practice or not, because in tape ball cricket we do not observe. And this time connected so nicely.
This is going over the square leg boundary for the maximum. Friendly ball, full toss, but very well struck indeed. Sweet sound of the bat we heard. A juicy delivery with a full toss, and look at that. He must have enjoyed that. And once again, good camera work. Beautifully struck. Well, Daniyal is on 18 now, just on 4 deliveries. 2 balls remaining. Taimoor, Mirza and the owner of the Gulshan Gohar, they're just enjoying the tea and enjoying the party as well. Yes, they can afford it. Yes, because their side is in top position, and 175 or maybe more than that will be the target for Federal Beer fighters, and they have to fight really hard to win the game. The current run rate is 21.11. Coming and around the wicket now, and miss up with his bowling shot. Four wides given, 2 wide in fact, and that resulted in 4 runs and 2 extra balls. Daniyal 18 of 4, Umar 10 of 7. Waited and beautifully played. 6 more. Don't worry about that. He stayed in the crease and dealt with the maximum. Well, now talk about Daniyal. That he's still there to help his team, and he's not stopping. Once again, just waited, and this is going goodbye. It's a very good shot. If you drop the ball short, if you're coming around the wicket, try to get an advantage of angle, but if you drop the ball short and that's better. Beat him for pace inside edge, just 1, and with this single, the innings has come to an end. 121 for 3 for Gulshan Gohars in their second innings, so it means 182 runs, the Mount Everest required for Federal Beer fighters to win the game. 183 will be the target, a huge target. And FP fighters, they require, they would have to play if run. You can see that the batting guard, Taimoor Mirza again 70 just on 21 deliveries, and Daniyal 25 on just 6 deliveries. 15 extras there, 121 actually, but they got a good lead in first innings. Of course, as a bowling card we have, not much to talk about. 1 for 54 for Mukhtiar, 1 for 30 for Ali, none for 25 Shahnawaz, and 1 for 8 for Shafiq was economical. So, and they considered 15 runs as 121 for 3 after 6 overs. Now highlights of the last innings. It's Bahadur lefty, opened in his worth, and that was a shot outside the off stump. There's a catch it was a sound, and straight away Taimoor lefty. Bahadur lefty in fact got out, and then Taimoor Mirza show began, and he played some tremendous shots in different parts of the ground. There was a boundary, a rare boundary. He mainly dealt with the maximum. Gigantic 6 to the onside. Lots of camera work as well, and there was a catch. No mistake. Another maximum from Taimoor Mirza to the onside. He didn't miss any opportunity, anything short. He punished with the maximum. Mainly he dominated on the onside. Superb batting effort from the Gulshan Gohars, and of course credit goes to Taimoor Mirza. And the first innings, that was Bahadur lefty, the captain of Gulshan Gohars. Now they require 183 runs to win.
Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape-Ball Premier League. Only on Jio Super. दाखिल हो चुके हैं 183 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ इनको अबूर करना है। राना अशफाक, आप पिछले सीज़न में भी KTPL में कमेंट्री में रहे, इतना बड़ा टारगेट तो आपने नहीं देखा होगा पहले। 6 ओवर्स की गेम में तो कभी भी नहीं देखा आसिफ। 183 रन्स का टारगेट स्कूल गांव में भी नहीं देखा, और बड़े बड़े रन्स बनते हैं, मगर 183 को आप कैलकुलेट करें 36 गेंदों पे कि कितनी औसत बनती है। 20 की औसत भी बने तो 120 बनते हैं। उबैद लेफ्टी बैट्समैन हैं जो विकेट पे मौजूद हैं, तो आप अब काउंट करते जाएं कि 100, ये तकरीबन 30 की औसत है। 6-30 को अगर बनाएं तो 180 बनेंगे। 183 30.50 की 36 में से आपको 31 छक्के लगाने हैं, तो ये तो कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा। और पहली गेंद का आगाज़ ही डॉट डिलीवरी से हुआ है। कभी कभी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि जो दिल करता है कि पूरी हो जाएं। आज अगर यहाँ पर 30-31 छक्के लग गए राना साहब, तो इट कैन हैपन इन क्रिकेट। जब जोहान्सबर्ग में 434 वनडे में बने तो कोई नहीं सोच रहा था कि ग्लेन मैग्रा जैसे बॉलर्स को साउथ अफ्रीका इतने रन्स करेगी। ये देखें, बहुत ज़ोरदार शॉट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर छक्का। ये एक छक्का है, लेकिन ऐसे बहुत से चाहिए जी। अब बाकी रह गए 30 छक्के। हाँ, अब कमेंट्री इसी तरह हो गया, बाकी इतने छक्के रह गए, इतने रन्स नहीं, छक्के। तो बहरहाल ये है कि फिर 245 चेज कर लिए 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने, और बहुत कुछ हम देखते रहे हैं और देखते आ रहे हैं क्रिकेट में। क्रिकेट जो है वो कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि ये रन आउट चांस बहुत आगे आ गए थे और थ्रो विकेटों में लगा नहीं, वरना यकीनन ये ट्रबल में होते। नॉन स्ट्राइकर काफ़ी उतावले हैं, काफ़ी ईगर हैं कि वो स्ट्राइक पे आ जाएं। जी, उबैद लेफ्टी काफ़ी ख़तरनाक हिटिंग करते हैं, और आज उनका इरादा तो यही है कि बाकी मानदा 30 छक्के वो लगाएंगे। सो अगर वो इस इरादे से आएँ तो बिल्कुल उनको स्ट्राइक पर आना चाहिए। 33 गेंदें बाकी रह गई हैं और 30 छक्के चाहिए उन पे। ये ज़ोरदार स्ट्रोक और गेंद कवर्स के फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह विकेट गिरी, और अब जो रही सही उम्मीदें, या यूँ कहें कि जो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले वाली जो ख्वाहिश थी, वो भी अब लगता है कि इनकी पूरी नहीं हुई है, और 6 रन पे पहली विकेट भी गिर गई है। तो एफबी फाइटर्स ने बस टॉस जीता इस मैच में और कुछ भी नहीं किया। ये हम डिसमिसल देख सकते हैं बैट्समैन की। बैकफुट जो है वो डीप इन द क्रीज था, जो कि ज़्यादातर ट्रेप बॉल के क्रिकेटर्स का स्टाइल है, और गेंद कवर्स में हवा में गई और आसानी से कैच कर ली गई। बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल जारी है दुबई में। ये उस्मान जान फाटा हैं जो 6 रन बनाकर आउट हुए हैं। यहाँ पे मैं अभी देख रहा था तो 19वें ओवर में कोई 149 पे श्रीलंका के 6 आउट थे, तो 5 आउट थे उनके 58 पे। वहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा कमबैक किया है श्रीलंका ने, और ये फाइनल मुकाबला पूरी तरह से होना है। तसव्वुर अब्बास यहाँ आ रहे हैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग करने के लिए। तसव्वुर अब्बास हार्ड हिटिंग करते हैं, और जो पहला एडिशन हुआ था KTPL का, उसमें ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था तसव्वुर ने, और इस वक्त चेहरे पर स्माइल है, ऐसा लगता है कि टेंशन फ्री हैं। बिल्कुल जाहिर है आसिफ के इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, एबी फाइटर्स मस्ट बी इन टेंशन बाय एनी मीन। और ये एक और ख़तरा है विकेट गिरने का। सरमद को कॉल किया गया है, ही केम इन, और बड़ी आसानी से उन्होंने कैच किया, तो एक और विकेट गिरी। तो दूसरी तरफ अगर छक्के लग रहे तो इस तरफ विकेटें गिर रही हैं, और टोटली ऑन द कॉन्ट्रास्ट है। सो तसव्वुर अब्बास अपनी तमाम उम्मीदें वापस लिए अब इस डग आउट में वापस जाते हुए, और पहली गेंद पर आउट हो गए थे। ये देखिए, इसको ऊंचा खेले थे और अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन उनका अंजाम कर दिया सरमद ने ज़बरदस्त कैच लेकर।
जी हाँ, एपी फाइटर्स टारगेट सबसे बड़ा चेज कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि लोएस्ट पर आउट हो जाएं अब तक। और ये अक्सर होता है, अगर एक तरफ से बहुत ज़्यादा रन्स बन जाएं तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि कोलैप्स हो जाता है और टीम्स रन्स नहीं कर पाती। टफ टाइम तो क्या देना, वो बिल्कुल ही ढेर हो जाती है। तो जिसे कहते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ अ क्रम्पलिंग एट द मोमेंट। और वसीम अप्पू आए हैं, इनका अच्छा खासा नाम है, काफ़ी जारहे मिजाज बैट्समैन है, कैन गो फॉर द बिग स्ट्रोक्स, मगर देखते हैं कि खेल पाते हैं कि नहीं। उबैद लेफ्टी इस दफ़ा इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब और एक रन हासिल किया। पहले ओवर के इख्तिताम पर सिर्फ 7 रन बने हैं और 2 खिलाड़ी आउट हैं। अगर आपको पता हो कि 30 गेंदों में आपको छक्के 31 चाहिए या बाद में 24 गेंदों पे 28 छक्के, तो आप इनिंग्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपकी भी इस ख्वाहिश पर सिर्फ दम ही निकलेगा। इट इज़ नॉट माई डिज़ायर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 इनिंग्स का मैच है, इनिंग्स कैन बी डिक्लेयर्ड आई रेकन। लेकिन जिस अंदाज से आपने पूछा है मुझे ऐसा लगा ये आपकी ख्वाहिश है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ख्वाहिश तो इसलिए हो नहीं सकती क्योंकि इसके बाद एक और मैच है। ये आखिरी मैच होता तो आप कह सकते हैं कि ख्वाहिश है। मिड विकेट की जानिब खेले, वहाँ फील्डर मौजूद, पर चूँकि मैच इस वक्त वन साइडेड है तो इसलिए हम ज़रा स्पाइसी कमेंट्री या फ़नी कमेंट्री करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ज़ाहिर है कि आपको जो तमाम सूरत हाल है इस टूर्नामेंट की, फिर एशिया कप की और इन द वर्ल्ड जो क्रिकेट हो रही है उसकी भी कभी कभी आपसे हम बातें शेयर करते हैं। एंड इट शुड बी अ नो बॉल। ये एक तो नो बॉल होनी चाहिए और साथ में इसमें कुछ रन्स भी आने चाहिए। ओवर थ्रो हुआ लेकिन बैकअप किया फील्डर ने और नो बॉल का इशारा अब अंपायर की जानिब से, तो अब ये फ्री हिट होगी। जब हम बात करते हैं कि 24 गेंदों पर 28 छक्के दरकार हैं और ऐसी सिचुएशन में इनिंग्स डिक्लेयर कर दी जाए तो फिर आपको याद होना चाहिए एक ओवर में 48 रन दरकार थे। सुपर सिक्सेस के फाइनल हांगकॉन्ग में इमरान नज़ीर बॉलर थे और वो चेज़ करवा दिए थे। आई थिंक क्या 8 बॉल का ओवर था या उन्होंने नो बॉलिंग की थी। ये ऊंचा शॉट है और ये छक्का है, मेरा ख्याल दैट वाज 8 बॉल्स ओवर। इवन देन 48 रन बनना, 8 छक्के तो लगे ना। उसमें वाइड के भी रन्स हुए, वाइड के भी चौके हो गए, 1-2 नो बॉल भी हो गई। सो शुएब मलिक काफ़ी पछताए थे आखिरी ओवर इमरान नज़ीर को देकर। ये आखिरी छक्का, एक और अच्छा शॉट, एक और छक्का, बैक फुट पे जाके मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, पावरफुल स्ट्रोक। जी हाँ, थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर एबी फाइटर्स की डग आउट में, लेकिन ये बात जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है। 160 रन अब दरकार हैं। उबैद लेफ्टी, एक और बड़ा अच्छा शॉट और उबैद लेफ्टी बिल्कुल आसिफ जो कहना चाह रहे थे उसी तरह खेल रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और तूफ़ानी बैटिंग कर रहे हैं। मैं एक्साइटेड ज़्यादा इसलिए नहीं हूँ कि बहुत रन्स चाहिए, गेंदें कम हैं, लेकिन बात यह है कि आसिफ 6 छक्के 8 गेंदों पे या 6 गेंदों पे पॉसिबल है। देखिए 1964-68 में जब वनडे क्रिकेट का भी तस्वर नया था, इंग्लैंड वालों ने जेलेट कप शुरू करवाया था 63 में, तो गैरी सोबर्स ने तब मारे। ये एक और छक्का, छक्कों की बरसात, लेकिन लगातार 30 छक्के लगना या 28 छक्के लगना, तो ये ज़रा बियॉन्ड माय थिंकिंग है, वरना बाकी 6 छक्के तो लगे हैं, इंटरनेशनल लगे। क्योंकि आप माजी की बात कर रहे हैं तो मुझे एक शेर याद आ गया कि हसरत से देखते रहे माजी को इस तरह जैसे कि लौट आएंगे वो दिन जो गुजर गए। लेकिन फिर इसका जवाब तो ये है कि यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे आपसे मेरा, जिसको 6 छक्के लगे हों वो माजी को क्या करेगा। शोट ब्रॉड तो नहीं चाहेंगे उन्हें 2007 का वर्ल्ड कप याद दिलाया जाए, मेलकम नाश तो कभी नहीं चाहेंगे उन्हें गैरी सोबर याद दिलाया जाए, या वो डच बॉलर तो गिब्स तो उसको ख्वाब में भी आते होंगे तो डरते होंगे बेचारे। बेन स्टोक्स को भी 4 छक्के याद, तो 4 छक्के ब्रेथवेट ने लगे। बहरहाल ये यकीनन क्रिकेट रुलाता भी है, हंसादा भी है। मुझे तो वो मॉर्कल नहीं भूलते, मॉर्कल जब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर हुआ 2015 के, तो हाय वो कितना रो रहे थे और कितने परेशान थे और उनकी हालत देखने के काबिल थी। तो ये तो आसिफ
इसमें बंदा पैशनेट इतना हो जाता है। मुझे याद है जब हम पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में आए, मिडिल स्कूल से, तो उस वक्त जब न्यूजीलैंड के टूर पे हमारी टीम होती थी तो हम रेडियो उसमें रज़ाई में रख के सोते थे, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ तो खोल नहीं सकते थे, पेरेंट्स सो रहे हैं। लेकिन 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे क्राइस्ट चर्च में या हैमिल्टन में वेलिंगटन मैच हो रहा है और कमेंट्री सुन रहे हैं, तो सारी रात जाग रहे हैं उस चक्कर में, और सुबह स्कूल जा रहे हैं तो फिर मार पड़ रही है। सो ये क्रिकेट, ये जो शौक़ है, इसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ भी एट टाइम्स आपको देना पड़ती हैं। उबैद लेफ्टी ने अब तक अच्छी बैटिंग की है और अब 37 रन हर ओवर में दरकार हैं। नो बॉल, और नो बॉल पर इस दफा इसको खेले हैं ओवर द मिड विकेट और शानदार छक्का। 8 रन का इजाफा, और जावेद कदीर को अभी भी बड़े डिजेक्टेड हैं, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं। देखें उनके चेहरे के तासुरात से आया है कि इस वक्त व्हाट इज़ गोइंग थ्रू हिज माइंड। 140 रन अब भी चाहिए हैं। ओह, इस दफ़ा कनेक्ट नहीं कर पाए और डॉट बॉल। अब तक ये चीज़ विटनेस की गई है कि बैटर्स जो हैं वो फ्री डिलीवरी, फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा सकते, और जब भी फ्री हिट हुई है उस डिलीवरी को लूज़ किया बैटर्स ने। बिल्कुल, ज़्यादातर वक्त ऐसा ही हमने देखा है इस टूर्नामेंट में। फ्री हिट पे छक्के कम लगे हैं, और इवन नो बॉल जो बॉल नो बॉल हुई उस पर भी छक्के कम लगे हैं, मगर इतने नहीं लगे। यानी 14 रन्स की, 8 रन्स की बॉलें कम हुई हैं, ये है। बहरहाल फिर भी बहुत रन्स बने हैं आज, और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है गुलशन गौहर्स ने, और एफबी फाइटर्स को अब तक तो बिल्कुल उन्होंने आउट प्ले किया हुआ है। Mr. Saeed is talking to Daud Bosch. I wish I would know what they are talking about. I am not a good lip reader, Asif. डाउन द लेग साइड इसको फ्लिक करना चाहते थे, 1 रन हासिल किया और दूसरा रन भी लेना चाहते हैं, क्योंकि उबैद लेफ्टी ज़्यादातर स्ट्राइक संभालना चाह रहे हैं, और क्योंकि अब 139 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। ऐसा लगता है कि ये बात एफबी फाइटर्स से बहुत दूर निकल गई, और ये बात रावलपिंडी तक चली गई। बिल्कुल, उससे भी कहीं दूर ले जाएं, क्योंकि 132 बनेंगे अगर 22 छक्के लगे। वाइड बॉल, ये ऐसी गेंदें हो जाएं तो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो जाएगा। वाइड बॉल के 2 रन, 22 गेंदों पर 137 रन चाहिए, यानी 22 छक्का 132। अच्छा, आपको ट्रेबल्स कहाँ तक याद हैं आसिफ? मैं रियाजी में, हिसाब में बहुत अच्छा नहीं हूँ। यानी आपने बिल्कुल ही मेरा सवाल जो है उसको आउट ऑफ इक्वेशन कर दिया। और इस दफ़ा इसको पुल करना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। रन्स मिल जाएंगे 4 फाइन लेग की जानिब, और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बना लें और विक्ट्री को, इस शिकस्त को रिस्पेक्टेबल बना लें। डिफीट की मार्जिन को जितना कम करेंगे उतना अच्छा है, और साथ साथ इन बैट्समैनों के एतमाद में इजाफा होगा। जितने छक्के ये मार लेंगे और जितने रन्स कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इट विल डू वर्ल्ड ऑफ गुड फॉर देम। और वसीम अपू ने इस दफा इसको कनेक्ट किया है। फील्डर बॉल के नीचे जरूर आ रहे हैं और कोई गलती नहीं की, शानदार कैच लिया है। अपू ने कुछ स्ट्रोक्स जरूर खेले, बट नॉट टू मैनी। आउट होकर वापस लौट रहे हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशानी में है एफबी फाइटर्स। ये लास्ट विकेट, अपनी क्रीज में ही खड़े खड़े उन्होंने इस गेंद को हिट आउट करना चाहा था, सीधा फील्डर के पास, और इस तरह विकेट गिर गई। वसीम अपू is got out for 11. FB fighters battling a losing battle, fighting a losing battle at the moment, and I am joined by Farooq Riaz. Welcome, Farooq.
Thanks a lot, Rana Shwak. Haris Ali, the new skipper for Federal Bay Area Fighters, he has come out of the center. So it's a super professional performance from Gulshan Gohars, and you can see the required rate is going up and up, and seems like uncatchable for the batting side of Federal Bay Area Fighters, who are 51 for 3 at the moment, just inside the 3 overs. We have plenty of entertainment downstairs. Drum beaters are here. Good number of spectators are here. Oh, that's a beautiful delivery. Batsman got beaten by all means. So 3 overs have been bowled, 51 for 3. And now it is going to be Nadra Mushtaq and Faisal Atar to take over the commentary. बहुत शुक्रिया राना शवाक। इस वक्त 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 51 रन्स 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 132 रन्स दरकार हैं इस वक्त एफबी फाइटर्स को। 3 विकेटें हासिल की हैं बाचा ने 22 रन्स के एवज। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। हारिस ने सिर्फ एक गेंद का सामना किया। सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। एफबी फाइटर को कंप्लीट फाइट करना पड़ेगी और छक्कों की बरसात भी करना पड़ेगी। 51 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 44 की है, जो ऑलमोस्ट 45 की हो गई है। 45.88 तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एफबी फाइटर को एडवांटेज ये हो सकता है कि वो जितने ज़्यादा रन्स बनाएंगे उनके रन रेट पे आगे चल के फ़र्क पड़ सकता है। सो गिव अप की अप्रोच कभी भी क्रिकेट में होनी नहीं चाहिए, ख़ासतौर पे शॉर्टर फॉर्मेट्स में। ज़ोर से घुमाया लेकिन बॉल मिस कर गए। आमतौर पे देखा गया है कि जो स्लो बॉल होती है उस पर मिस टाइम हो रहा है या उसको कनेक्शन उस पर सही तरह हो नहीं पा रही बल्लेबाजों की। लेकिन इस जगह बॉल काफ़ी तेज़ थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इस दफ़ा उबैद। और भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हो गए हैं उबैद। 29 रन स्कोर कर लिए हैं। लेफ्ट हैंडेड उबैद सामना कर रहे थे वसीम का, जो कि लेफ्टी हैं वो भी। ये तोहफा था, फुल टॉस बॉल थी और भरपूर कनेक्ट किया और लॉन्ग ऑन की तरफ 6 रन हासिल किए। जी हाँ, वसीम ओवर द विकेट बॉल कराते हुए अच्छी गेंद वाइड अबल के गेंद दी है इन्होंने। अंपायर का इशारा। इंटेंशन सही थी नादरा, यहाँ स्लो बॉल की इन्होंने क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त बल्लेबाजों ने जोर से ही घुमाना है और छक्के की तरफ ही सारा ध्यान है। सो ये एक ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है बॉलिंग के प्रोस्पेक्ट से कि आप गेंद ज़रा स्लो करें ताकि टाइमिंग जो है उसको ब्रेक करें और बैट फ्लो को भी आप ब्रेक करें ताकि कनेक्ट ना हो पाए। और यही आपको राह फरार मिल रही है इस वक्त। Another wide, काफी क्विकली वाइड दे रहे हैं वसीम। इस पे इनको कंट्रोल करना पड़ेगा वरना तो एफबी फाइटर्स के लिए फायदा होता रहेगा और 2-2 रन्स का इजाफा होगा बिना दौड़े हुए, बिना स्ट्राइक चेंज किए हुए। नादरा बहुत रन्स हैं, इसी वजह से थोड़ा सा अप्रोच जो है वो इजी हुए हुए हैं और फाइट जो है वो कम है, जबकि एफबी फाइटर की फाइट जो है वो भरपूर रहेगी इस जगह। और इस दफ़ा फिर आगे गेंद थी, टाइम नहीं कर पाए, पॉइंट की तरफ गेंद की है, सिंगल लिया और इसके साथ दूसरा रन भी लेने में कामयाब हुए। जी हाँ, 2 रन्स का इजाफा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी लाउजी लग रही है, थोड़ी सी स्लो। जितना क्विक इनको करना चाहिए। गो के हदफ बहुत बड़ा है और बज़ाहिर लगता यह है कि बहुत मुश्किल है।
उसकी वजह यह है कि रिक्वायर्ड रेट 50 से ऊपर जा पहुंचा है और ये सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। ये बात तकरीबन सारे खेलने वाले प्लेयर्स के जहन में है। फुल टॉस गेंद थी, उसको टाइम किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रन्स। सो कुछ इस तरह ही की बैटिंग रिक्वायर्ड है और कम से कम अगर आप टारगेट को अचीव नहीं करते तो उसके करीब ज़रूर पहुंचे ताकि रन रेट पे आपको फ़र्क पड़े। बिल्कुल जी, डगआउट में जावेद कदीर जो कि इनके साथ टीम के साथ हैं, काफ़ी तजब्बुत का शिकार नज़र आ रहे हैं। इस ग्राउंड पे जावेद कदीर के नाम आपने लिया तो ये भी बता दें कि क्लब क्रिकेट में जावेद कदीर ने एक ओवर में 6 छक्के मारे हुए हैं हार्ड बॉल क्रिकेट में। सो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो रिकॉर्ड। और एक और ज़ोरदार शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रन्स। जबकि आज 5 छक्के जो हैं वो लगाए हैं तैमूर मिर्ज़ा ने। इवन देन वो ब्रेक नहीं कर सके रिकॉर्ड। और अनदर 6 उबैद अपनी निस सेंचुरी की तरफ तेजी से गामजन है। चौथे ओवर के अख्ताम पे 77 पे 3। काफ़ी आगे बॉल था, तकरीबन यॉर्क लेंथ पे बॉल था और ये कमाल दाद देना पड़ेगी बल्लेबाज की कि जहां से इन्होंने बॉल को लिफ्ट किया 6 रन्स के लिए। फुल टाइम लिया इन्होंने और मुकम्मल तौर पे बैट पे जो बॉल आया उन्होंने तब हिट लगाई है। उसके साथ ही रिड्यूस तो कर रहे हैं बट इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट। जी हाँ, 2 ओवर का खेल अब बाकी है और 106 रन्स चाहिए जीतने के लिए। तकरीबन 53 की रिक्वायर्ड रेट है। मैथमेटिकली तो ये इस मैच से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। सिर्फ एडवांटेज इनके पास इस मैच में रन रेट को मेंटेन करने का या उसको बेहतर करने का है। सो पहला ही मैच है एफबी फाइटर का। सो पहले ही मैच जब इस तरह का होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा ये वेकअप कॉल भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं हम अगले आने वाले मैचेस के लिए। सिर्फ 1 रन का इजाफा हो पाएगा। चौथे ओवर के अख्ताम पे 77, 3 खिलाड़ी आउट एफबी फाइटर्स। रन रिक्वायर्ड रन रेट फैसल बढ़ता चला जा रहा है 57, यानी कि 57.27। देखना ये कि फिनिश कहाँ करते हैं और कितने रन्स बनाने में कामयाब होते हैं। और अंडर प्रेशर अब ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनको आगे वाले मैचेस में काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट रन रेट जो है 19.02 का है। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी है बॉल। हाँ, और यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है तो श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल भी चल रहा है। यहाँ पर वाइट का इशारा, श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल चल रहा है। वहाँ पर देखना है वहाँ क्या होता है। आज पाकिस्तान सबकत ले जाता है या श्रीलंका ट्रॉफी उठाएगा। 171 का टारगेट दिया है श्रीलंका ने फाइनल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान को भी प्रेशर में रखा है उनकी बैटिंग को। और यहाँ पे प्रेशर में है एफबी फाइटर। एक दफ़ा ऑफ स्टंप के बाद फिर गेंद थी और काफ़ी आगे थी। हाँ, बैट्समैन चाह रहे हैं कि शायद ये वाइड बॉल होती लेकिन वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिले, इसकी वजह से मुझे लगता है कि अंपायर ने ये वाइड बॉल कॉल नहीं की। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। उबैद क्या निस सेंचुरी बना पाएंगे या विकेट हो जाएगी? जी बना लेंगे, लगता यही है। और इस दफ़ा कनेक्ट करने में कामयाब होंगे लेकिन नहीं हुए। गेंद टांग पे लगी और सिंगल लेग बाय का सिंगल ही होगा, इशारा अंपायर की तरफ से। जी हाँ, बैट से लगी है ये बॉल। सो 50 रन से मुकम्मल हो गए। 17 बॉलों पे 50 की है। अच्छी चीज़ें भी हैं एफबी फाइटर के लिए इस मैच में। और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो अंडर प्रेशर खेलना, जो कि बहुत फ़ायदा होगा। ये बॉलिंग ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ज़ोर लगाने की। गेंद आगे कर रहे हैं, थोड़ा स्विंग हुआ है इस वजह से लेग साइड पे गया। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। अनदर वाइट। काफी लाइन लेंथ इनकी बिगड़ी हुई नजर आ रही है उमर की। ज़रूरत नहीं है, हालांकि प्रेशर जो है वो बल्लेबाजों पर, लेकिन ये प्रेशर मेरे ख्याल में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये वाइड बॉल हो रही है। कंट्रोल अपना खो रहे हैं। ये भी वाइड हो जाएगी और मुसलसल वाइडों का सिलसिला जारी। और ये इस दफ़ा वाइड के 4 रन्स
रन्स कंसीड करा रहे हैं। ये मुनासिब बॉल नहीं है इतने इजी मैच में जहाँ पे प्रेशर आप पर नहीं है, और इस किस्म की अगर आप बॉलिंग करेंगे तो यकीनी तौर पर कप्तान और टीम मैनेजमेंट की नज़रों में आप ज़रूर आएंगे कि आप इस पोजीशन पर अगर ऐसी बॉलिंग करते हैं। यानी कि इन्होंने इसी ओवर में थर्ड वाइड दी है। जी हाँ, 4 वाइड्स दी हैं और अब ये 5वीं वाइड हो गई है। सोचें एक ओवर में 6 गेंदें। नादरा देखना है कि ये ओवर अब कितनी बॉलों पे ख़त्म होगा। बॉलें तो 6 ही है, लेकिन मजीद ये पूरे 2-3 कोटा अपना कर देंगे, 2-3 ओवर एक साथ ही कर देंगे। एक और मुझे लगता था ये अंपायर मुझे लगता है थक गए इस दफ़ा। ये भी उम्मीद थी कि वाइड हो जाती, लेकिन इस दफ़ा दी नहीं अंपायर ने। सो बचत हो गई बॉलर की यहाँ पे, और ख़ुद भी मुस्कुरा रहे हैं। ज़ाहिर इनको पता है कि ये क्या हो रहा है, और फील भी ये खुद ही कर रहे होंगे। और इस दफ़ा टांग पे गेंद लग गई, वरना ये भी यकीनी तौर पे वाइड होती। जी हाँ, अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं एफबी फाइटर्स को खेलने की उमर। ये प्रैक्टिस नहीं है नादरा, क्योंकि बल्ले पे गेंद नहीं दे रहे ना, विकेटों में गेंद कर रहे हैं ये। 16 रन्स दे चुके हैं 5 गेंदों पर, बल्कि पूरा ओवर ही मुकम्मल हुआ जाता है। 16 रन्स एक ओवर में, और इस ओवर में ज़्यादातर एक्स्ट्राज ही के सूरत में रन्स बने। 93 पे 3-5 ओवर के अख्ताम पर 90 रन चाहिए आखिरी ओवर में। जी हाँ, एक ओवर में इन्होंने 5 वाइड्स दी हैं, तो मतलब 10 रन तो वैसे ही पक्के पक्के हो गए। सो मैच के अलावा अगर हम करंट रन रेट देखें तो 18.60 का करंट रन रेट है, तो ये भी रन रेट बुरा नहीं है अगर आप इस मैच के टोटल एनालिसिस को निकाल दें या टारगेट को निकाल दें। सो लेकिन यहाँ पे जो आस्किंग रेट है वो तो अब ऑलमोस्ट ये मैच ख़त्म हो गया, लेकिन एडवांटेज इनके अभी क्या ये 100 रन मुकम्मल कर लेंगे, और 100 रन से ऊपर कितने रन्स करने में कामयाब होंगे। 3 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं, आखिरी ओवर का खेल है, और ये भी लास्ट ओवर में स्टार्ट हुआ वाइड से। जी हाँ, मुझे लगता है कि बॉलर्स ने आपस में मैच डाल लिया है कि कौन सबसे ज़्यादा वाइड्स करता है या ओवर कौन जल्दी कंप्लीट करता है। स्टार्ट अच्छा नहीं इस ओवर में भी। अजीज ऑलरेडी हैज गिवन 28 रन्स इन 1 ओवर। एक और वाइड, और तैमूर मेरे ख्याल में सारे ही प्लेयर और अंपायर्स का इस वक्त इम्तिहान है कि कंप्लीट एक्सरसाइज करवाई जा रही है अंपायर को, ताकि उनके शोल्डर्स में जान आए। यहाँ गेम बड़ा स्लो दिख रहा है, हालांकि लास्ट ओवर है, थोड़े सा मूवमेंट्स थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हैपनिंग होनी चाहिए। आपकी बात सुन ली, हैपनिंग शुरू हो गई है, और ये पहला बॉल हुआ है 3 बॉलों के बाद जो लीगल बॉल था। सो 6ठे ओवर का पहला बॉल जो मिस कर गए, स्लो वन था। तैमूर भी पीछे मुस्कुराते हुए साइड चेंज की है। काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। अंपायर का इशारा देखना है कि अंपायर का इशारा एक दफ़ा फिर वाइड, और ये एक तरह से इस मैच में हाईएस्ट रन्स का भी रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रास का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है इस मैच में। मुझे लगता नहीं कि किसी मैच में ये एक्स्ट्रास का रिकॉर्ड टूटेगा। बगैर बल्ले पे गेंद लगे हुए 19.41 रन रेट हो चुका है, और इस दफ़ा स्लो वन थी, मिस कर गए। सो बैट्समैन भी जो है वो थक गए हैं कि ये कब कहाँ बॉल फेंक देंगे, और अचानक ये सीधी बॉल फेंक देते हैं। एक तरह से ये भी एक एडवांटेज हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा रन्स आपके पास हो, डिफेंड करने जा रहे हो, तो आप बल्ले पे गेंद लगने ही ना दें। ये भी मुझे लगता है कि वाइड हो जाएगी, और यकीनी तौर पे वाइड। अंपायर का इशारा। जी हाँ, इस वक्त अंपायर जो हैं वो मुश्किल में हैं, और तकरीबन पीटी करवाते हुए बॉलर्स अंपायर की। क्या करूं? चले 100 अप करा दिए वाइट्स ने। ये होता है नादरा, जब आप किसी भी मैच को आप इजी ले लेते हैं, तो फिर उसका वो जो शाम है, उसकी जो फाइटिंग है,
वो मिस होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, इस ओवर में 5 वाइड्स हो चुकी हैं 2 ओवर्स में। ये तो और अब बैट पे बॉल आया है तो उन्होंने 6 लगाया और लॉन्ग ऑफ पे बहुत ही जबरदस्त छक्का उबैद का 56। जी हाँ, 109 रन्स टोटल जिसमें 35 एक्स्ट्रा है यानी कि 35 एक्स्ट्रास। स्लो वन था, मिड विकेट की तरफ खेले हैं, हवा में गेंद है और फिल्टर नीचे है, कैच लेने में कामयाब नहीं हो पाए और चांस मिस किया। सो आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है मैच में और इजी अप्रोच की वजह से आप एक्स्ट्रास कंसीड इतने करा चुके हैं कि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड की तरफ जा चुके हैं और बल्लेबाज भी तकरीबन लगता है कि थक गए हैं कि कब ये बॉल सीधी करेंगे और अब मैं शॉट खेलूं। सो उनका भी बड़ा इम्तिहान है। अगर आप 3-4 वाइटें करके एक विकेट्स में बॉल करके आप विकेट ले लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको एडवांटेज है इसका। और टांग पे गेंद की, उसको स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, फाइन लेग पे गेंद गई बल्कि 4 रन के लिए पुल किया था। स्लो वन थी बॉल। जी हाँ, बिल्कुल हारिस ने अपना खाता अब खोला है काफ़ी देर के बाद 6 गेंदों का सामना किया क्योंकि स्ट्राइक जो थी वो मुस्तकिल उबैद के पास रही तो उबैद ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। 114 पे 3 आखिरी बॉल का खेल, राउंड द विकेट बॉल करेंगे, टांग पे गेंद किया और उसको कनेक्ट किया फाइन लेग की तरफ, यकीनी तौर पे 4 रन मिलेंगे। सो 118 पे एफबी फाइटर 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर बुक हो गई और 65 रन से ये मैच गुलशन गौहर ने जीत लिया है। 64 रन से गुलशन गौहर्स ने अपने नाम किया है ये मैच। 118 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर एफबी फाइटर्स उबैद 57, 21 गेंदों पर हारिस ने 9 रन बनाए हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए। आतिफ ने 25 रन दिए हैं और यूं 64 रन से गुलशन गौहर्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया। उबैद टॉप स्कोरर रहे, नॉट आउट इनिंग खेली है 57 रन की, जबकि सेकंड नंबर पर वसीम जिन्होंने 11 रन डबल फिगर में आए हैं। ये 2 ही प्लेयर्स डबल फिगर में नजर आ रहे हैं। बॉलिंग साइड देखते हैं, बाचा ने 3 विकेट्स हासिल की हैं 22 रन देके। बाकी अजीज, वसीम, उमर, आतिफ कोई भी विकेट लेने में नाकाम रहे हैं। एक्स्ट्रास 35 हुए हैं, 118 पर 3 खिलाड़ी आउट। गुलशन गौहर्स पहली इनिंग्स में 142 पर 2, दूसरी इनिंग में 121 पर 3, जबकि एफबी फाइटर्स ने पहली इनिंग में 81 पर 6 और दूसरी इनिंग में 118 पर 3 विकेटों का नुकसान किया है। तो बहादुर ने पहली इनिंग में 56 रन किए, जबकि सेकंड इनिंग में तैमूर मिर्जा कमाल की इनिंग खेली 70 रन की और यहाँ पे गुलशन गौहर ये मैच जीत चुकी है। जी हाँ, गुलशन गौहर्स। और अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको लिए चलेंगे मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की जानिब। Get ready for Badar Expo KTPL Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape-Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape-Ball Premier League. Only on Jio Super.
Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre.
Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PAIME, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PAIME, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2,
Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Center. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 5th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, जियो सुपर, BTV और मैक टीवी अमेरिका के नाजरीन और आप जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं सबको असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से खुश आमदीद कहता है। ओवरऑल ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले जारी हैं, लेकिन आज का मैच तकरीबन यकतरफा साबित हुआ, जहाँ पर गुलशन गोहर्स की टीम ने FB फाइटर्स को 64 रन्स के बड़े मार्जिन से आउट क्लास करते हुए इस इवेंट में अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड गुलशन गोहर्स। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं मिस्टर ओवेस लोधी, GM सेल्स एंड सिक्योरिटी बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। उनके साथ प्राउड ऑनर मोहम्मद यूनुस शाहू ऑफ गुलशन गोहर्स। बहुत मुबारक हो आपको यूनुस शाहू साहब, दूसरा मुसलसल मैच आपने जीता। और उनके साथ
दानिश खान डी के ऑनर ऑफ DHA दबंग, जिनका आपसे थोड़ी देर के बाद बड़ा दबंग मैच भी शुरू होने जा रहा है। आज के इस मैच में कई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। उबैद लेफ्टी सिंगल हैंडेडली FB फाइटर्स की बैटिंग को लेके चलते रहे, 57 रन 21 गेंदों पर स्कोर किए, नॉट आउट रहे, 8 छक्के भी लगाए लेकिन बिल्कुल नाकाफ़ी थे। दूसरी जानिब बहादुर अली ने फ्रंट से लीड करते हुए 56 रन स्कोर किए 15 गेंदों पर। सरमद हमीद ने 41 रन स्कोर किए 14 बॉल पर। लेकिन वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि शायद दुनिया भर में टेप बॉल क्रिकेट में अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की शनाख्त रखते हैं, वो आए तो गुलशन गौहर्स की कारकर्दगी में एकदम से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निखार आया। कोई और नहीं, आज भी ज़बरदस्त बैटिंग, 70 ऑन 21 बॉल्स विथ 14 सिक्सेस एंड 2 4, क्योंकि 26 रन उन्होंने दूसरी इनिंग में भी फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर किए। द वन एंड ओनली तैमूर मिर्जा। मैं चाहूंगा दानिश खान साहब, आप तैमूर मिर्जा को ये ट्रॉफी दें। आप DHA दबंग के गेम, यूनुस साहब आप भी साथ आइएगा, उवैस भाई आप भी। वेरी वेल प्लेड तैमूर मिर्जा को असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम और बदर एक्सपो KTPL बहुत रास आ रही है। तैमूर भाई इधर आइएगा, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। ओवरऑल जिस फॉर्म में आप आए, आपने जब पहले मैच में हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने ये बात कही कि थोड़ा सा मैं नर्वस था कि मैं पहला मैच खेल रहा हूँ इस इवेंट का, लेकिन लग रहा है सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि थ्रू आउट का टूर्नामेंट जो है अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। बाकी सभी लड़के अच्छा खेल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अभी तो कोई नर्वस नहीं हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छक्के लग रहे हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट आपका थोड़ा सा कमज़ोर लगा बैटिंग के मुकाबले में। कल सुने ज़हीर साहब भी आ रहे हैं और भी कमक पहुंच रही है यहाँ पे गुलशन गौहर्स की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो हमारे 2 अटैकर हैं वो अभी हमने नहीं खिलाए। ज़हीर भाई आ रहे हैं, साथ माज है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैच में आपको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। नहीं सरप्राइज़ क्या, आपने वैसे ही इतना कुछ दे दिया आज, जिस तरीके की आपकी टीम मारधाड़ कर रही थी, एंजॉय कर रहे बदर एक्सपो KTPL। थैंक यू, बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे PSL खेल रहे हैं। PSL खेल रहे हैं, बिल्कुल। ये हम कोशिश यही कि टेप बॉल क्रिकेट के आपको एक डिफरेंट ब्रांड दे, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की यही कोशिश दिखाई देती है। तैमूर मिर्जा ज़बरदस्त आपकी बैटिंग, इन सब लोगों ने एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू वेरी मच उवैस लोधी साहब, मोहम्मद यूनुस शाहू साहब एंड दानिश भाई, विश यू अ वेरी गुड लक। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला आपसे थोड़ी देर के बाद तैयार है। डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे DHA दबंग। तो फिर इस मैच के टॉस के लिए के आसिफ तैयार हैं पिच पर। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Good evening, ladies and gentlemen, from the city of lights and joys. This is the last match of tonight, and I'm ready here down for the toss. I'm down here with 2 captains, Yasir Mushtaq, captain of DHA Dabanggs, Asad Shah, captain of Clifton Ghazis, and the match referee, former international cricketer Nomanullah. Asad Shah will flick the coin. Head is the call. Tail. Tails. असद, आप टॉस जीत गए हैं, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम फर्स्ट बॉलिंग करेंगे। असद, पहले मैच में भी आपकी ज़बरदस्त इनिंग्स देखने को मिली और आप मैच जीत गए। इस मैच में कोई चेंजिंग्स किए हैं? जी बिल्कुल, उसामा अली, जल्लाद खान तारी ने टीम ज्वाइन कर ली, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरीके से फर्स्ट मैच खेलें उसी को कंटिन्यू रखें। और क्या प्लान करके आए हैं कि 6 ओवर्स में कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे? कोशिश करेंगे 17 के अंदर अंदर इंशाल्लाह इनको रोकें। कॉन्फिडेंट हैं जीत के लिए? इंशाल्लाह। गुड लक। थैंक यू। यासिर, आपकी पहली गेम है इस टूर्नामेंट के सेकंड एडिशन की, सो कैसा फील कर रहे हैं? जी लड़के सारे माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सब लड़के जेल हुए हैं, और हमारा भी प्लान यही था कि टॉस जीत के पहले इंशाल्लाह बैटिंग ही प्रेफर करते हैं हम लोग। होपफुली अच्छा होगा इंशाल्लाह हमारे लिए। DHA दबंग्स ने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर यूनुस खान को मेंटोर मुकर्रर किया है, उससे आपकी टीम को कितना फ़ायदा होगा? उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ऑब्वियसली बहुत ऑनर की बात होती है। उनके एक्सपीरियंस से लोग गेन करते हैं। हमारे लड़कों के पास, सबके पास अच्छा मौका है, उनके सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं, और बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए हैं लड़के उनकी मोटिवेशनल स्पीच सुन के। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ग्राउंड में भी परफॉर्म उसी तरह से करें इंशाल्लाह। और क्या प्लान होगा, 6 ओवर्स में कितने रन करेंगे? मैक्सिमम पे जाएंगे इंशाल्लाह, मगर इन बिटवीन 90 to 100 रन मेरे हिसाब से अच्छे रन होंगे इंशाल्लाह। Good luck and keep enjoying. Thank you. So news from the center that the captain of Clifton Ghazis,
Asad Shah has won the toss and he has opted to bowl first. This is the time for the short break. Stay tuned, Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Center. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Geo Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Welcome back. Good evening once again. We are ready to have the third match of the night or of the evening. These are the two umpires going to officiate this third and final match of the night. And Clifton Ghazi won the toss and decided to field first straight away. And DHA Dabanggs are playing their first match. They got some big names. On top of that,
or top of all, Yunus Khan, the man who scored most number of test runs for Pakistan and scored most number of centuries for Pakistan. Welcome, Farooq. Welcome, Rana Ashwaq. Welcome, everybody. From Asghar Ali Shah Stadium, North Nadabad, Karachi. The Super Sunday we are enjoying here and in Karachi, and we had a triple header, and this is the last contest of the night. And Clifton Ghazi won the toss. They opted to bowl first. As Clifton Ghazi is led by the famous tape ball star Asad Shah, who plays tape ball cricket across Pakistan and also outside Pakistan. He's a prolific cricketer. He has done a number of services for his side with the bat. So right now he's leading, and he will position his fielders now in different parks in this. And this is a lineup we have: DHA Dabanggs, led by Yasir Mushtaq, Dishan Babar, Ahmed Beg, Javed Siddiqui, Qadir Kashmiri, Arsalan, Mubashir, Fayaz Khan, Mohammad Hasnain, Umar Shahzad, and Zohaib Jamil. And Clifton Ghazi, we have Shahnawaz, Asad Shah, the skipper, Arbaz Khan, Sera, Muzammil, Usama, Kami, Saqib Khan, Farman Tahiri, and Jallat Khan. So very familiar names in both sides. Yes, they've got familiar faces. And Yunus Khan is the mentor of DHA Dabanggs. We have watched a couple of good games so far, and we are hoping that it's going to be an enthralling game of tape ball cricket. The final of Asia Cup is being played between Sri Lanka and Pakistan in Dubai. Pakistan chasing 171 and in some sort of a trouble at the moment. These are the two openers. We'll start the innings for DHA Dabanggs. It's a beautiful ground, as good as anyone. And these are the tape ball cricketers who play across all the cities. They play in Punjab, they play in Sindh, Balochistan, KP, everywhere, and we've got some very popular figures in the likes of Taimoor, Mirza, Khurram Chakwal, Fahad Miachannu, and few others. And there are youngsters who can make their name big, as Ahmed Kulfi bowled beautifully yesterday night and became man of the match in that particular match. Yasir Mushtaq, the captain of DHA Dabanggs, is at the middle. Muzammil Kamoki can be seen as well in the field. He's a very good player. Last match turned out to be one-sided one. Farooq, what are your expectations in this one? Yes, could be a thriller. The last match was pretty one-sided, just one-way traffic throughout the 4 innings we witnessed, and Gulshan Gohars had dominated in all departments comprehensively. So it's a fresh game, expectations are high, and we want a thriller here. Saram will start the proceedings. Sehram getting the things underway from the far end. Wicketkeeper did not able to gather that one properly. We will have to wait for the umpire's signal. And wide straight away, off target the bowler. 3 runs given away. Offline, left arm, Saram lost his radar. It's waved on the leg side, so wide given, couple of runs are counted as a result of a wide. That's not the start they would have loved or they would have wanted. Bowled a very wide delivery down the leg side. Even wicketkeeper had some trouble to gather it. Now the captain is on strike. Bottom edge is taken from his bat and wicketkeeper does the fielding. That was a good delivery. Wide off at the off stump, and didn't make any connection. Drone camera came very close to us, and this is our commentary box on your screen.
few kitchen sinks at that one. Didn't make any contacts. Wanted to hit that one out of the ground. Batsmen would look to score quickly, particularly in first 2 overs. But let's see whether they're able to score some quick runs or not. Edged, oh, dropped. He did get his hands into that one. It came into his hands and popped out. And by the time it has been stopped by the third man, batsman got a couple. Good effort outside the off stump, and he tried his best to get there, but nevertheless, a couple of runs taken. So we have seen a number of drop catches, especially high catches are found extremely difficult in these conditions. And sometimes we saw the example of lack of communication between the fielders. Sairam has done a good job so far. He could have taken the wicket had that catch been taken. And I think at this stage or at this standard, that catch should have been held. Wicketkeeper didn't go with 2 hands, I reckon. He did put his 1 hand into that one. It came and went out straight away. Not only the catch went down, but 2 runs were given as well. Edged again. Gully stopped it all right, and single is taken by Mushtaq. So Sairam is bowling with good line, good length, although he conceded 3 wides on the first ball. But afterwards, he got a good comeback. Yes, a bowler can finish the over very quickly. If it doesn't bowl a wide, obviously it takes extra time, it takes a lot of energy. It frustrates the batsman as well, although his side gets the run. So, nevertheless, he's been quite tidy as far as runs on the board is concerned. Yes, frustration can set in. Another good delivery. That's the way to bowl. Very, very fine over has been completed by Sairam. 6 for no loss. Good finish by Sairam. It's not very quick, but certainly was quite accurate. The low full toss is what the target in the block hole, but it turned out to be a good delivery, a dot ball. So 6 for none. DHA Dabanggs, who has been asked to bat first when Asad Shah of Clifton Ghazi won the toss. Drone cam has done a marvelous job, Rana. It has captured different spots. Yes, we can see our camera crews standing on different places. Some places are elevated ones, but they are working really hard and working with great zeal. When we reached the ground at 2:30, they were already in, and they had to do some work to get the action in, and I think they're doing a tremendous job to produce this tournament for you. It is being watched on Geo Super, and also it can be watched in America through Mac TV. Second over begins here. It should be runs, wides, couple more. Way on the leg side, Saqib sharing a new ball. It was way on the leg side. So bowlers tend to bowl wide when they start the new over, and that has been a tradition in this kind of contest. And gradually they find the radar right. Only 2 men can be placed outside the circle as far as the field restriction is concerned. Yasir once again. This is going to be out or not. Fielder is under the ball. It should be taken, and yes, it is taken. So both bowlers started off with a wide, but then made a very good comeback. Saqib has picked up a wicket. Yasir Mushtaq never looked comfortable and gets out for 3 after facing 5 deliveries. 8 for 1 in the second over. The skipper goes. He went after the bowler, went for the big shot. Certainly no real timing, just got the height. It went way up, and fielder had a chance, a tough one chance, and 4 men in the end
were converging, but I think the communication was absolutely crystal clear. Good catch taken. Tahiri is a catcher, and Yasir Mushtaq goes for 3. Eight for 1, and Yasir Mushtaq is on his way back to the pavilion. Zebi Bakr has arrived at the pitch. Very good start for the Clifton Ghazis. Won the toss and put the opposition in, and straight away not only kept them quiet but also picked up a wicket. They are doing a terrific job, but I think DHA Dabanggs can make a comeback. Outside the off stump, played away, kept it away from the fielder at backward point, who ran after the ball, had a long chase, and by the time batsman picked up a couple of runs. It was way outside the off stump. He had to go after the ball, and luckily his ball didn't ran away to the boundary. And the fielder did a reasonably good job there. He kept chasing the ball, and sometimes we see any awkward turn or awkward bounce can take the ball to the boundary, and fielders find themselves struggling against these kind of fielding opportunities. This one is driven away. Fielder tried his level best to get his hands into that one, but didn't succeed, and ball travelled away to the boundary for 4. A much needed one, boundary from the side of DHA. Lovely shot, lovely cricketing shot. The extra cover drive and beat the man. He played it with some command, and the timing effort was there. Good effort though, but the placement was absolutely spot on. Boundary for Mubashir. He threw his bat at that one, and it was outside the off stump, then moved further away. Wide called by the umpire. Zohaib Butt is the non-striking end, and look at the families, not only enjoying the cricket but also they are dining something. they look very hungry, eating something with passion. This is in the air, but will clear the man at covers, and it bounced away to the deep extra covers boundary for 4. Very good shot. 2 boundaries in the over. This time he got the elevation, and the fielder had a chance to chase the ball, but ball bounced away for the boundary. He went for the big shot, and there was no protection out there, and he comfortably cleared the infield, and in the end ball got to the boundary here. The good positive start here, and his intention is pretty clear to take on the bowlers, and as a result of that boundary, the mid-off has been pushed back, and deep wicket has come inside the circle. Mubashir again on strike. And this time he caught that away onto the onside, and that has gone for 4 as well. 3 boundaries have been struck in this over. Mubashir now shaping well, looking good. That was target on the off and middle stumps, and he got that one through the onside. Beautiful batting. There was a man behind deep mid-wicket boundary. He was asked to come in, and then he got an advantage and he cleared that man. And once again, that man is going to the boundary, and long off is coming inside the circle. So significant changes being made in the field, but he's looking good at the moment, Mubashir, and that is a good ball. They are going through for a quick single, bit of fumble, which allowed that runs to be taken easily. 25 for 1, 2 overs been bowled. 3 boundaries were struck in the second over. Normally we see lots of sixes, 3 to 4 sixes, not many boundaries, but there was fielding restriction. Only 2 men were allowed to field outside the circle, and the batsman Mubashir got an advantage. He smashed the boundary through covers. He hit away to the onside, and certainly made most of the field restrictions here. So now they can
they can have a breather. As a Shah and company, they can place the boundary riders in different parts of the ground. It's not a bad start, 25 for 1 of 2, but considering the other matches, this current run rate is not the healthy one. They need to push up this up to 20-25 runs per over. I like medium sort of a score. If you ask to chase 180, pretty difficult, and if you ask to chase 60-70, then it's pretty easy one. I think 90-100 target can produce a very competitive and cliffhanger sort of a matches. Yes, obviously, reasonable scores tend to produce cliffhangers, and they keep the interest of the audience as well. In the previous game, we saw the one side dominated, the other side just couldn't come close to their opponents, and it was one-way traffic as Gulshan Gohar dominated. They were never in the game. So, and this is where the audiences can get bored. But here, both teams are trying their level best. But the fielding side, I think, got the better of so far. This one is flicked away in the air, and also it has beaten the man at deep mid-wicket boundary, and it went between square leg and mid-wicket for 4. Nicely played, flicked away nicely. There was a man down there. He had a chance, but he couldn't capitalize it. He ran away to his right, missed it altogether, and boundary to start. Look at this, the left arm quickie. It was pretty full. It was nice wrist work. A number of times we have seen good wrist shot there. The batsman, the fielder wasn't far away, but I think the timing was exquisite, and that beat the man. And this time he has lifted it many a miles over long on for a 6. That's a good hit. They need a big over. The DHA Dabanggs, they need massive over like that. Boundary followed by a maximum. The low full toss. Saram was pretty decent in his first over. It was low full toss around the off stump. That's a very good hit. That was missing in the first 2 overs. 6s were not coming. But Zohair Butt has decided to go after the bowling. He's on 10 after having faced only 2 balls. Short rising ball must be a wide. Yes, it is. Now a bowler can get frustrated because batsman throwing his bat, and he has to find a way to bowl some dots balls or to get him out. Someone has to take charge. The dugout of DHA Dabanggs. Obviously, they are expecting their colleagues to step up and smash the shots out of the park. One leg slip, one deep slip. Big shot of a catch it, and on the first bounce, there was a protection out there. The huge shot of catch it, and I think the fielder wasn't ready. He wasn't excited enough to go after the catch, and he was more relying to save a boundary. I think he was wandering somewhere else, and at once ball was in front of him. But thank God he stopped it all right. Otherwise, boundary would have been conceded. This time, he doesn't need to run for that, as it has gone all the way at the mid-wicket boundary for a massive 6. Good hit, right out of the mid of the bat. Good batting. Juicy delivery, and what a good shot that is. A good sound of the bat. Nice loopy, full toss. And look at that, it traveled miles. A number of shots we have seen like that. And the batsmen wait to have receive such kind of deliveries. Trap ball cricket on its full colours. Again, fielder is there. Can he get there? Yes, I think he got there and took it beautifully well. He was running side on, and never an easy catch, but fielder did well. What a good catch.
Superb catch in the deep, and we have seen a number of drop catches, but wonderfully held on that occasion. Mubashir tried to clear the boundary once again there. I must say it was a valiant effort. The fielder came across to his right, kept running in the end, and look at that effort. Looks a good hit, but certainly not long enough, and very good catch indeed. No, he made no mistake whatsoever. Mubashir lefty goes for 22, caught by Saqib. It's 45 for 2. Time for the change in voices. K. Asif and Nadra Mushtaq will pick up the commentary. शुक्रिया फरुख रियाज और राना इशफाक। और अरसलान जमशेद DHA दबंग्स के नए आने वाले बैटर। इस वक्त 3 ओवर्स के अख्ताम पर 15 रन की औसत से अब तक बैटिंग की है जेबी बट, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। जुहेब जेबी बट ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, 3 गेंदों पर 11 रन बनाए हैं। और शहराम मेरे साथ इस वक्त कॉम बॉक्स में मौजूद हैं। नादरा, बहुत शुक्रिया के आसिफ। जल्लाद इस वक्त बॉलिंग कराने के लिए आएंगे, जिनका सामना करेंगे जोहेब जेबी बट। जल्लाद काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराने में इनाम रखते हैं। अब देखना यह है कि आया वह अपने फर्स्ट ओवर में कोई विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। DHA दबंग्स 3 ओवर्स में 45 रन स्कोर कर चुके हैं। जल्लाद खान का ताल्लुक लिया से है। जल्लाद खान लिया एक्सप्रेस का नाम दिया था और अच्छा आगाज किया है। देखना होगा अंपायर का डिसीजन, और बैटर मुस्कुरा रहे हैं। जल्लाद खान को लिया एक्सप्रेस का नाम दिया था हमारे साथी कमेंटेटर अकील समर ने। हाँ, लिया मुल्तान से काफ़ी करीब तरीन इलाका है, छोटा इलाका है जहाँ पर एक बड़ा नाम आया है जल्लाद का। डाउन द लेग साइड, और इस दफा इसको खेल दिया है फाइन लेग के ऊपर से। शानदार छक्का। ये वो लेंथ है जो कि बैटर की फेवरेट लेंथ होती है, कि आप ज़रा सा लाइन से चूके और आपको पनिशमेंट मिल गई। सो जल्लाद खान का इस्तकबाल ज़बरदस्त तरीके से किया अरसलान ने। भरपूर छक्का DHA दबंग की जानिब से। और एक दफ़ा फिर चूक गए, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर करना चाहते थे, लाइन मिस कर गए जल्लाद खान। अभी तक अपना रिदम जो है वो हासिल नहीं कर पाए। और इस दफा ये कैच ड्रॉप कर दिया। वहां पर लेग स्लिप भी और मुजम्मिल कामों की स्लिप में नजर आ रहे थे, और विकेट कीपर भी। और अब तीनों ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए, और मेरा ख्याल है तीनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं कि ये आपका कैच था, आपका कैच था। एग्जैक्टली, बिल्कुल ओवरलैपिंग कर दी इन्होंने फील्डर्स ने भागने में। या तो कॉल दे दें कि मैं कैच पकड़ने जा रहा हूं, तो यू जस्ट स्टे अवे। ये एक आसान कैच था और ये कैच लेना चाहिए था। और ये कॉम बॉक्स में मुनाजिम मेरे साथ है नादरा मुश्ताक। थैंक यू। और इस वक्त भरपूर शॉट लगाया है, 100 कवर्स के ऊपर से खेल गए हैं और
छक्का DHA दबंग्स का। जेबी बट वेरी कॉन्फिडेंट लुकिंग। ये DHA दबंग्स के ऑनर हैं और ये देखिए जल्लाद खान की पिटाई हो रही है इस वक्त और लाइन और लेंथ पर अभी तक उन्होंने कोई काबू नहीं रखा। इस दफ़ा इसको ओवर द मिड विकेट खेले, शानदार छक्का। बहुत अच्छी गेंद, इस दफ़ा अच्छा कम बैक किया है जल्लाद खान ने। और जल्लाद खान जिनको लैया एक्सप्रेस कहा जाता है, कराची टेबल प्रीमियर लीग के पहले एडिशन में नादरा इनका ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी और काफ़ी नाम कमाया था। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त 5 गेंदों पर 15 रन दे चुके हैं और इस तरह की जो डॉट बॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। DHA दबंग्स की सपोर्टर्स जो हैं इस वक्त, बच्चे बड़े बूढ़े सभी DHA दबंग्स को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट कराची टेबल प्रीमियर लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी और इसके साथ ही 4 ओवर्स के अख्ताम हुआ है। DHA दबंग्स 60 पर 2। इस वक्त करंट रन रेट 15.00 की औसत से जारी है। असगर शाह स्टेडियम का एक ड्रोन शॉट जियो सुपर की स्क्रीन पर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, जिस पे आप KTPL सीजन 2 के मैचेस को बराह रास्त देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं और डेफिनेटली अपनी अपनी टीम्स को भी सपोर्ट कर रहे होंगे। मुकाबला जारी है क्लिफ्टन गाजीज वर्सेस DHA दबंग्स। फरमान बॉलिंग के लिए आए हैं फार एंड से और फरमान की पहली गेंद ही विकेट कीपर से भी पकड़ी नहीं गई और स्लिप में जो फील्डर खड़े थे उन्होंने विकेट कीपर को फॉलो किया और वो भी इसको दबोच नहीं पाए। जी हाँ, एम्पायर की जानिब से नो बॉल एंड फ्री हिट का इशारा। लेट्स सी कि फ्री हिट पे क्या ये हिट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DHA दबंग्स के सपोर्टर्स जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए डॉक्टर इमरान अली शाह पवेलियन में। और फ्री हिट और इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से एक बुलंदो बाला जबरदस्त छक्का। और जब से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है मैंने पहली दफा देखा है कि फ्री हिट के ऊपर इतना जानदार छक्का लगाया हो। और जेबी बट का ताल्लुक गुजरांवाला से, पहलवानों का शहर जहां के खाबे न सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तेईस रन बना लिए हैं जेबी बट ने, 7 गेंदों का सामना किया है। ये लेंथ कुछ बेहतर थी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। जी हाँ, और ये एक अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप टारगेट कर रहे हैं। सो अब तक 9 रन्स बन चुके हैं इस ओवर में फरमान के और अभी 4 गेंदें बाकी हैं। एक दफ़ा फिर बहुत अच्छी गेंद। ये वो लाइन और लेंथ है जिसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, बैटर को डिस्टर्ब किया जाता है। ये पिंडी ताहरी इनको कहा जाता है, ताहिर इनका नाम है। ये भी स्क्रीन पर थे जिन्होंने फील्ड किया। जिस तरह की फरमान बॉलिंग करवा रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अटैकिंग लग रही है। लेकिन अगर हम बॉलिंग के स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं तो फरमान ने 10 रन दे दिए हैं 3 गेंदों पर, जो कि समहाउ मुश्किल है, मतलब बहुत ज़्यादा दे दिए आपने। तो डॉट बॉल्स खिलाएं
और इस दफा इसको हवा में खेले हैं, गेंद खासी देर फजा में रही और एक वेल जज कैच इन द एंड। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। Absolutely remarkable achievement by Clifton Ghazi's। और यूं खात्मा हुआ अरसलान की इनिंग्स का। ये देखिए, इसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन एरियल डिस्टेंस तो था, लेकिन बाउंड्री रोप को क्रॉस नहीं कर पाए। तो इस तरह अरसलान अच्छी बट आउट होकर वापस डग आउट में। 5 गेंदों का सामना किया अरसलान ने, 8 रन स्कोर किए। कोशिश यही इनकी होगी कि मैं मज़ीद हिट्स लगाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पवेलियन की जानिब लौटना पड़ा। जेबी बट उनका साथ देंगे उमर भाई। जी हाँ, उमर भाई इस वक्त बैटिंग के लिए आ चुके हैं और हम बार बार इस चीज़ का तस्करा करते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट में ये जो निक नेम है प्लेयर्स इसी से जाने जाते हैं। इनका नाम उमर शहजाद है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी शर्ट पर उमर भाई। आप देख सकते हैं इस वक्त डॉक्टर इमरान अली शाह पवेलियन में नसीम राजपूत, फैसल अतर और साथ में तैमूर मिर्जा भी नजर आ रहे हैं। रेफरी भी हैं, फैमिलीज भी बैठी हैं, बड़ा एंजॉय कर रही हैं इस मैच को। और इस दफा इसको खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब, वहाँ पर फीडर मौजूद है। 1 रन बना। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं कि इस बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग एक्चुअली एक फैमिली फेस्टिवल बन चुका है, और जिस तरह से फैमिलीज इस टेप बॉल क्रिकेट को एंजॉय करती हैं, इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ्यूचर में हमें मज़ीद एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। उमर भाई सामना करने के लिए तैयार हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, इस दफा तेज यॉर्कर करना चाहते थे। ओवर द विकेट गेंद करा रहे हैं सो उमर शहजाद को फरमान। 1 विकेट ले चुके हैं 13 रन देकर। क्या कहते हैं कि आसिफ अगर ये राउंड द विकेट करवाएं, क्या ये विकेट ले सकते हैं फिर? देखिए, जब बॉलर जब भी डिस्टर्ब हों, लाइन और लेंथ पर काबू नहीं कर रहे हों, तो आप ये कैप्टन का काम है कि वो ये इंस्ट्रक्शंस दे, सजेशंस दे बॉलर को, उसको प्रेशर से निकाले। बिल्कुल आपकी जो सजेशन है बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन बैटर कोई भी सजेशन मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छक्के लगाने के ऊपर तुले हुए हैं। सो एक शानदार छक्का उमर भाई का, और इस तरह 5 ओवर्स के अख्ताम पर 79 for 3। ये देखिए, इसको जोरदार तरीके से खेले, एक फ्लैट छक्का। जी हाँ, और उन्होंने वहीं पर शॉट लगाया जहां पर DHA दबंग्स के सपोर्टर्स डग आउट में मौजूद थे। और यूं जोहेब 10 गेंदों का सामना करते हुए 25 रन बना पाए हैं, जबकि उमर शहजाद 1 ही गेंद पे उन्होंने छक्का लगाया है, 6 रन। 5वें ओवर के अख्ताम पर 79 for 3 DHA दबंग्स। और इस एरियल व्यू की आप जितनी भी तारीफ करें कम है। कराची रोशनियों का शहर है। इस वक्त असगर अली शाह स्टेडियम रोशनियों में नहाया हुआ, डूबा हुआ। डाउन द लेग साइड, साकिब। Another wide। अंपायर का इशारा। खातिर खा रोल प्ले कर रहा है वाइड। 82 रन हो चुके हैं। 3 खिलाड़ी को नुकसान पे DHA दबंग्स के लिए। लीड बहुत अच्छी देनी होगी ताकि क्लिफ्टन गाजी जो कि कल बहुत ज़्यादा फुल स्विंग में थे, आज थोड़ा सा उनको कंट्रोल किया जा सके DHA दबंग की जानिब से। साकिब, और इस दफा इसको खेल दिया है फाइनल की जानिब और एक शानदार कैच लिया है। स्क्वायर लेग पर इनफेक्ट खड़े हुए थे फील्डर और कोई गलती नहीं की। वेल जज कैच। इस तरह उमर भाई
आउट होने के बाद डगआउट में वापस जाते हुए। जी हाँ, साकिब ने आते ही दूसरे ओवर में अपने दूसरा ओवर कराने के साथ ही उन्होंने दूसरी विकेट ले ली है। 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की साकिब ने। अच्छी गेंद करवाई है जिसको फाइन लेग पे कैच किया फील्डर ने, और यूं डिपार्चर हुआ उमर शहजाद का। नए आने वाले बल्लेबाज अहमद बेग सामना करेंगे साकिब का। और बॉल कर दिया यहां पर एक क्विक डिलीवरी, और यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी, डिपिंग यॉर्कर, और इसको अक्रॉस द लाइन खेले। इस तरह ये आउट होने के बाद क्लीन बोल्ड किया इस दफा। बहुत ही शानदार गेंद थी ये। जी हाँ, जेबी जोहेब इस वक्त वापस अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद वापस अपने पवेलियन में जाते हुए उनकी इनिंग का इख्तिताम 25 रन्स पर, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल हैं। बेहतरीन बॉलिंग की पहली गेंद राइट ऑन द मनी। फयाज नए आने वाले बैटर हैं और इस वक्त वार्म अप कर रहे हैं। सुर्ख रंग के इन जिब तन किए हुए, और इस दफा आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी, और इस तरह फयाज देखते हैं कि इस किश्ती को भंवर से निकाल पाएंगे या नहीं। बाकी 4 गेंदों का खेल बाकी है। ये मुस्कुराते चेहरे इस क्रिकेट को एंजॉय करते हुए, फैमिलीज यहां पर इस क्रिकेट को एंजॉय कर रही हैं। साकिब अब तक बेहतरीन बॉलिंग की है, और इस दफा इसको खेले हैं लॉन्ग ऑफ की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद हैं। 3 विकेट्स हासिल किए हैं, लेकिन कॉस्टली रहे हैं। A little bit costly, not very much, because उन्होंने सिर्फ 25 रन दे के 3 खिलाड़ियों का आउट किया है। आई गेस काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है साकिब ने क्लिफ्टन गाजीज के लिए। आखिरी ओवर चल रहा है DHA दबंग को। अब देखना यह है कि कितनी लीड देते हैं और कितने रन स्कोर करते हैं अगली 3 बॉलों में। और इस दफा इसको जानदार तरीके से खेले हैं, और गेंद यहां हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर गिरी। एक बुलंदो वाला छक्का, इस दफा कोई रियायत नहीं दी बॉलर को। जहां पर साकिब की हम बॉलिंग की तारीफ कर रहे हैं, वहां पर एक आध छक्का लगना भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर जाता है, बहुत मैटर करता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर बहुत लॉन्ग ट्रैवल किया गेंद ने और जा टकराई है कमेंट्री बॉक्स से डाउन द लेग साइड, और दूसरा रन लेना चाहते हैं, और ये सुस्ती अब चुस्त रहना पड़ेगा फील्डर्स को। और अब आखिरी गेंद बाकी है। अहमद सामना कर रहे हैं। साकिब ने अब 33 रन दिए हैं और 3 विकेट्स हासिल की हैं इस ओवर में। 2 विकेट्स, 2 वाइड के एक्स्ट्रा, 5 वाइड के एक्स्ट्राज एक्चुअली। यानी आप इन एक्स्ट्रास के ऊपर अगर काबू नहीं पाएंगे तो मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। और अंपायर का सिग्नल देखना होगा।
सो ये लीगल डिलीवरी डिक्लेयर की अंपायर ने और इस तरह 6 ओवर्स के इख्तिताम पर DHA दबंग्स 93 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर और करंट रन रेट जो उनका रहा वो 15.5 की औसत से साकिब ने 33 रन्स देते हुए 3 खिलाड़ियों का शिकार किया है, 3 विकेट्स ली हैं उन्होंने। और अब देखना यह है कि क्लिफ्टन गाजीज जो हैं वो किस तरह से इस लीड को अचीव करने में कामयाब होते हैं अपनी इनिंग्स में। यहाँ पर इनिंग्स का इख्तिताम 93 पर 5 DHA दबंग्स। और बहुत ही खूबसूरत मंजर ये चांद का। मुबशिर ने 22 रन्स बनाए, जोहेब ने 25 रन्स बनाए और बाकी कोई भी खिलाड़ी जो है वो कोई खातिर खा कारकर्दगी का इजाफा नहीं कर सका और 20 एक्स्ट्रास थे। और यहाँ पर शहराम ने 1 विकेट, जबकि टॉप जो विकेट टेकर्स हैं वो हैं साकिब 33 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फरमान ने 19 रन देते हुए 1 खिलाड़ी को आउट किया। जल्लाद 15 रन दे पाए हैं विदाउट एनी विकेट। और यूं 20 एक्स्ट्रास के साथ 93 पर 5 DHA दबंग्स। मेरा प्यार जल रहा है, अरे चांद आज छुप जा। और ये यासिर मुश्ताक, ये देखिए एक ऊंचा शॉट खेला था और कोई गलती नहीं की थी और इस दफ़ा इसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए थे और ये अच्छे चौके देखने को मिले और ये एक फ्लैट छक्का था और इस दफ़ा मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया था मुबशिर ने, 6 रन हासिल किए थे। ये भी एक ज़बरदस्त शॉट थी लेकिन इसको ज़बरदस्त तरीके से कैच किया, अच्छे कैचेस देखने को मिले और क्लिफ्टन गाजीज ने अच्छी एफर्ट की है। ये छक्का ऑलमोस्ट स्टेडियम से बाहर गया। यहाँ से बड़ा अच्छा खेलते हैं मिड विकेट से और मिड विकेट के ऊपर यहाँ पर 2 बुलंदोबाला छक्के देखे हमने। और इस दफ़ा इसको फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया था और एक अच्छा कैच किया, बोल्ड किया यहाँ पर और ये एक जानदार शॉट खेली थी अहमद ने। और DHA दबंग्स वर्सेस क्लिफ्टन गाजीज और 93 रन्स का रन्स बनाए हैं पहली इनिंग्स में। और ये दोनों बैटर्स इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज के इन होते हुए, जब नए बैटर्स आए हैं तो कमेंट्री बॉक्स में भी चेंज होगी और राना इशफाक और उनके साथ होंगे फरुख रियाज। Thanks a lot, Asif and Nadra Mushtaq. Clifton Ghazi going to start their innings. DHA Dabanggs batted decently well and got a decent score, if not the par one. And I've got Farooq Riaz alongside again, who's taking a very keen interest in the final of Pakistan versus Sri Lanka. So I am. Welcome, Farooq. Welcome, Rana Shwak, once again, and welcome to all the viewers from Azhar Ali Shah Stadium, North Nazabad, Karachi. So, Clifton Ghazi versus DHA Dabang, and Clifton Ghazi will start their first innings. Asif Shah is the captain of the side, is a well-known cricketer across Pakistan in this format. So lots of runs are expected. Asif Shah, the players like him and Taimoor Mirza, that they are crowd players and they strike the ball hard, they score quickly. And now the first ball coming up of the new innings. Well bowled. This was a Yorker on the leg stump and could be a run out here. But I think the throw was on the wrong end. So Clifton Ghazi off the mark. This is the kind of start they need.
DHA Dabanggs to take some sort of a lead. That was very well targeted ball, and run out possibility was also there. Worked away to the onside. Somehow I think is it off the thigh. We have to wait for the umpire's signal. Yes, it's a leg by, give it. So the ball swung away from the leg stump and he missed the connection, but somehow it was brushed off his leg and a single taken. We can see a lot of spectators supporting DHA in their dugout. A lot of ladies have made their way to the Asghar Ali Shah cricket ground. And this is the dugout of Clifton Ghazi. Nicely played, flicked over in style, but picked the man to the perfection. What a placement of the field placing here, and Asad Shah is the man who has to go. Mr. 360, a prolific player in this format, goes for one. It was a glorious shot, good looking shot, but picked the man to the perfection. So he has to go back, and that's a big moment of the game. He picked out the deep mid-wicket fielders of all pupil, because there wasn't too many fielder outside the circle, but he is one of them who took that one gladly and then threw it in the excitement. Asad Shah goes for one big blow for the Clifton Ghazi and big wicket for the DHA Dabanggs. Certainly, he plays like this. He takes chances. He doesn't block much, and this is one of his favorite shots. And look at the spectators I talked about. They have come to support DHA. Muzammal Kamoki is the new man who can do the damage straight away. He's a very fine cricketer. Got a good action, got a good style, and a brave man as well. So he will open the innings virtually. He came at number 3 as Asad Shah went out very quickly. What a good strike, what a class shot, and what a good camera work too. He struck hard, he struck straight down the ground. It's a glorious shot. That's what I was saying. He can do the damage right from the word score. Look at that. Gave it all the power which he had. Good use of the bottom hand and good follow through of the bat. Look at that. Although he placed his back leg outside his off stump, to balanced himself, to back himself with the power. Good hit. That's good technique and lots of power behind the shot. And good thing about that shot, he played it straight. He played with a straight bat and targeted a straight boundary here. Lovely shot. Well bowled and well played too. Good all-round cricket. And the bowler did well, almost targeted the stumps, and good presence of mind from Muzammal Kamoki, and he's having a look on the ball. That was a beauty of a ball, but the stroke was even better. He dug it out by getting his bat down in a hurry and picked up a single. That ball would have got bowler a wicket. Held the inside edge, just tried to work towards the onside. Came off the inner part of the bat. The Muzammal Kamoki is also a match winner, as he can turn the things around, and we have little spectators in the stadium watching this live action. 10 for 1. First over is being done. Muzammal is on 7. Usama has 1. A lot of innocent faces can be watched in dugouts, in spectators. A lot of future stars are here. What's the update of the final, Farooq? Can you share with our viewers? It's not good. Obviously, it's 4 down, 110, and Pakistan need 61 of 4 overs. In 24 delivery, 61. And who are at the wicket? Mohammad Rizwan was playing with run-a-ball strike rate almost. And along with him? And 5 down now. Oh, my word. So Rizwan gone. We do not have good news from Dubai. Pakistan is tottering big time at this stage, but anything can happen. Pakistan won magically against Afghanistan, then chased down a big target against India.
But here second over is starting. Zishan has the ball with him, and he is going to bowl to Usama, who is not out on 1. They are trailing by 83 runs with 5 overs to play with. Way down the leg side is Zishan, the left arm medium fast bowlers. They start the proceeding. So Pakistan won the toss in Dubai and opted to field. And it was a tradition in the tournament that the team wins the toss, they go for the chase, and eventually they win the game. But I think the tradition will be changed tonight in the all-important final. This one is played away and played away well enough to get over the fielder of deep mid-wicket. 6 runs. Almost a similar shot the way Asif Shah got out, but I think on that occasion Usama played with some power, with some extra power that helped him to get a distance. There was a man down there, he was in business for a moment, and look at that. The good-looking shot. He got his heart, it's got his heart in his mouth, and nevertheless it was good enough shot, clear the boundary. More runs, boundary this time. Fine leg is inside the circle, and he had no chance to stop it, so boundary follows a 6. Knew exactly where the fielder was. That was a very good shot, because fine leg was up in the circle, and all he had to do to got the ball over his head. That's what he did very nicely and picked up a boundary. A 6 followed by a 4. So good batting from Usama. Absolutely. Attacking approach from Clifton Ghazi despite the loss of Asif Shah. And this is the beauty of a shorter format. Don't lose the momentum if you lose the key player. And big shots, not quite timing. The intent was clear to go after the bowler. And exactly what we saw in today's final in Dubai, and Sri Lanka lost important wickets in few overs, but the attacking approach was still alive, and they kept scoring runs. In the end, they got 150 plus, 170 in the end. I have been following Sri Lanka when Australia toured Sri Lanka recently, and that's where I expressed my thought to somebody. But that's a hit which is in the air, and catch is taken at the mid-wicket boundary, and the DHA Dabanggs fielders and captain are absolutely happy, and they are coming closer to each other and congratulating each and other. So wicket for Zishan and the wicket for DHA. 23 is the score. So Sri Lanka, although they lost all-important game against Afghanistan, that's the dismissal which just has happened. Good catch was taken on the mid-wicket boundary. The way they lost against Afghanistan, first match of the event, where they got out 103, and then Afghanistan went on to chase the target in 9 overs. But they made a comeback from the adversity, and it's a sign of a champion to make a comeback from the adversity. I think full marks to them, full marks to their positive frame of mind. And even today, they were 58 for 5. No one would think that they could get 170 and then could get Pakistan in a situation like this. I think full marks to Sri Lanka. They got good youngsters, but they are playing gallantly. They are playing with a valiant approach, and they're looking very positive. Although Pakistan still can win the match. After all, it's cricket, and Pakistan is very famous to do something extraordinary, not only in terms of victories but also in terms of defeats. Pakistan and West Indies are the two most unpredictable sides of the world. Although Zimbabwe becoming a very unpredictable nowadays. They won a couple of matches from nowhere against Bangladesh, then played a cliffhanger against India. It looked that Zimbabwe would beat India, which they didn't actually. But they did beat Australia in Australia terrifically. And no one would think that Australia could get beaten by Zimbabwe in Australia. Absolutely. And it was a full strength Australian side. It wasn't, and here are the runs coming up as a result of fumble, and could be another run, could be run out, and fielder didn't collect the throw. It could have been run out as well, but nevertheless a couple of runs taken. Quite right. 2 overs been bowled, 26 for 2. Smith was playing, Warner was there, Finch was there, everyone was there, and they bundled out Australia for 141. And then went on to chase that target at Townsville
I think cricket is a funny game, but Sri Lankan approach is very good, and particularly the way they made a comeback after losing against Afghanistan. Then they chased against India, chased against Bangladesh, chased against Afghanistan. And in the final, where Pakistan was dominating 58 for 5, and the way Rajpaksha played and the way Hasaranga played, I think all marks to them. Yes, Rajapaksa is a dangerous customer. And a similar approach seen from Clifton Ghazi, and they are taking their chances. And look at that, and 2 shots were taken at the boundary. And despite that, they go after the bowler, the Muzammil Kamoki, and before that, Asad Shah, 2 match winners of Clifton Ghazi. And they got out early, and still just 2 overs have been bowled and still 4 overs left. Now it all depends on Tahiri and Osama, and they are trailed by 67 runs. There's still a fair amount of margin. This one is pelted and belted hard. Fielder ran around to get his hand into the ball, but he did not able to reach it, and it travelled away for 4. I think he hurt himself. It tried hard. It was a very, very good strike. It was struck immensely hard. His fielder wasn't far away, but was struck immensely hard. And look at that. He tried his best to stop it. Just a couple of steps he took to his right, and I think it's an awkward landing of his knee. So the well-deserved boundary. It was an absolute blinder from Osama. The boundary to start the over number 3. That was a spectacular shot. And this time he has swung it away over mid-wicket for a 6. Runs coming and coming in quick succession. This could be the over. This could be the over. This could be the game changer. The boundary followed by a maximum here. And this time it dropped the ball short. It wasn't that short, but excellent shot indeed. He just turned it away in style. It's a magnificent pull shot in the end. So good to watch batsman goes in this fashion. It went miles in the air and it's clear the fence comfortably. Osama, very impressive 23 so far of just 8 deliveries. Good shot straight down the ground. Cleared the fence comfortably. Tremendous hitting from Osama. He really took on Mohammad Hasnain in style, and it's turning out to be a huge over. Problems for Hasnain. He already has gone for 16 in 3 balls. Look at the last stroke. Good use of the bottom hand and good use of the wrist. Look at that. Bat was going forward. Feet looked stuck there, but still timed it and still got it over the line. Lots of bottom hand, lots of power from the batsman. And importantly, he's went straight. Low full toss at the off stump. That is well bowled. Good comeback. But nevertheless, it's considered 18 runs so far. So Osama has been impressive. This is how the table cricket is played. Played with power, played with authority. I fail to comprehend what is the good over for the bowler. Because 15, 16, I think, is a good over. Because at times 30, 35 runs are being scored in the overs. It's an awkward bounce that's disturbed Osama. I think he was clueless as far as making the contact is concerned. He went for that stroke bit early. Ball came a bit late. That's why it struck onto his body, and then went into the offside. Tahiri has got the strike. He's also a good player. He has performed in different platforms. He totally missed it. I think he got a blow on his head. He was not even close to make any contact. Totally lost it. Now Tahiri will face the final ball of the over. Had it been a hard ball, that would have been a dangerous. Oh, that was a full toss, I think, and it carried towards the wicket keeper. Umpire says it's the over. 3 gone, 43 for 2. 43 for 2, and Clifton Ghazi is still trailed by 50. So the next 50 is quite gettable in this format in the last 18 balls, and if they get help from extras,
The couple of runs are accounted as a result of a wide. So it's DHA versus Clifton Ghazi. I must tell you, Clifton Ghazi decided to bowl first when the captain Asad Shah of Clifton Ghazi won the toss. It's now time for the change in voices. Nadra Mushtaq and Asif will pick up the commentary. Thank you very much. राना इशफाक और फरूख रियाज। उसामा बैटिंग कर रहे हैं 30 पर, 11 गेंदों का सामना किया है और क्लिफ्टन गाजीज ट्रेल बाय 50 रन्स। 3 ओवर्स में अब तक 14.33 की औसत से बैटिंग की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम शदीद मुश्किलात में और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया और इसी की बात की जाती है। जवाद ने बहुत अच्छा आगाज किया है आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी और वंस अगेन इसको क्रॉस द लाइन खेलने गए, बीट हुए। मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। थैंक यू के आसिफ, अच्छी बॉल कराई जवाद ने। बेहतरीन इन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन फील्डर बाउंड्री पे मौजूद थे और मिस कर गए। एक बहुत ही अच्छी गेंद जो कि कैच हो सकते थे और वो चांस उन्होंने मिस कर दिया है। डेफिनेटली एक बॉलर के लिए कितने ज़्यादा इस वक्त टेंशन की बात होगी, कितने ज़्यादा इस्तराब का शिकार होंगे। थोड़े से ज़हनी तौर पर माइंड बना के उन्होंने बॉल करवाई। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं जवाद। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी देर गेंद हवा में रही, एक आसान कैच था और ड्रॉप कर दिया DHA दबंग्स ने। और आज पाकिस्तान ने भी फील्डिंग में कोई अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा नहीं किया। जब आप कैच ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, टीम का मोराल डाउन होता है, बॉलर का मोराल डाउन होता है और बैटर को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। ये कॉन्फिडेंस नज़र आया इस शॉट के अंदर और आप देख सकते हैं कि उनको चांस मिला और ये साथ ही उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। बॉलर भी थोड़ा सा वेवर्ड हो गए और लेग स्टंप से बाहर ये गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बैटर ने। एक खराब बॉल जिसकी वजह से वाइड मिला क्लिफ्टन गाजीज को। उसामा 38 रन्स बना चुके हैं 14 गेंदों पर। ताहिरी इन्होंने अभी तक कोई भी रन्स नहीं बनाए, अपना अकाउंट इन्होंने ओपन नहीं किया है। लेट्स सी जवाद ऑन द बॉलिंग लाइन और फुल टॉस गेंद, इसको खेले हैं एक्स्ट्रा कवर रीजन में। शानदार छक्का इस दफा और ये आप देख सकते हैं कि क्लिफ्टन गाजीज के ऑनर शाहू जिस तरह से खुशी मना रहे थे। ये फुल टॉस डिलीवरी और इसका भरपूर फायदा उठाया उसामा ने, इसको खेला एक्स्ट्रा कवर में और कैच ड्रॉप किया है। तो फिर तैयार हो जाइए, ये कैच नहीं, आपने मैच ड्रॉप किया है उसामा, ये बताते हुए। एब्सोल्युटली, लेकिन ये अभी हम बहुत अर्ली नहीं कह सकते बिकॉज अभी टाइम है इनको अपनी सेकेंड इनिंग के लिए भी। 28 रन्स जो कि क्लिफ्टन गाजीज को बनाने हैं मजीद। जवाद 22 रन्स दे चुके जिनकी अभी हम तारीफ कर रहे थे कि बड़ी नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। कंप्लीटली कनेक्ट नहीं कर पाए बॉल को बैट्समैन ताहिरी। ऑलराइट, ताहिर पिंडी। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे, बड़े नए नए नाम नजर आ रहे हैं
इनका नाम ताहिरी पिंडी, क्योंकि पिंडी से बिलोंग करते होंगे डेफिनेटली, तभी इनका नाम पिंडी है। उसामा अपनी नेक्स्ट सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं 17 गेंदों पर। अच्छा स्कोर सेट किया उसामा ने, अच्छे रन्स बना लिए 17 गेंदों पर। करंट रन रेट है 16.25। जवाद खास से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं इस वक्त। अपने पहले ओवर में, एक ओवर में 22 रन दे चुके हैं बिना किसी विकेट लिए हुए। चौथे ओवर के इख्तिताम पर 65, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर क्लिफ्टन काजीज। जी हाँ, कादिर अब बॉलिंग के लिए आए हैं। ताहिरी पिंडी, इनके ताल्लुक गोलड़ा इस्लामाबाद से है और पाकिस्तान के रोहेल नज़ीर जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी खेल चुके हैं, उनके भाई हैं ये। इनका असल नाम ताहिर है और ताहिरी पिंडी के नाम से जाने जाते हैं। अब आपने बताया है तो मैंने फेस रिजेम्बलेंस देखी, हाँ काफ़ी हद तक मिलते हैं। और इस दफ़ा इसको खेल दिया है फाइन लेग की, स्क्वायर लेग की जानिब, और वहाँ पर स्वीपर मौजूद थे, 1 रन बन पाएगा। सो ताहिरी पिंडी ऑफ द मार्क विद दिस सिंगल। काफ़ी देर के बाद स्ट्राइक रोटेट हुआ। उसामा इस वक्त सामना करेंगे कादिर का, जिन्होंने 10 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। सो फार सो गुड। और शानदार तरीके से ये इस दफा इसको पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ये उसामा अली 555 का छक्का हमारे सामने आकर ये गेंद गिरी। जबरदस्त टाइमिंग, ये देखिए बॉलर ने ओवर पिच डिलीवरी की और क्या शानदार तरीके से गेंद हमें मुंह चढ़ाती हुई हमारे सामने आकर गिरी। बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त मौजूद हैं आपके सामने। उसामा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 21 रन मजीद दरकार हैं क्लिफ्टन गाजीज को। हल्का सा खेले, जस्ट 1 रन का इजाफा हो सकता है। दूसरे की कॉल देना चाह रहे थे लेकिन ओपोनेंट ने मना कर दिया ताहिरी ने कि वहीं पर आप रुके रहिए, ये गलती मत कीजिएगा वरना रन आउट भी हो सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कॉल अगर ना भी दी हो तो बैटर भागने की कोशिश करते हैं, उसी में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो जाते हैं। कादिर बॉलिंग के निशान पर तैयार, सामना करेंगे ताहिरी। और इस दफा गेंद हवा में हल्की सी स्विंग हुई और इसको मिड विकेट की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। कदरे बेहतर ओवर है, अब तक सिर्फ 1 छक्का लगा है इस ओवर में और ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि टेप बॉल क्रिकेट में अगर आपने 8-9 रन दिए हैं, 10 रन दिए हैं तो एक अच्छा ओवर कंसीडर किया जाता है। इस वक्त प्लानिंग कुछ और थी बैट्समैन की, लेकिन बहरहाल 1 रन मिल गया। और यूं 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 75, 2 खिलाड़ी को नुकसान पे क्लिफ्टन गाजीज। 18 रन मजीद दरकार हैं और क्या कहते हैं आप, 6 गेंदों पर 18 रन, 3 छक्के हैं तो या तो आप ये देख लीजिए 5 चौके लगेंगे तो फिर भी डू यू हो थिंक सकता है 6 गेंदों पर छक्के मिल जाएंगे? जिस तरह से उसामा बैटिंग कर रहे हैं मेरा ख्याल है कि उन काफ़ी अच्छे टच में हैं। 57 रन बना लिए हैं 20 गेंदों पर। सो मेरा ख्याल है ये 18 रन बनाना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। वैसे ये टेप बॉल क्रिकेट है जहां पर चौके छक्कों की बरसात है। बहुत ही इंटरटेनिंग क्रिकेट, न्यू फॉर्मेट जिसको इंट्रोड्यूस किया हमारे सीनियर्स ने, लेजेंड्स ने, जावेद मियादाद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब और हारून रशीद साहब। ये वो नाम हैं जो कि क्रिकेट में काफ़ी बड़े नाम हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी खिदमात दी हैं, ना सिर्फ ये कि क्रिकेट में बल्कि बोर्ड के लिए भी उनकी काफ़ी खिदमात हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसामा बिल्कुल तैयार हैं हसनैन का सामना करने के लिए। हसनैन ने पहले ओवर में 17 रन दिए थे। कोई खिलाड़ी
नहीं आउट कर पाए थे। और आगाज अच्छा नहीं है, रन्स मिल जाएंगे यहाँ पर डाउन द लेग साइड। वाइड डिलीवरी भी है और तेजी से दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट उसामा और तायरी पिंडी की। और उसके साथ ही वाइट का इशारा भी। 2 रन्स का मजीद इजाफा। थोड़ी सी आउटफील्ड में हमने देखा गेंद स्लो हो गई थी। अगर कुव्वत भरी हिट लगाते तो हो सकता है कि बाउंड्री हो जाती, चौका लग जाता। मोहम्मद हसनैन 21 रन दे चुके हैं, किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। एक बार फिर मोहम्मद हसनैन उनका सामना कर रहे हैं उसामा 57 रन के साथ। और इस दफा इसको ऊंचा खेलें फाइनल की जाने। फील्डर जरूर पीछे दौड़े थे लेकिन इस गेंद को ना रोक पाए। तो एक और बाउंड्री यहां पर मिली है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक लगाया है और बहुत ही आसान है कि ये जो रन्स है इनको करने हैं पूरे, ये बहुत आसानी के साथ पूरे कर लें क्योंकि अभी गेंदें बाकी हैं आखिरी ओवर की, 6ठे ओवर की। मोहम्मद हसनैन 25 रन दे चुके, दूसरा ओवर करवा रहे हैं। स्लो डिलीवरी, इट्स अ वेरी गुड चेंज ऑफ पेस और 23 से 1 रन ले लिया। सो बहुत ही अच्छी इस दफा बॉलिंग का मुजाहरा किया। बाकी 4 गेंदों का खेल बाकी है और 9 रन्स करने हैं। ताहिरी पिंडी अब तक अपना मखसूस जारहाना अंदाज अपना नहीं पाए। और एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। इसको खेला स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन बन गया। सो अब देखना ये बाकी 3 गेंदों में थोड़ा सा रिलैक्स होके खेल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे उनके पास गेंदें भी मौजूद हैं और रन्स बहुत कम है। जस्ट या तो 2 चौके लग जाएं या फिर 1 छक्का, और सिंगल्स भी अगर बनते हैं तब भी अचीव कर लेंगे। क्लिफ्टन गाजीज, मोहम्मद हसनैन ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामना करेंगे उसामा 61 रन के साथ। और तेज गेंद थी, वेस्ट हाइट, और देखना अंपायर का डिसीजन। और जी अंपायर ने कंफर्म किया कि नो बॉल नहीं है। अब बैटर अभी तक अब देख रहे हैं कि ये नो बॉल होनी चाहिए थी, बट ये फैसला बॉलर के हक में आया है। सो हसनैन ने दूसरे ओवर में अच्छी बॉलिंग की। अब ताहिरी अभी तक सिर्फ 3 रन बना पाए हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए। जो तवक्कुआत थी उस तरह के रन्स तो नहीं बने। बहरहाल और इस दफा इसको खेल दिया है शानदार तरीके से अपने मखसूस अंदाज में ताहिरी पिंडी ने, और आपकी बात सुन ली। अब सिर्फ 1 रन बचा है और 1 गेंद बाकी है। सो विन विन पोजीशन में आ गई है क्लिफ्टन गाजीज की टीम। ये सेल्फी टाइम है यहाँ पर। बड़ा दिलकश ये मुकाबला सो जारी है क्लिफ्टन गाजीज और DHA दबंग्स के दरमियान। नेक टू नेक है। बहुत ही शानदार तरीके से ताहिरी पिंडी ने इस गेंद को पहुंचा दिया पिंडी की जानिब। शानदार छक्का। और इस दफा रन अप मिस कर गए। सो अब तक
ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला है दोनों ही टीम्स की जानिब से। क्लिफ्टन गाजीज ने अच्छा कम बैक किया उसामा की शानदार इनिंग्स की बदौलत। 62 रन बनाए उसामा ने, 23 गेंदों का सामना किया। और अब आखिरी गेंद है इस इनिंग की। और एक दफा फिर तेरी पिंडी ने इस गेंद को पहुंचा दिया है रोप्स के बाहर। शानदार छक्का, अपना मोमेंटम हासिल कर रहे हैं तेरी पिंडी। 15 रन बनाए आखिरी 2 गेंदों पर, 2 छक्के लगातार लगाए। और इस तरह से क्लिफ्टन गाजीज ने 5 रन्स की लीड ले ली है। बहुत ही कम रन्स की लीड है जो कि बहुत इजीली अचीव कर लेगा डिफेंस। DHA Dabanggs 98 for 2 in 6 overs. क्लिफ्टन गाजीज बहुत अच्छा कमबैक। और इस तरह हमने देखा कि असद जल्दी आउट हो गए थे, कोई रन 1 रन बना पाए थे। और 62 की शानदार इनिंग्स खेली उसामा ने और तेरी पिंडी ने उनका साथ दिया। 15 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 13 रन एक्स्ट्रा के मिले। इस तरह 5 रन की लीड हासिल कर ली। कादिर ने 18 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि जीशान ने 14 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया। जीशान का इकोनॉमी 14.00। मोहम्मद हसनैन और जवाद कोई रन ना ले पाए। मोहम्मद हसनैन काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, 39 रन दिए हैं विदाउट टेकिंग एनी विकेट। एंड जवाद उन्होंने 22 रन दिए हैं, 13 एक्स्ट्राज और यूं 5 रन की लीड हासिल की है क्लिफ्टन गाजीज ने। 13 रन के एक्स्ट्राज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम पिछली इनिंग्स को देख रहे हैं डिफरेंट टीमों की, तो सबसे ज़्यादा 35 रन के एक्स्ट्राज जो आए थे एक टीम के, तो वो बहुत ज़्यादा थे, जिसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जी हाँ, इससे पहले कि DHA दबंग्स अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ करें, कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली होगी और राना इशफाक और उनके साथ होंगे फरुख रियाज। Thank you very much, K. Asif and Nadra Mushtaq. So, DHA Dabanggs trail by 5 runs. Clifton Ghazi got the lead. And it is a even Steven game. Just unlike the last game we saw, which was a one-sided fixture or one-sided affair, but here both teams have equal chances, Farooq. Absolutely, as you mentioned, you want a reasonable score, which is likely to be a thriller, and exactly what we have witnessed. Just 5 runs difference that separate both sides, and Dabanggs and Ghazi, and both are neighboring areas, and both are very close in different aspects of life. So at the moment, it's an even Stevens situation. So it's like a brand new game again, which is actually the second innings of both, but they can play like a brand new 6 overs match because just a 5 runs difference. So it could be anybody's game. Absolutely agreed. Both the openers have come out in the center. And they have to play well to give a good target, because they are, although lead is pretty small one, but they are still in a 5 runs deficit. Zohaib Butt is a bulky figure, wearing the shirt number 64. Achi Butt and Zohaib Jamil. These are the two openers. Both are Butt by caste. Arsalan Jamshed, his nicknames is Achi Butt, and Zebi Butt, the real name is Zohaib Jamil.
They are known for their nicknames. Very, very lightning atmosphere here in Asghar Ali Shah Cricket Stadium. Spectators have turned up in good numbers. Shahram got the ball in his hand. He's a good bowler, bowled well in the first innings, and his captain expecting the same from him in the second innings. All in order to start the second innings. Fine leg and third man both up in the circle, and here we go. And straight away he has launched it away over wide mid-off for a 6. What a great way to start the innings off, or start the things off. Yes, absolutely. The sixes are important to get the flying start. And now DHA leads by 1 run. And just after 1 ball, they find themselves ahead now. They mopped up the lead straight away. Goes again. That's a terrific stroke. As good as anyone. It doesn't get better than this. What a blow there is. He's picked it up from outside the off stump and good swing of the bat. Played with real authority and command. It was wide of the screws. This is how the table cricket is played. They show a lot of power, a lot of intent. It was outside the off stump, and usually leg sides are preferred, and exactly what it did on that occasion. Zohaib hit that one quite outstandingly. Zohaib, but telling his opposition what he's made of. There he goes again. This time he's going to get 4 down towards the deep square leg. It was a miss hit, kind of a miss hit, but luckily it was right in the gap. So there is no protection, and fielder certainly didn't have any chance to go after the ball. The outfield is quick, and also he's smoked it hard. He's got up to 16 in no time. Has faced only 3 balls. Hitting the tape ball almost in every part of the ground. Smashed a 6 over wide mid-off, then belted a 6 over mid-wicket, and then struck a boundary towards the square leg. Zohaib but playing outstandingly well, and this is what his team required from him. Again 6 over mid-wicket. He's on fire straight away in the second innings. Incredible batting from Zohaib. It was down on his knees or low full toss, and he played with real confidence. Usually batsmen take on spinners like that. It was a pacey ball, but he was down on his knees. He was well prepared, and he was absolutely spot on with his everything. Terrific exhibition. What a start that is. Straight away, they applied the pressure on Clifton Ghazi. They are ahead by 17 runs now. We are in the first over. Only 4 deliveries have been sent down. Finally, a sigh of relief for the bowler. This is the first ball which hasn't gone for a boundary. Yeah, it was a right line, especially in the first 2 overs. Yorker outside the off stump, but the bowlers tend to lose their line as they don't find themselves very accurate. But it was a good ball, and in the end, just inside part of the bat made a contact, and it conceded just 1. It was a better ball, the best of the lot in this over. But nevertheless, it's an expensive over. Just 1 ball left to finish the first over. This time it's Sachi Bhatt who has smoked it away over mid-wicket for a 6. So 29 runs came off the first over. What a brutal start for the DHA in the second innings. Runs is hungry for to have some snacks. He hit that one towards canteen, and what a good shot. Slow one, and I think he picked it up well. And that's a sign of a quality player. He just watches the release of the ball very closely. So lovely shot, and overall tremendous start by DHA.
That was one brute of a shot from the bat of Achi, but he got the ball in his radar and then dispatched it many a miles. So DHA Dabanggs got off to a Dabang start. 29 for no loss after the completion of the first over. And they changed the batting order. The skipper came in the first innings and now they changed the batting order and it worked straight away. 29 they achieve of without losing any wicket of first over. Arsalan got a 6, just faced one delivery. Suhaib is on 23. So a dream start. And certainly Clifton Ghazi, Asad Shine Company will be under pressure and they need wickets to release some sort of pressure. Saqib has been brought onto the bowling attack from the commentary box end, and he's going to bowl to Zohaib Butt, who already has got 23 under his belt. And he goes down again. Doesn't matter who's bowling. He welcomes him with a big 6 over mid-wicket. He is in terrific form. Zohaib, what a start in the over. The brand new ball of a new over, bad delivery, dropping the ball short and punishing stuff continues. He doesn't want to miss any opportunity, any scoring opportunity here. He is nearly 30 and it's 35 for none. Wow, what a start that is. Bowlers are looking helpless at the moment. They've got to find some way, and this is a good ball. They crossed over for a single, although. Certainly a better ball and it didn't have much time to play the pull shot. It wasn't that short, and so conceding 1 run is some sort of an achievement for a bowler in this format. No doubt about that. If you are giving a single on a ball, or even you give a double, I think it should be called a good ball, because 10 or 12 runs are not big runs, because we are seeing the overs like 29, 25, 20, 33 even. That's well bowled as well. Very well bowled. Wicketkeeper could not able to gather it properly. Otherwise that would have been a dot ball, but the batsman got a bye. It's a tough job for the keeper without wearing any sort of gloves and to keep the wickets. And obviously some express bowler tease them with their pace, so it is very difficult to collect the ball cleanly. They don't have luxury to wear gloves, and most of the time keepers fumble it, and the slightest of fumble allow the pair to go for a run. And now that the dangerous Zohaib is back on the strike, so as a result of fumble, it worked in the favor of DHA Dabang. Arsalan glanced that away, and a rare stroke in tape ball cricket, but fine leg was there up in the circle, who stopped it all right, and single is allowed. In very awkward fashion he stopped it. It wasn't a clean save, but it's a tennis ball, so I know he didn't get hurt, but somehow he saved it. But he gives everything. Valiant effort nevertheless. This is the type of fielding is required to lift the bowlers. Saqib streams away, and he has been hit away, and hit away beautifully over mid-on for a 6. Oh, that is imperious. That is outstanding from Arsalan. Low full toss, but lots of power from him, and the ball sailed over the hoardings for the maximum. Runs are coming thick and fast in the second innings. Look at lots of pace, low full toss, and beautifully played. He was down on his knees and gave us everything. What a good shot that is. 95 or 100 run could be a good target, but I think at the moment they are looking beyond that. The DHA Dabanggs, the way they are batting. Oh, bowler doesn't bowl that ball. He aborted himself and now making his walk back to the top of his bowling mark. Wicketkeeper has a short third man, or even you may call it a slip, because bowler generating a lot of pace,
and then there is leg slip. Swings away. Didn't get hold on that one. Single. Wasn't that short, but certainly it was a dangerous ball because there is no protection at the boundary. But 2 overs have been bowled. It's 45 for none. DHA Dragon, they off to a flyer. Very difficult to hit that many sixes in this early of the innings, but both the butts are doing it quite nicely. .45 for none after 2 overs. On a couple of occasions, Rana, we saw the batsmen went down their knee and took on the fast bowlers, and especially we normally see against the spinners, the batsmen went down to the knee and go after the bowler. So it's a sign of a quality player because they judge the line very quickly, and the advantage of to get on the knee, to get the bat underneath the ball, so judge the line and just convert the low full toss and just heave the ball to the onside. So it's not easy to play on the knee and deal with the maximum against a fast bowler. So it's a great exhibition, and a couple of times we saw it. So Arsalan had played it one shot down the knee, and Zoeb also did it. So Ghazi under pressure a little bit. Outside the off stump. Starts with the wide, Jalad. DHA Dragon 40 runs ahead, 47 for none. Arsalan's 13 on 4, Zohaib 30 off 8. Yes, I am agreed with you, Farouk. That's a good delivery. Yeah, usually we see the bowlers kneeling down against the spinners, but here we can see they're using their knee against the pacers, but because they don't have any fear of getting hit on the body or getting hit somewhere on sophisticated part of the body. So it's a straight ball, although it can be hurting as well. And there you go. Fielder, I think, lost the direction of the ball, then tried to get himself back in the play, but there wasn't any chance. Well played, nice and flat from Arsalan, and I just get the feeling the wind started to play some role as far as to resist the shot or to support the ball like that, because but somehow it was a good hit, no doubt about that. Outside the off stump, a dot ball here, so led by 48. So I think in the evening we do have a factor of wind as to help the players to get maximum. Sometimes the batsmen play with the wind, sometimes they play against the wind. Wind always play a vital role in cricket games, particularly at Waka, Perth. Fremantle doctor comes. This one is driven away onto the onside for a single. They were looking for the second as well because it was overthrown, but quickly backed up by the fielder. DHA got off to a very good start and they are building up on it. 49 runs is their lead at the moment, and they've got 3 overs left after 2 deliveries. Jalad is the bowler, who has given away 9 runs in 4 balls. Zohaib is taking strike. Look at the range he used. Protection was there at the covers, but he had no chance whatsoever because ball went over his head for 6. Incredible shot for sure. It was wide outside the off stump, and he had the opportunity to free his arms, but it struck flat and hard. There was a man down there,
but certainly he wasn't tall enough. It was full toss all right, but lots of power. He stayed in the crease. It was struck so hard, so flat. Obviously, it wasn't catchable, but superb shot this from Zohaib. Spectacular batting. He played it a bit early. By the time ball arrived at him, bat was already swung. I think he's expecting a wide ball, but wasn't given a wide. He swung his bat. I think he is not too sure how close was it. He thinks it was outside the off stump, but still complaining. Not only complaining, but also explaining that was outside the off stump and wide should have been given. But I think actually it wasn't a wide. Good call by the umpire. 3 gone, 60 for no loss. 60 for none. DHA Dragons is 50 runs, 5 runs ahead. We could have a good contest now. It's pretty much even Steven, some lusty blows, some decent overs, and now next 3 overs will set up the game. DHA दबंग 60 बगैर किसी नुकसान के, और मैं कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहूँगा नादरा मुश्ताक को। वेलकम। बहुत शुक्रिया फरूक रियाज। इस वक्त DHA दबंग्स 55 रन्स की लीड के साथ मौजूद हैं। 60 रन्स 3 ओवर्स के अख्ताम पर बना पाए हैं बिना किसी नुकसान के। कोई भी विकेट नहीं गंवाई है और दैट्स अ गुड साइन फॉर देम। करंट रन रेट है 20.00। अच्छी बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर, कोई मौका नहीं। बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन ये लेंथ इतनी परफेक्ट थी कि बैट्समैन जो है वो बड़ा शॉट नहीं बना पाए। उनको भी अंदाज़ा था कि ये बॉल मिस हो गई, क्योंकि बॉल बहुत अच्छी थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यॉर्कर लेंथ। कॉन्टैक्ट ज़रूर बना, लेकिन जाहिर है बॉल गई कीपर के पास, सो एक कीमती डॉट बॉल। जो यॉर्कर्स हमें यहाँ नज़र आ रही हैं KTPL में, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जब हम इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं लाइक एशिया कप में, वहाँ बहुत ज़्यादा हमने मिस किया यॉर्कर्स को। फरमान कैच इट की क्राई है और ये ड्रॉप हो गया। ये टीम कॉन्फिडेंट थी कि कैच हो जाएगा, रनआउट का भी चांस है, लेकिन दोनों बैट्समैन जो है 2 रन मुकम्मल कर चुके हैं और काफ़ी उम्मीद थी कि ये कैच हो जाएगा। मिस टाइम शॉट था, बड़े शॉट के लिए गए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फील्डर अभी भी गिरे हुए और थोड़ा मुश्किल होता है कि आप बॉल को पीछे की तरफ देखें, अपने आप को ही बैलेंस रखें, नज़र भी बॉल पर रखें, लेकिन लकी रहे अरसलान, इस दौरान 2 रन मुकम्मल हुए। इस तरह की जब भी बॉल आए तो उसमें जब रिवर्स आप कैच करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिसफील्ड भी हो जाता है और फिर नाइट में थोड़ा सा इन चीज़ों का इश्यूज ज़रूर आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाई कैचेस वैसे ही मुश्किल होते हैं, स्पेशली टेप बॉल में, और जब हवाएं भी चल रही हो तो बहुत मुश्किल होता है। बॉलें जो है वो बॉल अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। तो फरमान नन फॉर 2 की बॉलिंग फिगर्स और एक दफ़ा फिर तैयार। अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल, अच्छी लेंथ से बॉल को उठाया और बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं बना पाए। एक और डॉट बॉल। जी हाँ, फरमान इस वक्त जो बॉलिंग करवा रहे हैं, फुल उनका जो टारगेट है वो ये है कि किस तरह से विकेट ली जाए और 2 रन्स दिए हैं सिर्फ 3 गेंदें कराते हुए। जी हाँ, पेस अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। जी, आपने देखा कि पेस बहुत अच्छा है और लेंथ का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ 2 रन्स दिए हैं। लंबे कद के हैं, अच्छा पेस है, एक्सपीरियंस भी है इनके पास। कनेक्शन सही से नहीं बना पाया एक दफ़ा फिर, लेकिन 4 रन्स मिल जाएंगे क्योंकि फील्डर जो है बाउंड्री पे नहीं थे। शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर थे, वो गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, बॉल चली गई बाउंड्री के बाद। स्टिल अ गुड बॉल और चौका बहरहाल यहाँ पर मिला है DHA दबंग को, लेकिन अच्छा ओवर इस गेम के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखें, सिर्फ 6 रन आए और बड़े ओवर की तलाश थी और जैसे मैंने कहा कि 2-3 ओवर सेटअप करेंगे इस मैच को। हुक पूरे तरीके से किया, टाइमिंग नहीं थी, बहरहाल 4 रन ज़रूर मिलेंगे।
61 रन्स आगे हैं और तकरीबन 14 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग्स में, 14 लीगल डिलीवरीज का। फरमान वेरी इंप्रेसिव, स्विंग एंड अ मिस, वेल बोल्ड। काफी बाहर निकलता हुआ गेंद था और लग ऐसा रहा है जैसे गेंद का हमने जिक्र किया तो शायद करें क्रिकेट के हाथ में वो गेंद है। बहुत ही उम्दा बॉल, आपने देखा कि एक्स्ट्रा बाउंस का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन को भी चाहिए थोड़ा सा शफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर भी खेले, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर बैट्समैन खड़े होकर ही खेलते हैं और क्रीज के अंदर रह के खेलते हैं, वरना इस तरह के शॉट्स हों तो ये ऑफ स्टंप पे निकाल सकते हैं क्योंकि कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है थर्ड मैन पे या डीप पॉइंट, डीप कवर पे। जी हाँ, और कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए। जी हाँ, और आप बिल्कुल सही कहा आपने, ये आउट हो गए और अंपायर का इशारा देखना होगा कि ये बल्ले से आया है या फिर ये फोर आर्म से लगाए। और बहुत पुरएतमाद है, लेकिन दोनों अंपायर्स ने शायद आउट नो बॉल का इशारा दिया है। ट्विस्ट इन द टेल, और बहुत ही अच्छा ओवर था, नो बॉल नहीं होनी चाहिए थी इस ओवर में। फरमान बहुत ही स्पॉट ऑन थे अपनी लैर और लेंथ के हवाले से। ये हमें देखना होगा कि कहाँ पर जो फ्रंट फुट लैंडिंग पहले हम देखेंगे। ये नो बॉल तो फ्रंट फुट की नहीं है, मेरे ख्याल से हाइट की नो बॉल है और सर के ऊपर, सर पे बॉल लगी है ये, तो इतना एक्सप्रेस पेस था, ऐसा ही अंदाज़ा हमें नॉर्मल एक्शन में नहीं हुआ कि बॉल लगी कहाँ पर है, लेकिन नो बॉल है क्योंकि ये एक से ज़्यादा अगर आप नो बॉल करते हैं, बाउंसर करते हैं तो वो नो बॉल। यहाँ पर अंपायर का इशारा फ्री हिट का। अब देखना यह है कि फ्री हिट में कितने रन्स बना पाएंगे। और यूजुअली होता यह है कि जब फ्री हिट आपको मिलती है तो आप उसमें कोशिश ये करते हैं कि बड़ी हिट लगाएं ताकि ज़्यादा रन्स जो हैं वो कंसीड किए जा सकें। फरमान सामना करेंगे जोहेब। बहुत ही उम्दा बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप कनेक्शन नहीं ले पाए, तेज बॉल, अच्छी लेंथ और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठाया। तो 4 ओवर मुकम्मल हो गए, बहुत ही उम्दा ओवर फरमान का। और पहला ओवर उन्होंने किया और शायद छठा ओवर भी यही करेंगे लिमिट के हवाले से देखा जाए तो। 17.25 करंट रन रेट है और 69 स्कोर बगैर किसी नुकसान के। जी हाँ, DHA दबंग्स 64 रन्स की लीड लिए हुए, लेकिन यहाँ पर लीड आपने 64 रन्स की लिए या उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम दूसरे एस्पेक्ट से अगर देखते हैं क्रिफन अजीज़ को काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं, जिस तरह उन्होंने कल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और आज भी उनकी काफ़ी बेहतर इनिंग रही है। तो दोनों टीमें जो हैं काफ़ी तगड़ी हैं आमने सामने। वन साइडेड गेम इसे अब नहीं कह सकते कि वन साइडेड होगा, काफ़ी करीब मुकाबला देखने को मिलेगा। जल्लाद खान इस वक्त 5 नंबर की टी शर्ट जेबतन किए हुए बॉलिंग के निशान पर तैयार। 69 बगैर किसी नुकसान के। अरसलान 27 के स्कोर पर खेल रहे हैं। एक बड़े ओवर की तलाश है, 20 से 25 रन, और गैप ढूंढने में कामयाब हुए हैं और बॉल चली जाएगी बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, और फील्ड थोड़ी सी हैवी है, लेकिन बहुत दूर थे फील्डर, चेस ज़रूर किया, लेकिन इन दी एंड बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। और यही वो प्लेसमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन ये डेलिब्रेट शॉट नहीं था, ये ऑन साइड पे खेलने गए थे, लीडिंग एज लग के बॉल उस तरफ चला गया, तो एटलीस्ट 4 रन तो आए। एग्जैक्टली 19 रन दे चुके हैं जल्लाद। ख़वातीन की काफ़ी बड़ी तादाद इस वक्त असगर शाह स्टेडियम में मौजूद है। गो के ख़वातीन अमूमन हम देखते हैं कि वो कम ही नज़र आती हैं, लेकिन हम इस इवेंट में देखते हैं कि बहुत ही फैमिली इवेंट है। महज 1 रन का इजाफा हो पाएगा। बहुत संभल के खेले हैं, बेहतर था कि डॉट बॉल ना खेलते और 1 रन बनाते, तो उन्होंने वैसे ही किया। जी हाँ, बड़े शॉट के लिए गए थे, हीव करने गए थे, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा हुआ कि वो नाराज़ हैं थोड़ा अपने आप से, क्योंकि सही वो मिडिल नहीं कर पाए। ऑन साइड को टारगेट कर रहे थे, मिड विकेट बाउंड्री, लॉन्ग ऑन, काव कॉर्नर, ये जो वो पोजीशन हैं जहाँ पर टेप बॉल के प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन तारीफ़ करनी होगी कि पिछले 1-1.5 ओवर में जिस तरह से जो है वो रन्स को रोका है। फुल टॉस, बड़े शॉट के लिए गए और इसी छक्के की तलाश थी। हुम्दा शॉट, फुल टॉस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप और खेल दिया उसको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। वेल प्लेड, बेहतरीन शॉट लगाया है जोहेब ने लॉन्ग ऑफ की जानिब। 6 रन का इजाफा DHA दबंग्स के स्कोर में। कदमों का इस्तेमाल इस बार किया इन्होंने जोहेब ने।
जलात ऑफ साइड पर यॉर्कर करना चाह रहे थे, लेकिन फुल टॉस पे कन्वर्ट हुई। और कई मौक़ों पे हमने देखा है कि वो जूसी फुल टॉस होती है और बैट्समैन भी डीप इनसाइड द क्रीज होते हैं कि इसी तरह की गलती हो और उसका फ़ायदा उठाया जाए। बहरहाल 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 3 बॉल बाकी है और 75 रन आगे हैं। ज़ुहैब अच्छे स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहे हैं और पुल कर दिया इसको और गैप ढूंढने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा शॉट, परफेक्टली 2 फील्डर्स के बीच में से निकाला ये और 4 रन के साथ पहुंच गए 86 के स्कोर पे और बड़ी ज़रूरत थी इस चौके की। जी हाँ बिल्कुल, 4 रन का इजाफा हो चुका है डीएचए दबंग्स की स्कोर कार्ड में। जलात खान काफ़ी रन्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इनकी बॉलिंग में वो स्पार्क, वो मज़ा नज़र नहीं आ रहा जो कि अमूमन ये करते हैं। 30 रन्स दे चुके हैं। दूसरा ओवर है, 2 गेंदें बाकी हैं इनके ओवर की। 84 रन्स बिना किसी नुकसान के। सिर्फ 4 रन दूर अपनी सेंचुरी से ज़ुहैब। बहुत ही आला शॉट, बहुत ही आला शॉट और लेकिन बॉल चली गई बाउंड हाथों में और ऐसा लग रहा था एक लम्हे के लिए बॉल जाएगी बाउंड्री से बाहर, लेकिन इन दी एंड कंफर्टेबल कैच। तो उम्दा इनिंग्स और इस तरह से 50 रन डिजर्व करते थे लेकिन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ज़ुहैब एक लम्हे के लिए लगा कि एक और बुलंदबाला छक्का यहाँ पर आएगा। पहली विकेट गिर गई है, रन्स की ज़रूरत थी। इन दी एंड टाइमिंग वो हासिल नहीं कर पाए। गेंद बिल्कुल स्ट्रेट फील्डर्स के हाथों में गया, कहीं पर उन्होंने मूवमेंट नहीं की। 46 रन स्कोर किए हैं 14 गेंदों का सामना करते हुए। ज़ेबी बट ने अच्छा खेले, इससे कबल पहली इनिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री। जी ज़्यादा बॉलें बाकी नहीं, विट्टे पूरी बाकी हैं और इस फॉर्मेट में अगर आपकी विट्टे हाथ में हो और रन रेट इतना अच्छा ना हो तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं विट्टों को हाथ में रख के, क्योंकि ज़्यादा ओवर्स आपके पास है नहीं। तो जब विट्टे हाथ में स्पेशली तो आपको हर बॉल पे जो है जाना चाहिए। रन में सिंगल को भी टूज़ में और टूज़ को थ्रीज़ में कन्वर्ट करें, बड़े शॉट के लिए जाएं। जो कोई बाय का रन है उसको भी आप लें, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं के पास। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करें, स्पेशली 100 से ऊपर का ये टारगेट दें, 120 आप 110 देख का। सकते हैं बदर एक्सपो की पूरी मैनेजमेंट स्क्रीन पर। स्मैश कर दिया इसको और बॉल चली गई बाउंड्री के बाहर। ये वो कनेक्शन था जो इससे पहले यहाँ बैट्समैन हासिल करना चाह रहे थे। 6 रन हुए और 6 रन के साथ ओवर मुकम्मल हुआ और परफेक्ट एंडिंग इस ओवर की। पीछे गिरा हुआ गेंद इसको डिस्पैच कर दिया। बहुत ही आला शॉट। पाँच रन के इख्तिताम पर 90, एक खिलाड़ी के नुकसान पर डीएचए दबंग्स इस वक्त 85 रन की लीड हासिल की है डीएचए दबंग्स ने। जलात ने 36 रन के एवज एक खिलाड़ी को आउट किया है, 2 ओवर्स मुकम्मल करवाए हैं। डीएचए दबंग्स को अभी बड़े क्विकली 85 रन की लीड को ख़त्म करना है। पिचासी रन की लीड हो चुकी है और एक ओवर है। 20 से 25 रन आए तो 110 115 का सामने स्कोर देख सकते अच्छा हैं होगा। स्कोरर्स जिनका बहुत ही अहम किरदार है, जिसमें थर्ड अंपायर भी वहां पर मौजूद हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज इस इवेंट में कि एक लेडी थर्ड अंपायर को भी इंट्रोड्यूस किया है। वेल बोल्ड, वेरी वेल बोल्ड और इतने बहुत स्विंगों के अंदर आए, काफी डिसीव किया बैट्समैन को। बहुत ही इंप्रेसिव बॉल फरमान की। क्या लगता है नादरा, आपको कितने स्कोर पे फिनिश करेंगे? सिर्फ 5 गेंदें बाकी इस इनिंग्स की। एनी गेसेस? बहुत मुश्किल होता है किसी भी उसको गैस करना। कभी भी क्रिकेट बाय चांस होती है, समटाइम्स एकदम से पांसा पलट जाता है, लेकिन सीम्स वेरी हार्ड, लग नहीं रहा। कितना? 110 115?
ऑन साइड पे खेलने गए थे, मिस कर गए, सिर्फ 1 रन का इजाफा। एक और अच्छी बॉल फरमान की। ज़्यादा बॉलें रह नहीं गई इस ओवर में और बड़े ही स्ट्रॉन्ग फिनिश की ज़रूरत है, लेकिन क्लिफ्टन गाजी के फरमान की तारीफ करनी होगी। बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बॉलिंग करते हुए। बहुत उम्दा बॉल और 1 रन का इजाफा, जो 1 रन से खास परेशानी होगी नहीं। ये कंप्लीट फास्ट बॉलिंग पैकेज मुझे लग रहे हैं फरमान। लेफ्ट आर्म, टॉल फास्ट बॉलर, पेस भी है इनके पास। इनके पास जो है वो वेरिएशन है, बाउंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले भी इकोनॉमिकल रहे थे। और ये कमेंट्री बॉक्स का मंजर और यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू हमें मिल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं फरूक रियाज को और मुझे भी ऑफ कोर्स। बड़ी अच्छी प्रोडक्शन टीम इस वक्त काम कर रही है। मिसबाउद्दीन कादरी जो कि फर्स्ट एडिशन में भी साथ साथ थे KTPL के और अभी भी पैनल पे मौजूद हैं। ज़बरदस्त शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क जियो सुपर की स्क्रीन पर, 4 चांद लगाते हुए इस इवेंट को। बड़ा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट। इस शॉट की जरूरत थी। 6 रन के लिए खेल दिया ऑन साइड पर। फरमान बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन बहरहाल एक छक्का को लगा। ओवरऑल बड़ी ही उम्दा बॉलिंग उन्होंने की है। 3 सिंगल के बाद छक्का, ऑन साइड पे गेंद थी, इसको घुमा दिया अरसलान ने राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट। तो अब 2 बॉलें बाकी हैं और इसी तरह के शॉट्स की ज़रूरत है। DHA दबंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये हमारे सामने इस डिफरेंट एंगल से काफ़ी लेग साइडिश थे और लेंथ बॉल कर गए थे, वो बाउंस उनको मिला नहीं। और बहुत ही आला शॉट, काफ़ी डिस्टेंस कवर किया इस शॉट ने। लेग स्टंप को हल्का सा एक्सपोज करते हुए अरसलान बड़े शॉट के लिए गए, हुक किया इसको, कोई ना कोई फील्डर आएगा कैच के लिए, खतरनाक हो सकता है। और बॉल जो है आगे गिरी। इस दौरान 2 रन मुकम्मल किए। थोड़ा सा टाइमिंग्स आउट हो गए फील्डर को गेंद तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा नो बॉल का और यहाँ पर लाजमी तौर पर फ्री हिट मिलेगी। आई थिंक नो बॉल हाइट की वजह से दी है उन्होंने। इससे पहले भी इससे पिछले ओवर में हाइट की वजह से नो बॉल मिली थी और ये इनका खास वेपन है जो एक्स्ट्रा बाउंस लेते हैं, लेकिन समहाउ अगर वो एक खास हाइट से ऊपर होगी तो ये परेशानी का बाइस बन जाता है। तो फ्री हिट है, अच्छा मौका है कि पूरा फ़ायदा उठाया जाए। 98 रन आगे हैं दबंग की टीम। और साथ ही ऑफ स्टंप मिस कर गए, अंपायर का इशारा देखना होगा। बहुत ही उम्दा बॉल, काफी बाहर निकलता हुआ ये गेंद था ऑफ स्टंप पर। अफसोस कर रहे होंगे नादर, ये उन्होंने मौका ज़ाया किया फ्री हिट का और ये ऐसे मौकों पर जिस पे ये पोटेंशियली 4 या 6 होते और डॉट बॉल मिली। जी हाँ बिल्कुल, इसमें फ्री हिट में इनको कोई भी रन नहीं मिल सका DHA दबंग्स को। अगर फ्री हिट लगती तो डेफिनेटली 109 तक तो चले ही जाते अगर छक्का लगता, लेकिन कोई भी रन नहीं मिल सका। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, अरसलान 46 पर, फरमान नन फॉर 20। बड़े शॉट के लिए गए, लॉफ्ट कर दिया इसको स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और बहुत दूर जाके गिरी है गेंद। परफेक्ट एंडिंग, बहुत ही आला शॉट, ओवर पिच गेंद, एक खराब बॉल लेकिन ओवरऑल काफी इंप्रेसिव रहे फरमान। नन फॉर 26 अपने 2 ओवर्स के बाद और 6 ओवर्स मुकम्मल। DHA दबंग्स की ये दूसरी इनिंग्स 109 पर 1 और अब टारगेट जो है 105 का होगा क्लिफ्टन गाजी के लिए इस मैच को जीतने के लिए। ये देखें आखिरी बॉल, परफेक्ट फिनिश और लॉफ्ट कर दिया, स्ट्रेट थ्रू द लाइन खेले और बहुत ही आला शॉट, दरख्तों के ऊपर से बॉल ये गई। फरमान ने उम्दा बॉलिंग की थी लेकिन उम्दा फिनिश और 50 भी मुकम्मल किए। लेकिन जितनी अच्छी बॉलिंग की थी फरमान ने, लास्ट में उन्होंने 2 जब छक्के उनको मिल गए तो काफ़ी हद तक उनको लॉस भी हुआ है। इस वक्त DHA दबंग्स 109 पर 1 खिलाड़ी आउट 6 ओवर्स में। और अब सेकेंड इनिंग के लिए क्लिफ्टन गाजीज मैदान में आएंगे। यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली होगी। यकीनी तौर पे आपको 2 आवाज़ें सुनाई देंगी कि आसिफ और फैसल अतर उनका साथ देंगे। ये बैटिंग कार्ड हमारे सामने, एक ही विकेट गिरी जोहेब की, 46 रन बनाने के बाद आउट हुए, उम्दा बैटिंग की और उनके साथ ओपनर रहते अरसलान 52 पर नॉट आउट, 22 गेंदों का सामना किया।
और यहाँ पर देखें जल्लात ने 36 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है, जबकि शहराम, साकिब और फरमान कोई भी विकेट लेने में नाकाम रहे। एक्स्ट्राज 10 रहे। यहाँ पर 109 पर एक खिलाड़ी आउट। और कमेंट्री बॉक्स में आप आवाज़ सुन सकेंगे अबराना अशवाक की अलॉन्ग विद के आसिफ। ओवर टू यू। Thanks a lot, Nadra Mushtaq. These are the highlights of the DHA second innings. Some beautiful hits being hit. Zohaib but played extremely well. Arslan also batted beautifully well. And they scored lot of runs in the opening stand. Welcome, K. Asif. Well, thank you. That was a superb shot from Arslan, and happy for this another successful night here. DHA Dabanggs versus Clifton Ghazis, and Clifton Ghazis need 105 runs to win, but little dejected. Pakistan lost against Sri Lanka in the final of Asia Cup. Yes, it is. But I think Sri Lanka was the better side and they deserved that victory. Out come the openers. 105 run is the target. And I think this is the even-Steven game. The games we have watched so far in the tournament were not even-Steven games. But here, I think it could be a thrilling game in last 6 overs. Yes, that's right. Asad Shah desperately looking to perform because in first inning, he was in off colour. He got out early. But I do remember his previous game. It was blasting innings from Asad Shah, the captain of Clifton Ghazis, just warming up there. And you said rightly that the way Sri Lanka performed throughout the tournament, in the first match they've learned their mistakes, lost against Afghanistan, but after strongly came back, and at the end they're the king of the Asia. No doubt about that. And Sri Lankans are always underdog, and they know the art how to make a comeback. It can remind me 96 triumphed in the World Cup, Asad Shah. Clifton Ghazi's captain is at the middle. $106 to win in 36 balls. This is the other opener standing at the non-striking end. Usama Ali. Qadir Kashmiri is starting things off outside the off stump, and it went through to the keeper. So good start for DHA Dabanggs. Bowled well, Qadir Kashmiri. He is from Muzaffarabad and a renowned fast bowler in tape ball cricket. We have watched all the renowned faces, famous players in the second edition of Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League. The way TM Taimoor Mirza played tonight, it's been fabulous. It's a good delivery, once again picked up nicely. So this is the first maximum of this innings. Asad Shah opening his arm. This is exactly what Asad is known for. Hit that one beautifully. That wasn't a bad ball either, but that was batsman who struck that one skillfully and got a maximum. Well, this is his speciality. I'm telling you, he plays so nicely with his wrist, the power of wrist down the leg side. This is what happens when you start attacking in the first over. Got a couple of runs off the extras. That was an erratic ball way down the leg side, and
It happened in his favor that wicketkeeper stopped it all right. Otherwise, would have been 6 wides. See the first innings, DHA Dabanggs 93 for 5 and 109. Clifton Ghazis took 5 runs lead and now the target is 105. Down the leg side again. This is the real trouble. This is the real trouble. This is where Kader has to be careful. They got to defend 105 and they can't afford too many extras, particularly this early in the innings. Again, and the same is the result. It's the bang from Asad Shah. Asad Shah, you beauty. Pitched up and got spanked. Asad Shah is a brave cricketer and already has struck 2 sixes out of 3 balls and 16 runs on the board. 105 doesn't look a competitive total now, the way Asad has started his innings. And if he keeps on playing like this, I think they can chase it down easily. What's happening there? What's happening there? Everybody gathered with umpire and a long conversation is going on. They should have learned that the only captain, if there's a problem, captain and skipper must be talking to the umpire. This is the professionalism actually. Agreed. I don't have the courage actually to argue with you, Asif. No, just kidding. You are absolutely right. Qadir Kashmiri got the reputation. He's a very good bowler, but the way Asad is attacking has been phenomenal, and he's coming up with strong sixes. And you know the way he is heading with his wrist, the power of his wrist, it's absolutely gorgeous. Indeed, gorgeous is the right word. He got prodigious talent. Some deliberations, not quite sure why. Now batsman signaling something. Is there anything wrong with the side screen? Or some movement was there in front of the side screen? I think bowler has problem. Yes, there you see. So I think Faz is bowling now down the leg side. Okay, so there's a problem. We got now that the Qadir Kashmiri got injured and he's suffering with the pain. His facial expression shows the pain actually. Fayaz took over, but he did the same. Started with the wide ball. Clifton Ghazi now needing 87 runs more for the victory in 33 balls. And this time cuts so nicely. This is the third man region. And I must say this is the beautiful shot from Asad Shah, targeting the point and third man area. Got the boundary. Outside, the off-stump width was there and he got up on his toes and then cut that one with some brutality towards the third man boundary for 4. Asad Shah already 16, just on 4 deliveries, 2 maximum and a boundary. Very good start now for the Clifton Ghazis. And again, this is the genuine and real problem with these bowlers. Coming up with these extras, and whenever you bowl wide delivery, the opposition will get 2 runs. Yes, that's why you can see 24 runs on the board. Although only 2 sixes have been hit. But in 4 balls, runs are 24 because they have bowled, I think, 4 wide balls. So they have conceded 8 runs in terms of wide balls.
Very quick delivery, but remain unlucky. Of course, one bouncer and wide given. So, and you can see Naseem Rajput standing with their DK, the owner of DHA Dabanggs, and their Shahu, the owner of Clifton Ghazis. They're all enjoying cricket. I think they got to find the way to get people out or to get at least dots in. DHA Dabanggs. Oh, this is not the way. This is not the way. Another wide. Lot of runs being given away and it can cost them dearly. 28 after 4 deliveries. It means per ball average is 7. So they are conceding run with a great generosity. That's right. And again, Captain Yasir Mushtaq having words with Fayaz, and when we talk about the families enjoying this cricket, they're not happy, yes, of course, because DHA Dabanggs is struggling, and they are supporting DHA Dabanggs. Yeah, they are in their color and they are look bit annoyed, and that's a very good hit. Pulled it and pulled it magnificently. 6 more. That's why I like this guy named Asad Shah, wearing 17 numbers jersey, and the captain leading from the front. Look at that shot. He can hit anywhere, you know. Got a couple of sixes in the V area, long on, long off. Then there's a cut shot, and now this is the pull shot. Terrific stuff. And again, he was trying to hit that ball. So a little sigh of relief, just a dot delivery after 5 balls. And Clifton Ghazi is in a very strong position after 134 for none. 2 bowlers made up the first over finally, but overall they have given away 34 runs. 18 runs came off Fayaz's 3 balls and 16s were given by his partner. Qadir was the one who started off, then he got injured. Fayaz took over, but Fayaz continued in the same fashion, bowled 3 wide balls and then gave away a couple of 6s as well. You were asking about my maths. Let me tell you that the required run rate is now around 15.50 in 5 overs. Am I correct? 14.20 is the exact, just over the top, and it has gone down to the boundary for 4. 67 runs are required of 29 balls. Clifton Ghazi got off to a flyer. This is the start they would have planned for. So you can see the baton charge from both of the sides. Earlier on, Asad and now Usama started the same way. Started and off the mark with a tremendous boundary. I thought it would be a very tough target, or at least a competitive one. But so far, batsmen have made me wrong, because they are going all guns blazing and runs are being scored at a very, very good pace. Target was fine, actually. You've given. Look at that shot. It's high in the air and going out of the stadium, actually. When you talk about Usama, yes, this is his typical style. Usama is in action now. Both batsmen in full cry. First, Asad Shah entertained the spectators with 6s, and now Asad Shah doing the same. 10 of 2 balls. Bowlers are looking all over the shop, looking out of sorts. They are looking clueless at the moment. Exactly, and now 60 runs to win now with the required rate 13.33. I'm not going with my maths. Let's concentrate what our scorers are telling us. You were telling me that
your math wasn't good enough during your study days. Yes, I'm sticking toward my words. But I think you got a good mind. Asad Shah not out in 22. He is on fire. He's faced just 6 deliveries. And I'm so happy that the way he's playing. This time trying to hit that towards and targeting mid-wicket area. You must give credit to the bowlers. It was a little slow delivery. Yeah. They got to vary their line. They got to vary their length and line. And, oh, wow. That's a big hit. Very big hit. It goes up, and then slided down outside the covers boundary for a 6. Well, this is the relaxed dugout of Clifton Ghazis. They've completed their 50, just 1.5 deliveries. See, it was once again an overpitched delivery, and look at the punishment. Again, it's high in the air, and going out of the stadium. What a shot that was. Asad Shah is in full momentum and ending this over in a special style. Relentless batting. Absolutely relentless batting. Bowlers are on the mercy of the batters. Look at that. He pulled it right from the front of his eyes, and ball got the distance. In future, I'm quite sure that Pakistan will be getting some talent from this league, these kind of leagues, especially Badar Expo Karachi Table Premier League. We've been talking since day one that the way they have selected the players in the drafting ceremony, people they have registered all over the Pakistan. Now they're the part of this Badar Expo Karachi Table Premier League. And in this scenario, when they are performing well, definitely the rest of the leagues, the rest of the world, they're watching them. And of course, they could get chance in different leagues, even in hardball cricket. No doubt about that. Their future is very bright. And I think more tape ball leagues going to be happen as well. And these boys can get chance play abroad as well, because a lot of people now have started to take interest in it. Going through for a single, wicket-keeper comes, picks up the ball up, shied at the stumps, but didn't hit the stumps. That's right, now just 48 runs require. And the average is, the asking rate is 12.26. And Hassan. Required run rate has come down considerably, or big time, because the current run rate is 29. And the required run rate has come under 12. Wicket-keeper Captain Yasser having words with Asad Shah. Down the leg side again. And 3 runs more added into the total. In fact, they're looking for another. I have failed to get comprehend why they are bowling so many balls on the leg side. Let's talk about this beautiful city, Karachi, the city of lights. Even this is night, but you can see lights everywhere, anywhere. Even this full of lights, the stadium, Asghar Ali Shah Stadium. City of Lights is what Karachi is called. It's a historical city as well, biggest city of Pakistan. Produced great cricketers as well, produced great squash players, hockey players. Even the commentators. Indeed. Nadra Mushtaq is one of them, one of our colleagues.
It was a slow bouncer, and this time Badar is not happy. He's arguing with the umpire. Gentlemen, you'd have to learn that how to face umpire, how to deal with the umpire, and how to deal actually with the decisions of umpire. Yes, to me, do not tinker around with the umpire. This is what sportsman spirit is, actually. Yeah, and it can put you in problem in future. At times, umpire can make you to learn a very, very bitter lesson. That's right, and Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League is the platform where these youngsters will be learning all these arts, how to behave in the dugout, how to behave with the umpires, how to behave with the colleagues, how to behave even with the opposition, and how you can face the media. Wow. Very nice, Asif. Oh, this is nice as well. Oh, he knows everything. Although he's so small, but he knows everything and he's making the sign of victory. Asif, you are talking like a genuine teacher today. You are in full cry. You are talking like a genuine teacher. Because I'm sitting with you. Once again, it's your greatness. Well bowled. Very well bowled, but he kept it out of his crease and gets a single. Yes, this is the person who is behind this. Man behind the ideology. Harun Rashid, the former Test cricketer. And I must say that when you're watching this Badar Expo Karachi Tape Ball Premier League, of course, his smile tells that he is behind all these ideologies. Got a broad smile on his face. Played for Pakistan in 79's World Cup. Second ICC World Cup, because first one held in 1975. Then served Pakistan Cricket Board as chief selector as well. And this time, pulled nicely. Oh, it was a good effort. It was a good effort, dear. It should have taken, but I must give full marks to this fielder. At least you have tried your best. Match still is in an interesting situation. That was the last stroke. He dragged it back, pitched fairly back. That was a half tracker, and batsman pulled it. Fielder got to the ball. It did come in his hands, then popped out. Wonderful piece of fielding. It was a good effort. Muzammil Kamuki sitting out in the dugout. 3 overs completed. Clifton Ghazi 65 for none. They require just 40 runs in 3 overs. And there's the time in the change in the com box. And Faisal with Nadra Mushtaq. And here's the scorecard. इस कॉम बॉक्स में मौजूद है मेरे साथ फैसल अतर, इंटरनेशनल क्रिकेटर. इनसे हम डेफिनेटली कुछ मुस्तफ़ीज़ होंगे, कुछ सवालात ज़रूर करेंगे. लेकिन इस वक्त 3 ओवर के अख्ताम पर 65 रन स्कोर किए हैं क्लिफ्टन गाजीज़ ने. एंड दे नीड 40 रन टू विन. और असद 35 रन के साथ मौजूद हैं क्रीज पर. उसामा उनका साथ दे रहे हैं 15 रन के साथ. हसनैन ने 8 रन्स दिए हैं 1 ओवर के अंदर. अच्छी मतलब बॉलिंग का मुजाहरा किया. लेकिन ज़ीशान का हम देखते हैं कि 23 रन्स इन्होंने दिए हैं 1 ओवर में. रन रेट है 13.33 का. क्या समझते हैं ये जो 40 रन्स हैं ये कितना पीनट साबित होंगे क्लिफ्टन गाजीज़ के लिए? फैसल.
वैसे नादरा पीनट्स तो कुछ भी नहीं होते, क्रिकेट है और क्रिकेट किस तरह रंग बदल ले ये समझे एक तरह से क्रिकेट भी है। जिस तरह क्रिकेट रंग बदलता है इसी तरह ये क्रिकेट भी रंग बदलती है। सो प्रेशर और मोमेंटम कहीं पर भी चेंज हो सकता है। शॉर्टर फॉर्मेट में हमेशा मोमेंटम रहता है, हालांकि रन्स इस क्रिकेट के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट जो है 13.33 है। इसका मतलब 40 रन 3 ओवर में कुछ बड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। असद शाह पे डिपेंड करते हैं और इसके साथ ही उठाकर खेला असद शाह ने और ग्राउंड से बाहर गेंद। जी हाँ, बिल्कुल ग्राउंड से बाहर गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला और 6 रन्स का इजाफा किया है असद शाह ने और बहुत ही कंफर्टेबल शॉट था, बहुत ही ट्रेमेंडस शॉट बाय असद। 41 रन्स 11 गेंदों का सामना करते हुए। छक्कों की तादाद हो गई है 7 इस इनिंग में और असद शाह मौजूद हैं क्रीज पे। ये ऐसा गेंद था जो कि खेलना तो चाहते थे, हार्ड हिटिंग चाहते थे लेकिन हो नहीं सकी और जस्ट 1 रन का इजाफा हो पाया। बहुत इनफॉर्म बैटर हैं असद 12 बॉलों पे 41 रन कर चुके हैं। पिछले मैच में भी बहुत कमाल इनिंग खेली है और जिस तरह की ये बल्लेबाजी करते हैं और जो बैट फ्लो है इनका वो बड़ा स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये बॉल को कनेक्ट कर पाते हैं। और इस दफ़ा काफ़ी दूर थी बॉल, क्या ये वाइड होगी? जी हाँ, ये अंपायर का इशारा वाइड का। एक्स्ट्रा हमेशा छोटे फॉर्मेट्स में बहुत कॉस्टली साबित होते हैं और यहाँ पर जिस तरह के ये मैचेस चल रहे हैं छक्के और चौकों की बरसात, खास तौर पे छक्कों की बरसात है। और अगर यहाँ पर वाइड्स की बरसात भी कहना चाहे तो बेजा ना होगा क्योंकि वाइड्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, एक्स्ट्रास की बरसात इनफैक्ट। हालांकि डॉट्स खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा साबित होगा, इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन, बॉल एक दफ़ा फिर मिड विकेट की तरफ, 6 रन के लिए बाहर। सो इस क्रिकेट में डॉट बॉल करना आसान नहीं है और ख़ास तौर पे इस तरह जब बल्लेबाजी हो रही हो तो बहुत ही मुश्किल है कि आप डॉट बॉल करें। एक ही सूरत बचती है कि आप बॉल को थोड़ा स्लो कर दें, अगर तेज़ बॉल करेंगे तो आगे गिरे या पीछे गिरे बल्लेबाज तैयार हैं अपने स्विंग के साथ और भेज देते हैं बॉल ग्राउंड से बाहर। एक दफा फिर उधर ही शॉट खेला है और एक दफा फिर सेम रिजल्ट। जी हाँ, 6 रन का इजाफा, बहुत तेजी के साथ अपने इनिंग्स का इख्तिताम करना चाहते हैं क्लिफ्टन गाजीज के जल्द अज जल्द स्कोर जो है वो बना लिया जाए ताकि विन की तरफ गामजन हो और यही कुछ कर रहे हैं क्लिफ्टन गाजीज। जिस तेजी से रन बन रहे हैं उसी तेजी से रिक्वायर्ड रन रेट भी नीचे आ रहा है और इस बॉल को एक दफा फिर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक दफा फिर बहुत बड़ा छक्का। जी हाँ, फलकबोज छक्का और काफी देर ट्रैवल किया गेंद ने हवा में और उसके बाद 6 रन हासिल कर पाई है क्लिफ्टन गाजीज। उसामा साथ दे रहे हैं असद का और दोनों ही बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन हैं क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। हेल्पलेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे बॉलर और कोई भी प्लेयर आके बात नहीं कर रहा बॉलर से। इस दफा फिर बॉल करेंगे और यहाँ बचत हो गई, अच्छी बॉल थी, थोड़ा पीछे लेंथ पे बॉल किया था जिसको खेल नहीं पाए। सो 4 ओवर के अख्तिताम पे 92 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं। थोड़ी सी अंदर गेंद होती तो मुश्किलात हो सकती थी क्लिफ्टन गाजीज को, विकेट जा सकती थी। आप ये देख रहे हैं खवातीन और कुछ सपोर्टर्स डीएचए दबंग के डगआउट नजर आ रहा है जिसमें क्लिफ्टन गाजीज बहुत ही रिलैक्स मोड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जीत बहुत नज़दीक है, चंद रन्स के फासले पर, जबकि अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। 2 ओवर्स में 13 रन्स कोई मुश्किल नहीं है। डगआउट में तैमूर मिर्जा भी नजर आ रहे थे, इस बैटिंग में मुझे लगता है नहीं है क्योंकि मौका दूसरों को दिया है, उनका बल्ला खुल चुका है। दूसरों को वो चाहते हैं कि दूसरे बैटर भी अपने बल्ले को खोलें और मैक्सिमम रन्स हासिल करें ताकि आगे आने वाले मैचेस में इनको फ़ायदा हो।
अच्छी गेंद करवाई इस वक्त जवाद ने, लेकिन साथ ही साथ बीट हुए और 2 रन्स हासिल कर पाए हैं बहुत स्लोली। इतनी ज़्यादा तेज़ रनिंग बिटवीन द विकेट नज़र नहीं आई। उसके बाद 18 का रन रेट रिक्वायर्ड था और अब 6.55 का हो गया है। बड़ी तेजी से रन्स बने, रिक्वायर्ड भी कम हो गया और अब कोई टेंशन भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, 11 बॉलों का खेल बाकी, सिर्फ 2 छक्कों की जरूरत। टांग पे गिरी हुई गेंद को पुल किया है फाइन लेग की तरफ, 4 रन हासिल करेंगे। तेजी से अपनी जीत की तरफ कामजन क्लिफ्टन गाजी, बेहतरीन रिस्पांस किया है इस मैच में। डीएचए दबंग की भी तारीफ करना पड़ेगी क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग शुरू की थी, जो छक्कों की बरसात की थी, वो कमाल किया था। लेकिन कमाल जारी यहाँ पे, ये एक अच्छी बॉल थी, ब्लॉक होल में थी, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला, जगह नहीं मिली कि बल्ले के साथ कनेक्शन होती। बिल्कुल पैरों में आई हुई गेंद, 1 रन का इजाफा, जवाद 4 रन दे सके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डीएचए दबंग्स का आज ये पहला मैच था, जबकि क्लिफ्टन गाजीज का ये दूसरा मैच था और एक मैच खेल चुके हैं बहुत ज़बरदस्त, फतह अपने नाम भी की है। असद इन फॉर्म इस दफा फिर, और बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन्स। ये शॉट देखने में भी बहुत कमाल था और रिजल्ट भी उसी तरह का कमाल, मैक्सिमम। इस टूर्नामेंट में असद बहुत डेंजरस बैट्समैन साबित हो रहे हैं। बिल्कुल क्रीज के अंदर खड़े होते हैं, विकेट के साथ होते हैं और इस दफा फिर टांग पे गिरी हुई गेंद को टाइम किया है और इस दफा फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन और इसके साथ मैच का इख्तिताम। और यूं क्लिफ्टन गाजी ने ये मैच भी अपने नाम कर लिया। बहुत ही उम्दगी से इन्होंने खेला है, फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग तीनों एरियाज में। 10 विकेटों से क्लिफ्टन गाजी जीत चुके हैं, डीएचए दबंग्स को शिकस्त दी है क्लिफ्टन गाजीज ने। जी, असद ने 53 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का भी शामिल है 15 गेंदों पर। असद की बहुत उम्दा कारकर्दगी रही है, हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं और बड़ा खुल के कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं और हम इनको देखते हैं कि जूं ये गेम खेलते जा रहे हैं वो इनके जो एतमाद है वो बहाल होता चला जा रहा है। काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं डग आउट में क्लिफ्टन गाजीज के, जबकि डीएचए दबंग अपने जो उनकी कुछ वीकनेसेस थी उस पे डिस्कशन जारी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल चीयर लीडर्स। जी हाँ, आज के आसिफ ने भी बड़ी कोशिश की, तो इस तरह रॉड सर पे रख के मटकी को सर पे रखे बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर स्कोर कार्ड देख लेते हैं। असद नॉट आउट 53 रन्स फॉर 15 बॉल्स। उसामा नॉट आउट रहे, 37 रन्स बनाए 14 गेंदों का सामना करते हुए। और कोई भी विकेट नहीं ले सका, कोई भी बल्लेबाज। एक्स्ट्राज वो बॉलर और एक्स्ट्राज जो थे 20 थे, जबकि 110 रन स्कोर किए हैं क्लिफ्टन गाजीज ने। और डीएचए दबंग का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था, लेकिन सबसे एक्सपेंसिव जो रहे हैं वो हैं जीशान, जिन्होंने 49 रन दिए विदाउट टेकिंग एनी विकेट। डीएचए दबंग्स 93 फॉर 5 फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में 109 फॉर 1। क्लिफ्टन गाजीज फर्स्ट इनिंग 98 फॉर 2, सेकेंड इनिंग में 110 फॉर नो विकेट। तो इस तरह से ये स्कोर कार्ड है और 10 विकेटों से अपने नाम किया क्लिफ्टन गाजी ने। मुकाबला बहुत ही उम्दगी से खेले, बहुत ज़बरदस्त खेले और अब कुछ वो लम्हात जब आप अपनी टीम के साथ मिलते हैं और कुछ खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ भी बांटते हैं और दूसरी टीम अपनी गलतियों को भी नोट करती है और हमेशा मैच के बाद कुछ डिस्कशन ज़रूरी होती हैं। शॉर्ट कमेंट्स को भी देखते हैं। अब आएंगे इनिंग हाइलाइट्स, आपके सामने पेश करते हैं।
ये देखें असद के खूबसूरत शॉट्स, बहुत आला टाइम करते हैं, बैट का कनेक्शन बहुत कमाल है, गेंद चाहे आगे गिरी हुई हो, फुल पिच हो, लेकिन लिफ्ट बहुत अच्छा करते हैं। ये पॉइंट की तरफ खेला इन्होंने, और चाहे पुल शॉट हो, ज़बरदस्त किस्म का टाइमिंग है, पावर है, और ये स्ट्रेट एक और छक्का। सीधे बल्ले के साथ भी बेहतरीन शॉट्स थे, सो शॉट्स बड़े क्लीन थे और क्लीन हिटिंग थी। असद छाए रहे इस मैच में और 53 रन की इनिंग 16 बॉलों पर खेली, तो ये एक बेहतरीन इनिंग थी अपनी टीम के लिए और कमाल के छक्के मारे हैं, चारों तरफ ग्राउंड के छक्के मारे हैं। ये खासियत थी इनकी बैटिंग की। ये शॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट था, आगे गिरी हुई बॉल पे मिड विकेट की तरफ, और फिर सेम शॉट रिपीट किया था इसको एक्स्ट्रा कवर। ये एक शानदार क्रिकेटिंग शॉट था जो 6 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर के बाहर गया, इसको फाइन लेग पे पुल किया 4 रन के लिए। सो इस तरह, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी की जानिब। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi K-Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi K-Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi K-Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PAIME, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PAIME, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Center. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi K-Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह .com UAN
111-008-008. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Taimoor Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Taimoor Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Taimoor Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Taimoor Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2. Karachi Taimoor Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गोहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के 6th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन जा रही है आप तमाम लोगों को खुशामदीद करता है। ओवरऑल देखा जाए तो आज एक बड़ा तगड़ा मुकाबला था और उतना ही तगड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन जिस अंदाज से डिफेंडिंग चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी के ओपनर सेकेंड इनिंग में खेले, उन्होंने इस मुकाबले को यकतरफा कर दिया और इस मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी ने DHA दबंग को 10 विकेट से शिकस्त देकर बड़ी फतह हासिल की। वेरी वेल प्लेड डिफेंडिंग चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी। हमारे साथ आज प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पिनर, इसके साथ साथ बदर एक्सपो KTPL के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तौसीफ अहमद साहब। उनके साथ हमारी एक ख़ास मेहमान यहाँ मौजूद हैं,
ऑनर पैंग्स एंड नेक्स्ट टायर मिसेस जैन, थैंक यू वेरी मच मिसेस जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी मोहम्मद यूनुस शाहू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको यूनुस भाई। उनके साथ मिस्टर मोहम्मद इबाद को ऑनर DHA दबंग एंड मिस्टर मुबशिर शेख को ऑनर DHA दबंग, थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी। ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ। पहली इनिंग आपने देखी होगी कि जहां पर तकरीबन स्कोर लेवल था, लेकिन दूसरी इनिंग में जिस तरह से आप ओपनर्स खेले, असद की मैं बात कर लेता हूं, उसामा की बात कर लेता हूं, उन्होंने मैच को बिल्कुल यकतरफा करके रख दिया और ये टारगेट 5 ओवर पहले ही चेस करके 10 विकेट से अपनी टीम को फतह दिलाई। इस मैच में अगर परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो जुहेब ने 25 रन 11 गेंदों पर स्कोर किए थे, मुबशिर ने 22 रन स्कोर किए। इसके साथ साथ असद की ज़बरदस्त बैटिंग थी, निफ सेंचुरी 53 ऑन 15 बॉल्स विथ 8 सिक्सेस। इसके अलावा कई और भी परफॉर्मेंसेस, जुहेब जमील 46 ऑन 14 बॉल्स। लेकिन जिस खिलाड़ी ने आज कमाल की बैटिंग की और कोई और नहीं, आज के मैन ऑफ द मैच 62 ऑन 23 बॉल्स विद 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स, जबकि पहली इनिंग में 37 ऑन 14 बॉल्स, कोई और नहीं, वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ टेप बॉल क्रिकेट इन पाकिस्तान, उसामा अली। मिसेस जैन, इबाद साहब, मुबशिर साहब, शाहू साहब, आप सब इधर आएंगे और अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, मिसेस जैन आगे आइएगा प्लीज, मुबशिर आप भी आगे आएंगे। उसामा आपसे थोड़ी सी बात करेंगे एंड मिसेस जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई यहाँ पर और जो आपकी खिदमात रही हैं हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसामा भाई आप मिस कर रहे थे, अगर हम बात करते हैं लास्ट सीज़न मिस किया, जिस तरह का माहौल एटमॉस्फेयर बदर एक्सपो KTPL का देखा आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मैच विन करवाया और इज़्ज़त दी। और कराची में बहुत ही अच्छी लीग्स हो रही हैं और वन ऑफ द बेस्ट लीग है ये KTPL सीज़न 2 जो हो रहा है, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। कितना मज़ा आया जो एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं, ख़ासकर जो यंग टेप बॉल के क्रिकेटर्स आएंगे, जो एटमॉस्फेयर दिया है बदर एक्सपो KTPL ने, आप समझते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो आगे और ताबनाक होने जा रहा है? जी ऐसे ही है, ऐसे इवेंट जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से जो क्रिकेटर हैं वो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरी यंगस्टर से यही है कि वो मेहनत करें। आप टेप बॉल जो क्रिकेट है वो काफ़ी आगे चली गई है, तो उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। उसामा अली, जिस तरह आज आप टाइम कर रहे थे, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के लग रहे थे, हर तरफ छक्के लग रहे थे, ऐसा लगता था असगर अली शाह स्टेडियम अरसे से खेलते आ रहे हैं आप यहाँ पर, हालांकि तौसीफ भाई ने इतना खेला है, इन्होंने इतने छक्के नहीं लगाए। बस जी कोशिश ही करता है इंसान, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। एंड वेरी वेल प्लेड उसामा एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर नेक्स्ट मैचेस। थैंक यू वेरी मच। तौसीफ भाई, इस शो की जान है, अगर हम बदर एक्सपो KTPL की बात कर लेते हैं, हमारी पूरी मैनेजमेंट, जावेद मियादाद साहब को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, ये बहुत बड़े एफर्ट रहे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सोल्यूशन एंड चेयरमैन KTPL ज़ोहिर नसीर साहब के जिसकी वजह से आज जितने खिलाड़ी आ रहे हैं यहाँ पर जो पिछले सीज़न में हिस्सा नहीं थे, वो सब इसको एक नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट करार दे रहे हैं और ये हमारी कोशिश होगी कि इस ब्रांड को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाना है। तौसीफ साहब, मिसेस जैन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मुबारक हो, आज तो जश्न होगा जनाब, बहुत बड़ा शाहू भाई एंड बात भाई, थैंक यू वेरी मच, मुबशिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल शाम को 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आज शाम को 6:30 बजे, 12:30 बज गए, डबल हेडर लेके आएंगे आपके लिए। टिल देन, अल्लाह निगहबान। Get ready for Badar Expo KTPL Season 2 from 9th September. One champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super.
Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during Paime, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of Paime, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. 9 सितंबर से 24 सितंबर को होने वाले फाइनल तक बदर एक्सपो KTPL टूर्नामेंट में गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की बुकिंग पर लाया खुसूसी डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए हर जगह.com UAN 111-008-008। Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super. Get ready for Badar Expo KTPL. Season 2 from 9th September. 1 champion, 8 teams. Season 2, Karachi Tape Ball Premier League. Only on Jio Super.
Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, is organizing the first ever International Maritime Exhibition at Karachi. The exhibition will bring together stakeholders and companies from diverse maritime fields to exploit the potential of the blue economy. The 3-day exhibition will provide an opportunity for B2G and B2B interactions, joint ventures and investment in maritime sector. A maritime conference will also be conducted during PAIME, in which eminent speakers, experts and reps from public and private sectors will share their views on maritime investment potential in Pakistan. Premier edition of PAIME, co-organized by Badar Expo Solutions and Pakistan Navy, under the patronage of Ministry of Maritime Affairs, Government of Pakistan. Pakistan International Maritime Exhibition and Conference will be held from the 10th till the 12th of February 2023 at Karachi Expo Centre.